एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24th ऑफ दिसंबर 2024। वेलकम वंस अगेन टू दिस लाइव एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को देखोगे तो क्रूड ऑयल कल के लेवल है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। नीचे एक कल का जो एक एफईजी था वो रिमूव कर देना, वो तो निकल चुका है। मार्केट एग्जैक्टली उसके ऊपर ही ओपन हुआ तो उसने सपोर्ट की तरह काम कर दिया। कल वाला एक और एफईजी बचा हुआ है तो वहां से वापस थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो बेटर रहेगा, एफईजी रिमूव हो जाएगा। नीचे जो येलो कलर का बॉक्स लगा रखा है ये थोड़ा सा सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए आप कह सकते हो इस एफई से सेल कर सकते हो, और नीचे येलो कलर का बॉक्स है यहाँ से बाई कर सकते हो। कैंडल का ध्यान रखना, डायरेक्टली ओपन इक्वल टू लो पे सेल मत करना। जैसे लास्ट वाली कैंडल थी ओपन इक्वल टू लो थी तो उस पर डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते थे, बट इस पर सेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये नीचे आए, यहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई बने तो डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनना चाहिए। ठीक है, किसी एक साइड की रेंज अगर ब्रेक होगी तो थोड़ा सा बड़ा मूव आएगा, नहीं तो यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग। एक रेंज बना दी है मार्केट ने। एफईजी बहुत पुराना हो चुका है तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब ये निकल ब्रेक हो जाना चाहिए। कल मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ है। लेट्स सी ब्रेक होता है या फिर ऐसे ही रुके रहता है प्राइस यहाँ पर। तो फिलहाल ये छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। किसी एक साइड निकाल दे तो बेटर रहेगा। नेचुरल गैस देखो, कल का ही जोन था रेजिस्टेंस का, याद होगा। फॉरेक्स मार्केट में मार्केट ने एग्जैक्टली इसी से वापस सेलिंग ली है। कल यहाँ पर एक सेलिंग बनी थी, थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई। फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा हाई लेवल तक गया लेकिन वहां से फिर से सेलिंग आई थी। नीचे एक सपोर्ट बना दिया तो अब ये फिलहाल के लिए ये रेंज बना दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं इस रेंज में, कोई कुछ खास और कर नहीं सकते, बिकॉज दोनों साइड, एक साइड सपोर्ट है एक साइड रेजिस्टेंस है। तो ये आप मान सकते हो लाइक ये 6 to 7 पॉइंट की रेंज है। नीचे से बाइंग आ जाएगी, ऊपर से सेलिंग आ जाएगी। किसी एक साइड के एसएल निकलने दो, या तो इसको ऊपर कंप्लीटली ब्रेकआउट करने दो या फिर नीचे कहीं ब्रेक डाउन करने दो, सो दैट ये जो एक लेवल है हम रिमूव कर देंगे तो थोड़ी रेंज प्रॉपर हो जाएगी। ऊपर देखोगे तो डे हाई कल वाला ही मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टिल। नेचुरल गैस में सेल करते वक्त ध्यान रखना, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई पे सेल नहीं करते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नीचे आता है तो एक वो नीचे एफईजी वाला लेवल है आपके पास, और उसके फिर नीचे 290 293 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए स्कैल्पिंग ही कर सकते हो इसमें, और कुछ खास पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट है, मैंने बता दिया। किसी एक साइड के एसएल निकलना जरूरी है, तभी रेंज ब्रेक होगी। यहाँ पर लग तो रहा होगा थोड़ा सा ऊपर गया है, बट ये फॉरेक्स में एग्जैक्टली ही है, कुछ गया नहीं है। रेजिस्टेंस पे था एग्जैक्टली तो वापस सेलिंग आ गई। नीचे सपोर्ट है तो इसलिए थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। किसी एक साइड पे ब्रेक होगा तभी मजा आएगा, नहीं तो ये साइडवेज, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है वैसे ही हो सकता है। क्रिसमस है कल तो उससे एक दिन पहले नॉर्मली मार्केट इसी तरह से मूव करता है। थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी ट्रेड मत करना आज। ठीक है, इवनिंग पे जब वॉल्यूम आएगा, वैसे तो अभी 130 हो चुका है और लंदन सेशन ओपन है। वो डोंट नो वॉल्यूम वहां से आएगा या नहीं आएगा इतना कुछ खास। बाकी गोल्ड और सिल्वर में देखोगे कल वाली लेवल है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। कल याद होगा लेवल बनाए थे गोल्ड में, नीचे से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ये फॉरेक्स का चार्ट है, वहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया 2607 के अराउंड। एंड ऊपर जा रहा है। कल वाला एक एफईजी है जहाँ पर थोड़ा बहुत रुक सकता है प्राइस। दिस इज द एफईजी अराउंड 2627 के अराउंड। एक छोटा सा एफईजी मिल जाएगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। एंड ऊपर देखोगे तो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस आपको बताइए 2640 42 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल है गोल्ड के। एंड सिल्वर भी कल ही के लेवल है, सिल्वर में भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। सिल्वर इज ऑल्सो ऑन द सेम लेवल। ये आया नहीं कल एग्जैक्टली सपोर्ट पे, थोड़ा सा रह गया सपोर्ट पे आने से। एग्जैक्टली सपोर्ट पे आता तो बेटर रहता, बट नहीं आया। ठीक है, तो नीचे अभी भी 29.3430 सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर ये कल एफईजी था, वहां से मार्केट ने थोड़ा बहुत रिजेक्शन लिया था, आज भी अभी उसी एफईजी पर रुक रहा है। अब तो बहुत ले लिया है, मुझे लग रहा है एफईजी अब कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाना चाहिए। इतना भी एफईजी नॉर्मली होल्ड रेयरली करता है एक्चुअली। तो ये एफईजी निकाल दे रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं तो बेटर ही रहेगा प्राइस के लिए। फिर हमारे पास ऊपर एक और एफईजी है विच इज़ अराउंड 30.22। यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकेगा। कैंडल अगर ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो नहीं बनती है, देन मेजर रेजिस्टेंस 30.40 के अराउंड है।
बाकी नेचुरल गैस में एक्सपायरी हो चुकी है। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए करंट मंथ का ही चार्ट लगाया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो करंट मंथ का ही लगा सकते हो, या फिर चाहो तो नेक्स्ट मंथ का भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। वॉल्यूम ठीक ही है अभी करंट मंथ में, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपायरी कल मतलब परसों होगी, तो वॉल्यूम अभी फ़िलहाल के लिए ठीक ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्रूड ऑयल में जैसा मैंने बताया, ये भी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। कल वाला एफईजी है, यहाँ से थोड़ा बहुत सेल कर सकते हो, बट टारगेट बड़ा ही नहीं है। नीचे यहाँ पर ये येलो कलर का बॉक्स आप सपोर्ट देख लोगे, यहाँ से वापस बाइंग आने की एक्सपेक्टेशन है, तो ये रेंज भी कहीं ब्रेक हो जाए, किसी एक साइड के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज वगैरह कर दे, तो एक लेवल को रिमूव कर देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर नीचे आपका कल का लो एक सपोर्ट है, और ऊपर आपका 6030-40 के अराउंड वीक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है जरूर, और वीक है लेकिन। ठीक है, तो थोड़ी बहुत यहाँ से आपको इस रेंज में स्कैल्पिंग मिल सकती है, 20 पॉइंट की, नथिंग एल्स। वॉल्यूम ठीक ही है, ध्यान रखना। निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज ही चल रहा है, कुछ है नहीं उसमें। कल के लेवल बनाए थे वही सेम चल रहे हैं, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। फ्यूचर चार्ट मैंने कल बताया था आप लोगों को, सेम ही लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो वही फिलहाल के लिए मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट ओपन आपका आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुआ था, कह सकते हो आप। फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर गया, कल का जो हाई था वो एक एफईजी का रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट ने फिर से सेलिंग ली। नीचे भी एक एफईजी है, तो आएगा तो वहीं रुक जाना चाहिए अब, तो वही रेंज बनी हुई है। चाहो तो चार्ट दिखा देता हूँ, आपकी चॉइस बता दो, अगर कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड। ग्रेट, लाइक भी करते रहो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। निफ्टी फ्यूचर के लेवल बताओ, बताए तो अभी कल वाली है, दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। निफ्टी फ्यूचर कहाँ गया? हाँ ये है। Great. ठीक है, फिलहाल के लिए ये चल रहे हैं लेवल इसमें। ऊपर मेजर रेजिस्टेंस काफ़ी दूरी है फिलहाल के लिए, ओवर हेयर 24,300 के आसपास। नीचे एक सपोर्ट था, वहाँ से परसों ही सपोर्ट ले लिया था, 23,590, 23,550। फिलहाल ये एफईजी के बीच बीच में मूव कर रहा है। ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, नीचे यहाँ सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है सपोर्ट एफईजी के। सो दीज आर द लेवल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लाइक भी करते रहो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। से रिपीट कर दूं, ये नेचुरल गैस का फ्यूचर का जो चार्ट लगाया है, अभी आप ऑप्शन ट्रेड जो कर रहे होगे, वो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे होगे, बिकॉज कल एक्सपायरी हो चुकी है नेचुरल गैस में। ठीक है, तो नेचुरल गैस में जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे होगे, बट उसके अगेंस्ट जो आप फ्यूचर का चार्ट देख रहे होगे नेचुरल गैस का, वो आप या तो जनवरी का देख सकते हो या फिर दिसंबर का देख सकते हो। जनवरी में वॉल्यूम ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिसंबर मैंने दिसंबर का लगा रखा है, दिसंबर में वॉल्यूम ठीक ही है।
डेटा की बात करें तो एक डेटा है शाम को आपका 8:30 पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Caroline Hepker. France's Prime Minister wants a budget deal that will bring the country's deficit down to almost 5%, a target that was also sought by ousted predecessor Michel Barnier. Francois Bayrou says he is pursuing a balanced agreement that doesn't unreasonably target companies that create wealth and jobs. I am not for targeting business. I am for its protection. I want everyone to realise that this is where our riches lie. I think it is necessary to recognise that big groups and small businesses make up a single economy. Francois Bayrou speaking there during an interview with the French channel BFM. He was speaking via a translator. His comments come just hours after his cabinet was named. Amongst the appointees, experienced finance professional Eric Lombard, who will serve as finance minister. But the new government faces a difficult task in finding support for the budget in the National Assembly, where Emmanuel Macron's lawmakers are in the minority and opposition forces have shown little desire for compromise. Now, Keir Starmer has delivered his first Christmas message as UK leader. After almost 6 months in office, the Prime Minister struck an optimistic tone, despite criticism of his management of the बिल्कुल, ये economy. आपका Starmer says एफई that से he's अगर now सेल किया तो looking ज़्यादा बड़ा towards a टारगेट, more positive 2025. एफई से अगर सेल किया तो ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं इसमें यहाँ पर। ठीक है, ये इतना ही है, नीचे सपोर्ट है। हाँ, ये अगर ब्रेक हो जाए नीचे लेवल तो बेटर है, या फिर ऊपर एफईजी ब्रेक हो जाए तो बेटर है। तो एक रेंज थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज हो जाएगी। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसको रिमूव करके थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते हैं नीचे से बाइंग के वक्त। या फिर नीचे एफईजी, ये नीचे वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो फिर हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टारगेट रख रख सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल के लिए रेंज ही है, ऊपर सेल करोगे नीचे बाई, ऊपर सेल नीचे बाई, यही कर सकते हैं। ध्यान रखना, ओपन इक्वल टू लो पे सेल मत करना और ओपन इक्वल टू हाई पे बाय मत करना। ठीक है, तो आर नॉट द गुड लेवल फॉर बाइंग सेलिंग। तो कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। सेम नेचुरल गैस के साथ भी है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है कल वाला ही और नीचे सपोर्ट बन चुका है। तो ये भी रेंज बाउंड बन चुका है। ये फिलहाल मैंने नेचुरल गैस का दिसंबर मंथ का चार्ट लगा रखा है। वॉल्यूम ठीक ठाक ही है, चाहो तो आप कौन से मंथ का, जनवरी मंथ का चार्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट इट। बाकी वॉल्यूम ठीक ही है, इसलिए मैंने लगा रखा है। कल से मतलब परसों से उसको लगा देंगे, एक्सपायरी भी है परसों ही शायद, आई थिंक कल तो मार्केट बंद रहेगा उस वजह से। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द bell icon, subscribe the channel, like the stream, share with your friends and family members as well, so that many people also can join our live stream. If you want to open the account in Dhan, link in the description box और comment box, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो धन में और ट्रेड कर सकते हो सब जगह। ओके, नीचे आ गया देखो, 20 पॉइंट का टारगेट है। दो चीज़ कर सकते हो, या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पर, या फिर अपना एसएल कॉस्ट पे रख के छोड़ दो। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोज कर देता है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो वापस रिटर्न कर जाएगा। ओके, जिन लोगों ने एफई से सेल किया, ये रेंज बनी हुई है तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा। करंट कैंडल को देखोगे तो ओपन इक्वल टू हाई है 5963, ओपन है इसका, हाई भी 5963 है। तो डायरेक्टली बाय मत कर बैठना यहाँ पर नीचे येलो कलर के बॉक्स पे। हाँ ठीक है, क्लोज हो गई, ठीक है कोई इशू नहीं है। अब आ जाता है नीचे तो कर सकते हैं। कैंडल ओपन इक्वल टू हाई पे डायरेक्टली बाय नहीं करते हैं, ध्यान रखना।
despite the downside coming through for Vistry, the home builder, which is one of the biggest losers, if not the biggest loser across the European space so far, dropping close to 17%, Guy. Let's talk about what is happening in the commodity space. An armada of vessels operating near Asia's maritime thoroughfares, moving hundreds of millions of barrels of sanctioned oil, called the Dark Fleet. The ships also risk environmental catastrophe. And hide their location to move sanctioned oil. We became aware of this flotilla in the end of 2023. It was the size and the scale of the flotilla that kind of caught our attention. Importantly, it's outside territorial waters and in an area where countries have much more limited enforcement rights. Positioned midway between the oil exporters in the Persian Gulf and oil consumers like China, it's an ideal spot for ships from east and west to converge. Typically, calm waters make transfers easier. We've been following sanctioned oil for quite a long time, and tracking that, we found that not only had that cluster grown, but also the number of ship-to-ship transfers, so these are transfers of oil done at sea, that number had increased steadily. The trade in oil subject to US sanctions has surged since 2022, fueled by curbs on Russian exports, as well as restrictions reimposed on Iranian crude in 2018. Not all the oil in this cluster and moving around this area is Iranian, but the vast majority is. Because of US sanctions on Iran, Iran really needs to sell its oil and really needs the revenue that comes from these sales. That was a Bloomberg Originals on how this Southeastern Asian oil hub is helping funnel sanctioned Iranian crude out of the Middle East into China, into Asia. Subscribers, of course, can watch the full documentary on the Bloomberg terminal, on the website, on Bloomberg.com, and, of course, on the Bloomberg Originals YouTube page. European natural gas prices, let's talk about those as well, because they're rising for a fourth day on supply concerns. This as a deadline for a key pipeline that transits Russia, Ukraine into Europe. That could be ending in just a week's time on the 1st of January. It also coincides with forecasts for colder weather across Europe, likely to increase demand for gas. Let's bring in Bloomberg's Priscilla Azevedo Rocha. Priscilla, let's talk about what happens when this transit deal ends. Are we ready for it here in Europe? Hi, thank you so much for having me. So some countries say, such as Slovakia and Czech Republic, that they are yet not ready for it because this gas costs more to them than any other possible alternative. But those countries, they had years to prepare and so on. It's just a very misfortune that the end of this agreement, this 5-year agreement, comes when Europe is still, the balance of supplies here in Europe are still very, very tight. And it coincides with a bout of cold weather, as you said, so which is likely to see an increase in demand for gas. So it could end up being a tight winter for the continent. Priscilla, which European nations in the east, of course, of the continent are most exposed, most dependent on this particular flow of Russian gas? And how does that leave them in terms of their exposure? Right now, the most vulnerable one would be Slovakia. Slovakia relies on this gas for most of its industrial and household consumption. Up to a month ago, we also had Austria, who managed to break the current contract that they had with Gazprom. And to a certain extent, we have Czech Republic. Hungary and other countries in Central Eastern Europe, they get their gas from Russia through Turk Stream. So this leaves Slovakia in a very vulnerable position as they have to look for alternative supplies. Might that be through Germany or import of LNG, which would also come through Germany because they're landlocked. So it leaves them looking for alternatives that are more expensive.
We are still seeing quite a lot of LNG from Russia coming into Europe as well. Is that where we've got to go? You talk about the kind of more expensive alternatives. What are the alternatives that many of these countries are going to have to deal with? So the alternatives would effectively be importing electricity, importing natural gas supplies for electricity. But at the moment, Europe is still in a very vulnerable position because where would the supplies come from? They will come from the US, they will come from Qatar. And those projects, they are still under construction. It is true, as you said, that Europe is still getting a lot of supplies from Russia, but it's not. It's only like 15% of the whole balance of supplies. Let's not forget that there is also Norwegian gas. Norway has become a massive exporter of pipeline supplies to Europe following Russia's invasion of Ukraine and most of the loss of flows through Nord Stream to Germany. So there are other options, but most of them are not ready yet. So it leaves Europe in a very vulnerable position going through this winter. Okay, vulnerable at least for this winter, given the expiry or likely expiry of this deal. Bloomberg's Priscilla Azevedo Rocha, thank you very much indeed for the details. Now to France, where the President Emmanuel Macron has appointed Eric Lombard as the country's finance minister. Lombard is an experienced finance professional, will be tasked with passing a 2025 budget and, of course, attempting to lower that deficit. Let's bring in Bloomberg's Claudia Cohen in Paris for the details. Claudia, what do we know about Eric Lombard, his background, and whether or not he can really move the needle? So Eric Lombard is currently the head of the financial group called Caisse des Dépôts, which basically make long-term investments for the French state. So what we know about him also is that he's a former banker and he's a former top executive in the insurance sector. He worked at BNP Paribas, for instance. He worked at Generali in France. So he knows a lot of things. He has deep expertise into the financial sector. And also what we know is like earlier in his career, he was an advisor of ex-economic minister, the socialist one, Michel Sapin. So he's basically quite identified as a center left-wing figure. And what we know from today's reaction of political party is like Eric Lombard is now seen as the only link between the new cabinet and the Socialist Party. So what is what has changed here? Because it feels like the rest of the government is still very centre. That not a lot has changed in terms of the formation of this new government from the Barnier government. And people are wondering, therefore, are we going to head for a different outcome? And whether or not this government can last. Is he the difference? Is he, as you say, the connection that may allow this government to last a little bit longer? Yeah, I would say that you're right, that he is the difference, because if you look at the new cabinet, as you mentioned, you can see that a lot of Michel Barnier's ministers have been reappointed. You can see also, people who were in politics like almost decades ago, and that there is a huge comeback. So there is a bit of disappointment on this side, because obviously people were hoping for a change, opposition. So we talk about the left-wing party, but let's talk about the far-right Marine Le Pen party also. I mean, I'm not going to lie, they're like laughing about it on French TV since yesterday evening. So like Eric Lombard is the only big difference, I would say, but the task for him would be as huge as it was before. So like even if his personality, let's say, has received some favors, some compliments from the opposition, the task is too difficult still, because he would need to find the right equilibrium for the new budget between how much public spend you want to cut actually, and how much tax increase are you willing to put on companies and so on household. And I would say that one of the red line that we understood that François Bayrou wasn't ready to cross, let's say, it's like the far right party, but also the Socialist Party are expecting this new cabinet to modify the pension reform that was voted out a few months ago. But François Bayrou said on French TV yesterday that he wouldn't do so. So the task will be still huge, and to
to recall a bit the timeline, this new cabinet could face a new no confidence vote as early as mid-January. What are the so we look at mid-January. We have the time frame mid-January in terms of getting this budget together. What are specific challenges facing the new government then, Claudia? They have to align. They have to get a budget together. They have to pass that budget. What are the main mechanisms for that to be implemented? So basically, they will need to, as I mentioned, they will need to come out with a figure, like how many billions are you going to find to cut for the deficit. So end of 2024, the deficit should exceed 6% of French GDP. So Bayrou is saying that his aim now is to cut the deficit down to 5% of the GDP. So in order to do that, you will need to come out with a specific figures, like how much millions, how many billions you are able to find. So he will need to answer this question, and he will need to answer this question without making any offense to the opposition party. So that would be the main task. And in terms of timeline, basically, like they need to find a solution before mid-February. Otherwise, it would be really difficult because, as you know, in France, like there is no such thing as a shutdown now because there is this emergency legislation that allows the state to continue with emergency funding. But there are a lot of, different things that are still waiting for a budget. And I would say also that the financial market, as we said many times before, like all the French risk has been integrated already since the summer, but the financial market is waiting, The financial market is waiting now, and obviously the European Commission is closely watching. Claudia, great stuff. Thank you very much indeed. Bloomberg's Claudia Cohen joining us out of Paris on the new French government. Tom, can you get to 5%? If you have a small majority, if you have an unstable government, do we need to wait for new French elections, parliamentary elections, in order to give one party or another, one group or another, the kind of clout in Parliament to be able to basically force through the kind of changes that some argue France needs at the moment? Well, that takes us to next summer, doesn't it? Precisely, and that's the problem here. Do we basically end up limping from government to government until we get there? And even then, do we get to the point where actually, if those results aren't clear, do we then need presidential elections to provide clarity? And is that the kind of the course that we're tracking through in 2025? You're putting arguably a political target on the back of Macron then, who's looking to finish in 2027. Yeah, can he last that long if we don't get a clear group within Parliament that can form a government and then can control Parliament? I think that's the question. That's the challenge for France in next year. And you talked about the socialists. They wanted to cleave off the socialists as part of that left-wing group. The front page of Le Figaro this morning, Olivier Fauré, who is the head of the Socialist Party, saying, and I'm going to treat you to some French because it's Christmas, so I apologise in advance, le socialiste affirme que aucune des conditions du pacte de non-censure proposé par la gauche. So none of the agreements that were proposed by the left have been respected by François Bayrou. So that is pretty affirmative from the leader of the Socialist Party. Nothing has changed from their point of view. Nothing has changed from their point of view. So why do we expect that this government is going to last any longer than Barnier's government? That's the point he's making. Nothing has changed. The front page of Le Monde, a broader scope on this. 2024 will go down in history as an annus horribilis for French politics. 4 governments. 4 prime ministers in 1 year, no budget and a slew of unfinished bills. France appears to be without direction and reduced to immobility. That's according to the political columnist at Le Monde. OK, let's talk about China next. Coming up, China's government extending its debt, extending losses. This after a report of a planned record issuance of special treasury bonds. These special treasury bonds will be issued to boost consumption and boost the economy. We'll talk about the details next. This is Bloomberg.
In this facility, which is part of your $2 billion investment in the last 2 years, it's a massive amount. Yes, because we focused a lot on automation and upgrading our quality standards so that we can adhere to the US FDA and European standards, because some of our vaccines now are going even to the West, which is a fundamental shift in our strategy, from back in the day when my father started the business, where we were predominantly in India and the developing India-centric, now you're more global. Yes. So you're about 8,000 strong in this facility? All Indian nationals? Mostly Indian, yes. I would say 99% of talent that we've trained overseas and in India. We have our own internal skill building center where we train on-site. Serum started with just producing vaccine for tetanus, but it's producing a lot more vaccines now. What is the next big thing you think? A global pandemic flu vaccine is something that we're working on, and I think the world will need that. Not only for the annual flu cases, but God forbid there's a flu pandemic. I think we are very well poised to make 1.5, 2 billion doses and roll it out very quickly to protect the world. And we have, of course, the other vaccines, as we talked about, HPV and malaria, that we've just launched, and we're going to scale that up as well. Bloomberg Surveillance covers the latest in global markets and the political events that influence your world. Join Jonathan Farrell, Lisa Abramowitz, and Anne-Marie Hordern only on Bloomberg. Context changes everything. Bloomberg loves earnings. I know it's like your Super Bowl, right? I can't wait. It's like opening presents in the morning. All right, it will be exciting. Nobody covers earnings like Bloomberg. Welcome back. You're watching the opening trade. We are 48 minutes into an equity market session that isn't delivering a great deal when it comes to the big picture numbers. This is what the indexes look like. You've got a whole range of markets that are closed today. The Swiss are out, the Germans are out, the Italians are out, the Nordics are out. So a lot of closed markets, so a lack of volume. It's going to be an early close to those markets that are open today. So a lot of people may not be at their trading desks or actively engaged. The US market is going to open later. Again, a shortened session is expected. So we've been looking to Asia to actually provide some of the volatility today. You've certainly seen a lot in the yen. We've seen commentary coming through from the Ministry of Finance. And we've got this story surrounding special bonds coming out of China designed to drive consumption. China's open. China will be open tomorrow as well. And those long-dated government bonds have extended losses in China. That after a Reuters report that authorities have agreed to issue a record 3 trillion yuan, that's about $411 billion of special Treasury debt next year. Let's bring in Bloomberg's Shanghai Bureau Chief Charlie Jupe. Charlie, what are the key takeaways from the report? What do we know at this point? So as you mentioned, the Reuters report was saying China is going to issue 3 trillion yuan worth of special sovereign bonds for next year, and the proceeds will be mainly used to drive consumption, upgrade equipment, develop technology, and also recapitalize state banks. The amount, the plan to increase fiscal spending for next year is not new, because the policymakers, has repeatedly said that. But the amount, Reuters reported, is higher than expected, 3 trillion yuan. But whatever, the official confirmation probably won't come out until March next year, when China's legislators will meet in Beijing to approve China's budget deficit and also the economic growth targets. Earlier this month, China's policy makers, have said, China will adopt a more aggressive pro-growth policy for next year because of uncertainties it's facing for next year. And one of the factors, worrying them is, Trump presidency, because Trump has threatened to increase tariff on Chinese exports, which has been a big contributor to China's economic growth over the past few years. Yeah, so everybody's now waiting, to see what the final number will be. Having said that, after the policymakers said they're going to boost fiscal spending for next year, there is being expectation that China will, raise its fiscal deficit to 4% of GDP next year. And on top of that, China will increase the issuance of special sovereign bonds as well as special local government bonds for infrastructure spending. Charlie, they talk about the proceeds being used to drive
the consumer side of the economy to boost consumers. How does that actually work? Where does the money get spent? Where do the proceeds go? According to a report, they're going to use the proceeds to, finance so-called consumption subsidies. They've been rolling out. Local governments around China have been rolling out, issuing coupons to residents, for them to purchase consumer goods, buy movie tickets, things like that. Yeah, and also, a big chunk of the money is going to be used to finance so-called equipment upgrade. So factories can upgrade, trade in their obsolete equipment, for more advanced technology. And that's, accounts for a big part of the government spending this year. And the finance ministry actually today issued a statement saying they're going to, accelerate the spending and expand the magnitude of fiscal stimulus next year. It just didn't give a figure, like how much more exactly they want to do that, next year. Okay, great stuff. Thank you very much indeed. Charlie Zhu joining us, Bloomberg Shanghai Bureau Chief. Let's talk about the relationship between almost actually China, Musk, and Donald Trump, because this is going to be one of the key areas that we're going to have to watch out for next year. It's going to be fascinating to see exactly what that presidency is going to look like, the role that Trump is going to play in it, the role that Musk is going to play in it, the interaction between the two, and what their relationship is with China is going to look like. What are people saying in China about Elon Musk and how he perceives China? Because he's got a big footprint there. He has a huge footprint, and what's fascinating to see when Musk is on the ground in China is how on script he is versus when he is in the US, i.e. he doesn't post anything controversial on X, he sticks to the line, he is able to parrot the phrases of Chinese officials to make sure that his business interests are protected. Will China be sitting thinking that they have someone who can at least speak softer words into the ears of Trump, even as he surrounds himself with hawk, given the business exposure he has? Let's take a listen to what Musk has been doing. There's a package. We're going to have a look at Musk, Trump, and how that relationship intertwines. In a dramatic political comeback, Donald Trump will return to the White House. And if he's going to share the credit for his victory with anyone, it's this guy. Where is he? Come on up here, Elon. Come here. Elon Musk, known for selling cars, making rockets, became one of the biggest political donors in American history. This is like a mutually beneficial business arrangement, right? Trump got money and got elected. Musk gets sway over the federal government. This mutually beneficial arrangement includes a new role for Musk that raises a whole host of potential conflicts. I think the funniest name is DOGE, the DOGE, Department of Government Efficiency. Musk wants the federal government to mostly get out of his way. Tesla is a electric car company, and it very much would like the federal government to approve its business in robotaxis, driverless cars. While pushing for less federal oversight, Musk also stands to gain billions. Elon Musk owns a major defense contractor. It's called SpaceX. The U.S. government is their most important client. He would like as many more contracts as possible and would like a president who would say, create a new Mars program and hire him to send the rockets up. This is Trump 2.0. Like the sort of old rules of conflicts of interest may be out the window here. If you want to set up for 2025, you want to watch that. Bloomberg Originals on Musk's new role in the Trump administration. Fascinating. You can watch it on the website, theterminal.com, Originals YouTube page. Well worth a watch. That is going to be one of the key relationship, you could argue, to watch in 2025. You see the impact that he had on the spending bill and the proximity they got to that government closure. You see the impact he's having on German elections now with his tacit support, UK, potentially as well. support for the FD. Here in the UK, how does a Labour government under Keir Starmer respond to an increasingly hostile Elon Musk who has taken a pot shot at apparently on almost weekly basis? How does the Conservative Party react to it? Because potentially you've got reformers being the biggest threat to the Conservative Party as well. Kimi Badenoch's talking an awful lot about this story as well and has concerns around that funding that could come from Musk into reform. This is going to be one of the narratives that we're going to have to digest
it is going to be a fascinating 2025. There is so much potential for volatility next year. What do we do between now and the inauguration? It was interesting, Beck Guthrie was just saying you can't sit in your hands, but so much could change at that point. That time frame. Brace yourselves, strap yourselves in. It's going to be a wild ride. The Pulse is coming up next. That wraps things up. Tom and I are done for the day. Have a very happy Christmas, everybody. I will see you in the new year. We will look forward to 2025. It is going to be a fascinating setup into the Trump administration. What is that going to mean for the rest of the world? We are going to be here to cover all of that. London looks lovely. Have a great Christmas, everybody. This is Bloomberg. You missed it on Bloomberg Open Interest. 11 years ago, I bought a Bitcoin on this set. It was $800. Yeah, $800, but I spent the Bitcoin on beer and groceries and gas and video games. And I wish I had kept it. I wish I would buy a Harley today if I had. Yeah, but you probably wouldn't be a TV anchor, and you probably wouldn't still be on this True. set. And what a joy that is. I'd be my feet in the sand and the beer in my hand. Don't miss the next Open Interest. Bringing you up-to-the-minute geopolitical news whenever and wherever it happens. I'm Stephen Engel at the Forbidden City in Beijing, and this is Bloomberg. Good morning from our world headquarters in New York. I'm Manus Krennic. And I'm Danny Berger. Let's set your agenda. Bloomberg Brief delivers the market news, data, and analysis you need live every weekday only on Bloomberg. Context changes everything. From the beating heart of global finance, economics, and politics, and wherever newsmakers are moving markets, Bloomberg brings you conversations that allow for deep discussions and important insights. What do you think the future is for inflation? Is this a new normal? Are markets too optimistic? How do you worry about the things that are outside your control? How does the current fighting completely stop? I'm Francine Lacqua, and this is The Pulse, every weekday only on Bloomberg. Bloomberg has the Fed decision under surveillance with the fastest coverage and exclusive analysis, including Powell's press conference. Nobody covers the Fed like Bloomberg. The top names in global leadership are on Bloomberg. When it comes to tariffs, we need to be very clear. The European Union is negotiating as a whole, so there's no room to have bilateral agreements. It's a core competency of the Commission. But speaking about the art of the deal, I think a deal can be made when it comes to the U.S.-European trade relations. Nobody covers the top global leaders like Bloomberg. Context changes everything. France's new prime minister backs a 5% deficit and names Eric Lombard as finance minister. He's now got to deliver a budget by mid-February. China reportedly plans to issue a record $410 billion worth of special treasury bonds to help boost consumption as it battles a slowing economy. Plus, European natural gas prices rise for a fourth day on persistent supply concerns, with just a week left until a key transit deal between Russia and Ukraine expires. Well, it's December 24th. The major markets, including Germany and Switzerland, closed. Others, such as London and Paris, actually scheduled to close early. Now, the European stocks overall gaining some 0.2%. Again, some of these European stocks seem to be following Asian shares higher in subdued pre-holiday trading after a Wall Street rally also was fueled by mega-cap tech shares. A couple of things that we need to watch out for. Of course, the S&P 500 on its way to a record stellar annual return, back-to-back years of more than 20% gains. The U.S. 10-year yield 4.5867. So for the conversations that matter and the insights you need, let's get started.
इस क्रूड ऑयल देखोगे स्टिल रेंज के अंदर ही है, नीचे से बाइंग, ऊपर से सेलिंग रेंज बनी हुई है। आई होप सेल किया होगा 20 पॉइंट मिले होंगे, बाइंग किया होगा 20 पॉइंट मिले। नेचुरल गैस का भी वही हाल है, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, किसी एक साइड के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए प्रॉपर्ली, लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर रेंज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अदरवाइज ये छोटी सी रेंज बनी हुई है, इसी में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी, वापस थोड़ी बहुत बाइंग आई है। लेट्स होप ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट में से कुछ ब्रेक हो। आपने लाइक नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम गाइस, लाइक भी करते रहो। करंट कैंडल देखोगे नेचुरल गैस में ओपन इक्वल टू लो है 315.3, 315.2। लेट्स होप ये ब्रेक कर दे, अगर ऊपर तो मजा आएगा। फिर थोड़ा टारगेट बड़ा रख लेंगे बाइंग साइड पे, अगर नहीं आता है फिर से रिजेक्शन मिलता है तो फिर वापस नीचे। कैंडल तो क्लोज हो गई, लास्ट कैंडल ओपन इक्वल टू लो थी, लेट्स सी ऊपर ब्रेक करता है। याद रखना किसी एक साइड पे अगर कैंडल क्लोज हो तो उस लेवल को फिर रिमूव कर सकते हैं, सो दैट रेंज थोड़ा सा प्रॉपर बन जाएगी। नहीं बनती है तब तक फिर यही रेंज है मार्केट में स्टिल। ट्वेंटी वन लाइक्स हो चुके हैं, करते रहो गाइस लाइक।
News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Caroline Hepker. France's Prime Minister wants a budget deal that will bring the country's deficit down to almost 5%, a target also sought by his ousted predecessor Michel Barnier. François Bayrou says that he is pursuing a balanced agreement that doesn't unreasonably target companies that create wealth and jobs. I am not for targeting business. I am for its protection. I want everyone to realise that this is where our riches lie. I think it is necessary to recognise that big groups and small businesses make up a single economy. François Bayrou speaking there during an interview on the French channel BFM, speaking via a translator. His comments came just hours after his cabinet was named. Amongst the appointees was experienced financial professional Eric Lombard, who will serve as finance minister. But the new government faces a difficult task in finding support for the budget in the National Assembly, where Emmanuel Macron's lawmakers are in the minority and opposition forces have shown little desire to compromise. Keir Starmer has delivered his first Christmas message as UK leader. After almost 6 months in office, the Prime Minister struck an optimistic tone, despite criticism of his management of the economy. Starmer says that he's now looking towards a more positive 2025. This Christmas, I will be hoping for peace, particularly in the Middle East, as the birthplace of the Christmas story. I'll be looking towards a better... Today, Trump threatens to retake the Panama Canal. What we know so far about the suspect in Friday's German Christmas market attack, and how American consumers are getting in the holiday spirit without the spirits. It's Monday, December 23rd. This is Reuters World News, bringing you everything you need to know from the front lines in 10 minutes every weekday. I'm Tara Oakes in Liverpool. When you hear LSEG data and analytics, what do you think of? Comprehensive in Liverpool. When you hear LSEG data and analytics, what do you think of? Because we're being ripped off at the Panama Canal. Analytics. What do you think? Here's news. Industry-leading analytics and We're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. President-elect Donald Trump threatening to reassert US control over the Panama Canal, accusing Panama of charging excessive rates to use the Central American Passage. Speaking to a crowd of supporters in Arizona, Trump also said he would not let the canal fall into the wrong hands, warning of potential Chinese influence on the passage. During his term in office, it was solely for Panama to manage and not for China or any other country to manage. In a recorded message, Panama's president, Jose Raul Molino, said that Panama's independence was non-negotiable and that China had no influence on the canal's administration. Que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. Molino's statement posted on X saying every square metre of the Panama Canal and the surrounding area belongs to Panama. Trump then responded to Molino, "We'll see about that." Trump's comments are an exceedingly rare example of a US leader saying he could push a sovereign country to hand over territory. They also underline an expected shift in US diplomacy under Trump, who has not historically shied away from threatening allies and using bellicose rhetoric when dealing with counterparts. No contract, no coffee! Striking Starbucks workers in California. The coffee chain's employees have expanded their strike to 4 more cities, including New York, Philadelphia, St. Louis, and locations in New Jersey. That's according to Workers United, the union representing over 10,000 baristas. Initially, we intended to use this press conference to ask for the public's help in identifying and locating someone who we believe carried out one of the most depraved crimes one person could possibly commit against another human being. And it took the life of an innocent New Yorker. New York Police Commissioner Jessica Tisch announcing the arrest of a man suspected of setting a woman on fire with a lighter while she appeared to be asleep on the F train at the Coney Island Stillwell Avenue subway station. Police say there was no interaction before the attack and they did not believe the 2 people knew each other.
The victim has not yet been identified. Albania will shut down TikTok for a year after the killing of a teenager that has raised fears over the influence of social media on children. The decision comes after a 14-year-old boy was stabbed to death in November by a fellow student. Local media report that the incident followed arguments between the two on social media. Videos also surfaced on TikTok of minors supporting the stabbing. A bridge connecting two states in Brazil's north has collapsed, killing at least one person and spilling sulfuric acid into the Tocantins River. Authorities say the central span of the bridge gave way, plunging a tanker truck carrying the acid into the water. Honda and Nissan have agreed to explore a merger and set up a joint holding company, which would create the world's third largest automaker. It signals a massive shift in an industry under tremendous upheaval. The two companies would aim for combined sales of $191 billion through the potential merger, they said in a statement. The consolidation would create the world's third largest auto group by vehicle sales after Toyota and Volkswagen, as legacy car makers face growing challenges from Tesla and Chinese rivals. Horror at a Christmas market in Magdeburg, Germany. After a car ploughed through crowds in an attack that killed 5 people and injured scores. The suspect faces multiple charges of murder and attempted murder. Rachel Moore in Berlin has the latest we know about him. So the suspect has been identified as a 50-year-old man from Saudi Arabia, but he moved to Germany in 2006. What's interesting about him is that he doesn't fit the typical mold for an attack like this. He had worked to help Saudi Arabians who had turned their back on Islam to seek asylum in Europe. But what we can see from his social media activity is that the man's political views were pretty radical. He has criticised Islam as a barbaric religion, and he sided with far-right parties such as the Alternative for Germany or AfD. He had also voiced his support for Elon Musk on X, Musk's social media platform, and had become increasingly frustrated with the German authorities. And what's been the reaction in Germany so far? Yeah, so what we should say for now is that the motive is still unclear. So there has been a lot of shock and grief in response to the attack, but there's also been a lot of debate online about the man's migrant background, about his political views, and this all comes at a time when German politics is already pretty deeply polarized. We are gearing up for snap elections here in February, and the far-right AfD, which the suspect had expressed support for online, is polling in second place and hoping for its strongest result yet. So we've seen these scenes of mourning, but we've also seen the AfD trying to capitalize on some of the uncertainty around migration and security. We've also seen in Magdeburg itself far-right protests. There were some scuffles on Saturday night, so they haven't been entirely peaceful. And some of the protesters were calling for remigration, which is a term used on the far right to talk about the mass deportation of migrants and anyone who's not considered ethnically German. Across the United States, financially squeezed Americans are cutting their holiday booze spending. That doesn't mean they're not getting a buzz, but they are changing their drinking habits. Reporter Emma Rumney has been looking at the new trends and what they mean for the spirits industry. So spirits wholesalers and bar owners told me that, that hasn't changed, that people kind of want to celebrate and go out and be together. They just have less cash in their wallets than they did a year or two ago. So difficult economic conditions like high inflation are squeezing people's incomes, and they're just having to be a bit more careful about how much booze they buy or the type of booze they buy or where they buy it. And that means some kind of pricier
types of liquor have seen consumers trade down into a slightly cheaper version, or bars and restaurants aren't seeing as many big bookings or people buying as many drinks as they did before. The months of October, November, and December are some of the most critical for the industry because holiday gifting and celebrations tend to drive a lot more sales than usual. So, big spirits producers said, in the past, over the past year, that they've been trying to address these changes in consumer behavior with, for example, discounts on promotions or promotions on struggling labels, or by offering smaller pack sizes to make them more accessible. And then we know from some of the wholesalers that partner with the big spirits producers that they've also been working on better advertising on platforms like DoorDash, which should cater to people that are celebrating at home more. Given the importance of holiday sales, what impact is this having on the wider industry? For some people, at least, it leaves a bit of a question mark over the major producers' key strategy, which is to get people paying more for the alcohol that they buy and get them, graduating to more expensive types of alcohol or more expensive brands. And the recent US trading has left some people or some investors worrying that strategy has kind of run out of steam or it can't deliver at the same rate that it used to. Experience the difference with LSEG Workspace, your personal ecosystem for unique insights, news, and analytics. With AI-augmented recommendations to gain the competitive edge and collaborate effortlessly with your community. LSEG Workspace, supercharge your impact. And for today's recommended read, a story about Senegal's local toy makers who are experiencing a pre-Christmas demand boom. Mostly Muslim Senegal has a strong tradition of different religions embracing each other's holidays, and sellers are hoping to win a slice of the market with toys that reflect the country's culture. You can find a link to the story in the pod description. And don't forget to check out our weekend episode, which landed on Saturday, all about weight loss drugs. For more on any of the stories from today, check out Reuters.com or the Reuters app. Don't forget to follow us on your favourite podcast player, and we'll be back tomorrow with our daily headline show.
one of the world's largest car makers, helping the firms compete with Chinese manufacturers and Japanese heavyweight Toyota. Nissan's shares fell 7.3% after the announcement. Honda's rose 14.4%. Analysts have been calling the deal a takeover that will take time to yield benefits. A key driver of equity market action over the past year was artificial intelligence, with the Magnificent Seven powering the S&P 500 to new record highs. So how big of a role will AI play in the year ahead? It's something we put to Thomas Raymond, investment management partner at Callan Family Office. It's evolving. So it started with AI producers and then AI consumers and now AI proof of concept. So what we're seeing over the past year and a half with this AI overstory is you're seeing it more and more mentioned more and more in earnings calls. So it's not just the Mag 7 that is embracing this, and they've got a lead, right? They've had their valuations balloon, but you're seeing it across this concept of AI and embracing it going across the entire corporate landscape. Thomas Raymond is investment management partner at Callan Family Office. Speaking there, analysis by Bloomberg estimates at least $1 trillion of spendings needed for data centres, electricity supplies and communications networks that will power the attempt to deliver on AI's promise to transform everything from medicine to customer service. And Germany's president has called for unity after a fatal attack in the city of Magdeburg. Frank-Walter Steinmeier acknowledged citizens' concerns during his Christmas address after an assailant drove a car into a busy Christmas market, killing 5 people. A 50-year-old doctor of Saudi Arabian origin has been detained on suspicion of multiple counts of murder, attempted murder and assault. The incident has sparked debate about immigration in the country. Luigi Mangione, the suspect in the killing of the US healthcare boss Brian Thompson, has pleaded not guilty to 11 murder and terror charges. The insurance company chief executive was shot dead earlier this month, walking into a conference at a New York hotel. Mangione appeared handcuffed and shackled in the Manhattan court as he responded to charges including first and second degree murder, criminal possession of a weapon and possessing a forged driver's license. Those are our top stories for you this morning. Let's have a look at the markets then this hour. So European stocks start higher this morning, up 0.3%. Overall, the Euro Stoxx 600 has gained about 5% this year, really badly lagging the 25% advance that we've seen on the S&P 500. The euro this morning trading softer against the dollar, down 0.1%, one spot 0.393. FTSE 100 is also up by 0.4%. Slightly treading water when it comes to the US markets. S&P 500 E-mini futures are barely higher, but then the Mag 7, of course, gained almost 1.5% on Monday. The Bloomberg Dollar Spot Index is stronger, 0.1%. In the bond markets, 10-year US yields at 4.59, German yields at 2.32. But of course, we do have the festive season. It does mean that a number of markets are closing early. Stock and bond markets closing early today in the US and the UK. That's news when you want it with Bloomberg News Now. I'm Caroline Hepker, and this is Bloomberg. Not everybody likes talking about money. Some people find it awkward. Sometimes they even find it a little embarrassing. I do not. I like talking about money. Whether it's the boardroom, the newsroom, the trading floor, I've spent the last 30 years talking about money, writing about money, and talking about it and writing about it a little bit more. I'm Maren Somerset-Webb, and every week senior reporter John Steppick and I answer your questions about You look at the 10-year falling in September to as low as 3.6%. Then you see it now at 4.6% nearly, almost a full percentage point higher in a matter of months. So what's the case for duration with that type of volatility, especially if you think that, there is more upside in yields here at the longer ends of the curve? So a couple of points on that.
you talk about longer end. I would say up until the 10-year, I think that's sort of the area that we would like, 5 to 10-year. I think when you start going into the 30-year, given the deficit trajectory, term premium can increase some more. So I do think you have to be careful where you are on that curve. Second point, valuation. I'm glad you bring up where we were in September. I mean, in September, the market was concerned around the labor market because we've just had those 2-week payroll reports. We're concerned about how much more can the Fed cut. Look at how much we have repriced. We're pricing in only one more rate cut. The terminal rate is priced at about 4%. I think that's fair. I can see a scenario where the Fed cuts more. I think they just told us last week there's a lot of uncertainty. They think inflation will be sticky. But what if you don't get a pro-growth policy early on next year and inflation, we do think that the disinflation forces are still in play. So there's a case where the Fed might cut more. I think we look at valuation, there's value that's been created. So I hear you, it's hard to say that 4.6 is the absolute peak in the 10-year. As we get closer to a higher level, so 475, 5%, I do think the equity market's going to start to pay attention to bonds again. And that's where that equilibrating mechanism will come in between bonds and stocks. Bonds are still the diversifier. In an environment where inflation's heading lower, the Fed is focused on the dual mandate. I do think if you either get weak data or you get rates rising much more, people are going to look at risk-adjusted return and say, if I can get 6%, 7% in stable fixed income, isn't that better than buying the S&P, which is going to give you maybe 10%? I think that calculation starts coming in. A lot to dig into there. I look forward to a future where the equity market is paying attention to the bond market because it feels like for months they've been telling two different stories, so you have to have two narratives in mind. But you mentioned that, of course, you can see a case where the Fed cuts more than what's expected. Can you see a case where actually the Fed hikes rates, is forced to raise rates in 2025? So the scenario of hiking, I think, requires pro-growth and higher inflation. So if you get fiscal easing somehow, which I don't see something next year at all because the the 2017 tax cuts expire only at the end of next year. I think we're going to spend all of 2025 dealing with the debt ceiling, spending cuts, DOGE, or how do we pay for the TCGA extension plus the additional tax cut. But let's say there's an aha moment in Congress, they extend the debt ceiling and they give us big tax cuts next year, early next year, in which case you're getting deficit finance tax cuts, pro-growth. I think that's a scenario where it's better growth and higher inflation. The Fed might be talking about hikes. In all of the other scenarios, I see either stagflation. It's not clear that the Fed hikes. If you get tariffs or you get, big immigration pullback, which results in higher wages but lower growth. In a lot of the other scenarios, I see two-sided risks. So there I see a Fed that's nervous, takes a step off. They've already cut 100 basis points. They've been calling it the recalibration phase. They stay on hold. I see that. So if I think about all the scenarios, I see them cutting a few more times, but really cautiously because they're nervous about all the policy risks and what combination of growth and inflation are we going to get. गाइस इंडियन मार्केट भी क्लोज होने वाला है, 3 मिनट रह गए। नेचुरल गैस अभी भी रुका हुआ है उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। एक दो कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर दे तो फिर इस लेवल को रिमूव कर देंगे। जो लोग बाइंग में हैं वो लोग ट्रेल कर लेना, रिटर्न आया तो, नहीं तो वापस भी आ सकता है नीचे। सेम कहानी क्रूड ऑयल की चल रही है, रेंज बाउंड है, ऊपर एक एफईजी, नीचे एक सपोर्ट यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आई थी, फिर उसका रेजिस्टेंस यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, फिर से यहाँ से बाइंग आए। किसी एक साइड पे मार्केट एसएल हिट कर दे बायर के या फिर सेलर्स के तो रेंज थोड़ा प्रॉपर बन जाएगी। अदरवाइज यही रेंज है, इसी रेंज में बाइंग सेलिंग हो सकती है। 20 पॉइंट नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे सपोर्ट है, ऊपर ये एफईजी है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस। बाकी नेचुरल गैस का ये आपका दिसंबर मंथ का चार्ट है, एक्सपायरी कल है, वॉल्यूम ठीक ही है दोनों जगह। मैंने फिलहाल के लिए दिसंबर का ही लगाया हुआ है, तो देख लेना अगर आप जनवरी का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो। मेरा वाला दिसंबर मंथ का ही है। मैंने बता ही दिया, एक ही रेट है आज 8:30, कल मार्केट क्लोज रहेगा। क्रिसमस है, सो एंजॉय द क्रिसमस। बाकी नेचुरल गैस भी यही रेंज है, ऊपर सेलिंग, नीचे बाई। किसी एक साइड के ऐसे लगा निकल जाते हैं बायर या सेलर के, तब थोड़ा एक रेंज प्रॉपर बन जाएगी।
लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इवनिंग क्रिसमस से पहले, तो थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज ध्यान रखना। लंदन सेशन में कुछ खास मोमेंटम आया ही नहीं। लंदन सेशन ऑलरेडी ओपन था 1:30 के बाद, 3:30 हो चुका है। एक्सपेक्ट करेंगे अब शाम को इवनिंग पे 6:30 के अराउंड जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो थोड़ा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे। बाकी और कोई न्यूज या इवेंट होगा तो विल सी दैट। बाकी कल अगर मार्केट क्लोज है तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी आपकी थर्सडे को शेड्यूल है, एंड देन फिर नेचुरल गैस की 27 फ्राइडे को शेड्यूल है। बाकी जिसने अगर सेल किया है क्रूड ऑयल में, याद रखना है मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका है इस लेवल पे। कहीं ना कहीं ब्रेकअप या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा रिस्क मत लेना। ऑलरेडी मॉर्निंग पे एक बार सेल किया था, फिर एक बार बाई किया था, फिर से सेल किया है। अब या तो ये ब्रेक हो या सपोर्ट लेके जाए ऊपर, ये ब्रेकआउट हो। बाइंग के वक्त ओपन इक्वल टू हाई पे बाय मत करना, और सेलिंग के वक्त ओपन इक्वल टू लो पे सेल मत करना कैंडल को देख के। ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर यहाँ से सेल भी किया हुआ है तो मान के चलो सिर्फ 20 पॉइंट का ही ये छोटा सा मोमेंटम है, और नीचे से भी बाई करोगे तो 20 पॉइंट ही मिलेंगे इस तरीके से। तो स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता उसमें ज़्यादा। रेंज ब्रेक हो जाए तब थोड़ा फिर एक मूव बड़ा आ सकता है। दिसंबर में वॉल्यूम ठीक है। दिसंबर में वॉल्यूम ठीक है, इसलिए जनवरी का नहीं लगाया। जनवरी में थोड़ा सा मेरे को चार्ट में लेवल थोड़ा सही नहीं दिख रहे हैं, इसलिए दिसंबर का लगाया हुआ है। जनवरी के चार्ट में ना लेवल थोड़े से प्रॉपर नहीं है। नीचे एक एफईजी यहाँ पर भी है, कल का लो 5910 के आसपास। दैट इज ऑल्सो एफईजी एरिया। ठीक है, तो अब चाहो तो कॉस्ट पर डाल दो क्रूड के सेलिंग की ट्रेड के एसएल को, या फिर एसएल को अगर बुक करना चाहो तो बुक कर लो। वैसे इसमें कोई खास बड़ा टारगेट मिला नहीं है। देखोगे तो लगभग वही जैसा मैंने बताया 20 पॉइंट ही मूव कर रहा है मार्केट। वापस रुका तो वापस रिटर्न कर जाएगा। किसी एक साइड पे ब्रेक कर दे नीचे या फिर ऊपर, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो अगर जिन लोगों ने सेल किया या तो बुक कर लो। अगर वेट करना चाह रहे हो क्या लेवल ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर एसएल कॉस्ट पर रख लेना। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं, विच इज़ गुड 50 पॉइंट। बाकी अगर ये ब्रेक नहीं होता, यहीं से वापस मार्केट सपोर्ट लेता है, तो फिर देखेंगे। अगर ऊपर रेजिस्टेंस ये जो एफईजी है ये ब्रेक हो जाए तो उस केस में भी थोड़ा सा फिर एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। फिलहाल के लिए बहुत ही स्मॉल रेंज में फंस गया है। oil price rise on positive short term market outlook। जब भी ऐसी न्यूज आती है ना, मार्केट अगेंस्ट ही जाता है।
25 लाइक्स हो चुके हैं, लाइक करते रहो गाइस, कम ऑन। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों तक? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है तो ही बता दो। आई थिंक वॉइस आ रही है क्लियर, राइट? आई थिंक वॉइस आ रही है क्लियर, राइट? हाँ सर जी, वॉइस क्लियर आ रही है ना? चलो ठीक है। News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Caroline Hepker. France's Prime Minister wants a budget deal that will bring the country's deficit down to almost 5%, a target also sought by his ousted predecessor Michel Barnier. François Bayrou says that he is pursuing a balanced agreement that doesn't unreasonably target companies that create wealth and jobs.
I am not for targeting business. I am for its protection. I want everyone to realize that this is where our riches lie. I think it is necessary to recognize that big groups and small businesses make up a single economy. Francois Bayrou speaking there during an interview on the French channel BFM, speaking via a translator. His comments came just hours after his cabinet was named. Amongst the appointees was experienced financial professional Eric Lombard, who will serve as finance minister. But the new government faces a difficult task in finding support for the budget in the National Assembly, where Emmanuel Macron's lawmakers are in the minority and opposition forces have shown little desire to compromise. In Germany, the president has called for unity after a fatal attack in the city of Magdeburg. Frank-Walter Steinmeier acknowledged citizens' concerns during his Christmas address after an assailant drove a car into a busy Christmas market, killing 5 people. A 50-year-old doctor of Saudi Arabian origin has been detained on suspicion of multiple counts of murder, attempted murder and assault. The incident has sparked debate over immigration in the country. Luigi Mangione, the suspect in the killing of the US healthcare boss Brian Thompson, has pleaded not guilty to 11 murder and terror charges. The insurance company chief executive was shot dead earlier this month walking into a conference at a New York hotel. Mangione appeared handcuffed and shackled in the Manhattan court as he responded to charges including first and second-degree murder, criminal possession of a weapon and possession of a forged driver's licence. Keir Starmer has delivered his first Christmas message as UK leader. After almost 6 months in office, the Prime Minister struck an optimistic tone. Despite criticism of his management of the economy, Starmer says that he's now looking towards a more positive 2025. This Christmas, I will be hoping for peace, particularly in the Middle East, as the birthplace of the Christmas story. I'll be looking towards a better, brighter future for every person, and celebrating the joy and wonder that Christmas brings. The Labour leader also used the traditional message to thank those who'll be spending Christmas serving others, including the emergency services and armed forces. Meanwhile, Conservative leader Kemi Badenoch says it's a time for reflection and supporting those who need assistance. Now to the markets. A key driver of equity market action over the last year has been artificial intelligence, with the Magnificent Seven powering the S&P 500 to new record highs. So how big of a role will AI play in the year ahead? We've been asking Thomas Raymond, investment management partner at Callan Family Office. It's evolving. So it started with AI producers, and then AI consumers, and now AI proof of concept. So what we're seeing over the past year and a half with this AI overstory is you're seeing it more and more mentioned more and more in earnings calls. So it's not just the Mag 7 that is embracing this, and they've got a lead, right? They've had their valuations balloon, but you're seeing it across this concept of AI and embracing it going across the entire corporate landscape. That was Thomas Raymond, investment management partner at Callan Family Office, speaking there. Analysis by Bloomberg estimates that at least $1 trillion of spending is needed for data centres, electricity supplies and communications networks that will power artificial intelligence and its promise to transform everything from medicine to customer services. The fastest ever object built by humans is flying closer to the sun than ever before as it studies the star's surface and atmosphere. The Parker Solar Probe will pass 3.8 million miles over the sun, but even at that distance, it will endure temperatures of more than 1 million degrees Celsius. Professor Tim Horbury is leading the research into the sun's solar winds. The radiation can damage astronauts, it can knock out satellites, and it even has effects on the ground, for example, in the power grid. So by understanding how the solar wind is made and how it carries the magnetic field out into interplanetary space, we hope in the long run to be able to make better predictions about what's going to arrive at the Earth. Professor Tim Horbury speaking there. The Parker Solar Probe will reach speeds of 435,000 miles per hour during the orbit. If you're wondering, that's the equivalent of travelling between London and New York in 29 seconds.
And those are a few of our top stories. Let's get to the markets this hour. European stocks are up by 0.2%. So some festive spirit there, even though it's a holiday shortened session in the UK and the US today. Germany is already closed today for a national holiday. FTSE 100's up by 0.3%. Stock futures for the US treading water a little bit. They're slightly nudging higher now. We did see the Magnificent Seven gain almost 1.5% yesterday. So even though you had weaker US consumer confidence figures out yesterday, that didn't seem to dent the rally that we've seen in markets. The S&P 500 has risen 25% since the end of 2023. Looking at the bond markets briefly, 459 for US yields, UK gilt yields at 458. The Bloomberg Dollar Spot Index is up a fraction. The euro trading softer is lost 7% against the US dollar since September. We trade at 1.03. कोई कैंडल नेचुरल गैस में ऊपर क्लोज हो गई है. कैंडल क्लोज्ड इन नेचुरल गैस अबव द रेजिस्टेंस एरिया मॉर्निंग पे, और कल सेलिंग आई थी यहाँ से. क्लोज हो चुका है तो इस लेवल को रिमूव कर सकते हैं. वी कैन रिमूव दिस लेवल विच इज़ गुड साइन. अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अगर सस्टेन करे तो हम इसको एक प्रॉपर सपोर्ट मान सकते हैं. दिस इज अ प्रॉपर सपोर्ट एरिया वी हैव राइट नाउ. एक कैंडल थोड़ा सा और रीटेस्ट के तौर पे या फिर नॉर्मली क्लोज होनी जरूरी है. क्लोज हो ही जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है. एक और कैंडल, ठीक है, इसको अब रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे. एक कैंडल क्लोज हो गई है, नीचे नहीं आनी चाहिए करंट कैंडल वापस से, क्योंकि अगर वापस से नीचे आ गई तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा. या तो ये रीटेस्ट कर दे या फिर और ऊपर क्लोज हो जाए. कंफर्म हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, विच इज़ गुड साइन. फिर प्राइस नीचे वापस आएगा तो फिर से हम बाइंग कर सकते हैं. जो लोग ऑलरेडी बाइंग में हैं वो लोग चाहें तो अब ट्रेल कर सकते हैं. यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस डे हाई का ही है कल का, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. मिनट टाइम फ्रेम पे शायद यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस कल था. वो 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट में है. तो ध्यान रखना 15 मिनट में डे हाई इज द ओनली रेजिस्टेंस वी हैव. भी अटक गया वहीं पर, देख रहे हो, मैंने बताया था ना. दिस लेवल एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट. तो फिलहाल ये भी रेंज में फंसा हुआ है. किसी एक साइड के एसएल निकल जाए, किसी एक साइड कैंडल क्लोज हो जाए तो शायद बड़ा मूव करे, या तो फिर कंप्लीटली नीचे आ जाएगा प्राइस यहाँ से, लाइक इस तरह से. या फिर यहाँ से अगर ऊपर एफईजी का लेवल निकलता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे. तो एफईजी ब्रेक हो नहीं रहा, नीचे वाला सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हो रहा अभी भी. $9.6. Oil prices are up and Bitcoin trading at $94,280. That's news when you want it with Bloomberg News Now.
ये भी सिर्फ छोटा सा ही ट्रेड है, ध्यान रखना, 20 पॉइंट। बाकी जो लोग सेलिंग में थे या तो उन्होंने बुक कर लिया होगा प्रॉफिट, अगर रुके हुए हो एसएल कॉज पे रखना। नीचे जाने के लिए लेवल के ब्रेकडाउन की ज़रूरत है, नहीं होगा तो फिर मार्केट रुका रहेगा इसी रेंज के अंदर। सेम जिन लोगों ने बाइंग की है वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना। चाहो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर अगर रुकोगे एफईजी के ब्रेकआउट के लिए तो एसएल कॉज पे रख लेना। अगर ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा और टारगेट मिल सकता है, नहीं हुआ तो फिर से रिजेक्शन मिल जाएगा सेम एफईजी जोन से। Yeah, that case 22. फिर ये अगर ये सॉरी नेचुरल गैस में तो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, ये भी कैंडल शायद ऊपर क्लोज आते बेटर ही है, तो फिर ऊपर पूरा स्पेस ही है पूरा। ऐसा कोई बीच में रेजिस्टेंस फिलहाल बना नहीं है। 5 मिनट में एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर शायद 325, तो थोड़ा बहुत रुक सकता है। 15 मिनट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 15 मिनट में डे हाई इज द ओनली रेजिस्टेंस। बट 5 मिनट में यहाँ पर एक कल मैंने देखा था रेजिस्टेंस बना हुआ था। 15 मिनट में शायद ये एफईजी की तरह रुक सकता है। 15 मिनट में शायद ये एफईजी की तरह काम कर जाए, नहीं तो 5 मिनट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा यहाँ पर रुक सकता है अराउंड 325-26। ठीक है, देखते हैं। वाह, इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में, इंडियन रुपीस जो है डॉलर के कंपैरिजन में कितना वीक हो गया। वाह, $1 बराबर 100 रुपीस हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, ये क्रूड ऑयल में याद रखना, जिन लोगों ने बाई किया है सपोर्ट से चाहो तो बुक कर लेना यहाँ पर, या फिर अगर रुकना चाह रहे हो एफईजी के ब्रेकआउट का वेट करोगे तो एसएल कॉस्ट पर रख लेना। ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर टारगेट मिलेगा, नहीं होगा तो फिर से रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं सेम एफईजी से। वैसे एफईजी इतने बार टेस्ट हो गया, कोई तो लेवल ब्रेक हो अब, या तो एफईजी या फिर ये सपोर्ट 20 पॉइंट। ठीक है, स्कैल्पिंग ही मिल रही है, नथिंग एल्स। कोई बड़े टारगेट अचीव नहीं हो रहे अभी क्रूड में।
क्रूड ऑयल का हो गया टारगेट 20 पॉइंट स्कैल्पिंग डन फ्यूचर। अब आपकी मर्जी है, निकलना चाहो निकल जाओ, नहीं तो एसएल कॉस्ट पर रख लो। एफईजी अगर ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब कैंडल क्लोज होती है प्रॉपरली, तो फिर थोड़ा बड़ा टारगेट इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं ब्रेक हुआ, यहीं से रिजेक्शन लिया तो वापस रिजेक्शन मिल जाएगा। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी एक साइड का लेवल ब्रेक हो जाए, नहीं तो बस घूमता रहेगा ये। और अब बाइंग सेलिंग भी रिस्की हो जाएगी, बिकॉज ये एफईजी तो बहुत बार टेस्ट हो गया, नीचे सपोर्ट से भी बाइंग आ चुकी है। क्रिसमस प्रेजेंट लग रहा है मुझे तो। बाकी जिन लोगों के पास धन का अकाउंट है, अब आप अपने चार्ट पे, अगर आपके पास धन का अकाउंट, अगर आप ऐप में यूज़ करते हो या फिर टर्मिनल वेबसाइट में यूज़ करते हो, तो उनका एक नया फीचर आया है। अभी तक अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते होगे, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए? ओपन इंटरेस्ट टैब में जाना पड़ता है, फिर स्ट्राइक प्राइस में आप लगा के देखते हो, स्ट्राइक प्राइस के आगे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में लाइक 25,400 का कॉल ऑप्शन का इसके आगे ओवाई किया है, ठीक है, या तो नंबर में लिखा रहता है या फिर वहां पर बार बने होते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो, जैसे अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हो ना, सेम तरीके से आप चार्ट में देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, कि आपने निफ्टी का चार्ट लगा दिया, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, फिर स्टॉक का चार्ट लगा दिया, इसके ऑप्शन एंड फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे इस साइड पे आप देख पा रहे होगे कि चार्ट लगा हुआ है, मान लो एक नेचुरल गैस का चार्ट है, तो यहाँ पर आपके ऑलरेडी जितने भी ओपन इंटरेस्ट पे होगा वो सब बना आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल के नाम से, एक इंडिकेटर के तौर पे, इंडिकेटर पे जाना, वहां पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे ओपन इंटरेस्ट दिखाई देंगे डायरेक्टली चार्ट पे, कि इस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, इस लेवल पे स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, कॉल और पुट दोनों साइड का।
इंडिकेटर का नाम है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल ऑन चार्ट, तो इसको आप यूज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा डायरेक्टली। तो एक और कैंडल हो गई नेचुरल गैस में लेवल के ऊपर क्लोज, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। दिस रेजिस्टेंस इज नाउ नॉट वैलिड, ओके। नीचे एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ऊपर 15 मिनट में 330 331 के अराउंड है। जो लोग बाइंग में थोड़ा बुक कर लेना, एक काफ़ी बड़ा टारगेट है, डायरेक्टली तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए। बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, एक एफईजी है जहाँ पर प्राइस थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश करेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पर ऐसा कोई और रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा। 5 मिनट में यहाँ पर 323 24 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखता है, और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। फॉरेक्स चार्ट में देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। करते रहो सभी लोग। हाँ, फॉरेक्स चार्ट क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, फॉरेक्स चार्ट में यहाँ पर एक एफईजी है, तो वो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको। एमसीएक्स में कुछ क्लियरिटी है नहीं यहाँ पर ना, फॉरेक्स चार्ट में क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देयर इज एफईजी नेचुरल गैस में, काफ़ी अच्छा एफईजी है, एग्जैक्टली रुका है, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, वापस नीचे आएगा तो बाइंग कर लेंगे। मैं इसको एमसीएक्स में कैसे बनाऊँ?
अरे यहाँ कहाँ जा रहा है? ठीक है, यहाँ पर एक एफईजी है, परफेक्ट एफईजी है एक्चुअली, बट दिखेगा नहीं हमें एमसीएक्स में, क्योंकि ये प्राइस एक्शन यहाँ का कहीं बिल्डअप है इस लेवल का। टू पी एम 2:30 के आसपास बना है ये हमारा मार्केट, तो क्लोज जाता है 12 PM के अराउंड, तो सो नहीं हो पाएगा। तो इसको किस तरह से देखें? तो एमसीएक्स में नहीं बना है तो फिर हम उसको फॉरेक्स के अकॉर्डिंग लगा तो सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो किस तरह से रिएक्शन देगा उस पे। नहीं बना तो क्या कर सकते हैं इसमें? Let's see the 5 minute time frame. देखो फॉरेक्स चार्ट में बना है, एमसीएक्स में कुछ बना नहीं है, तो फिर ये एफईजी यूज करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। एफएक्स ओपन ब्रोकर का चार्ट देखोगे ना फॉरेक्स में, वहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। क्रूड भी देखोगे तो वही एफईजी पर ही रुक गया वापस। जो लोग बाइंग में हैं भैया, अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लो या फिर एसएल कॉस्ट पर रख लो, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एफईजी ब्रेक नहीं हुआ तो फिर वापस नीचे आ जाएगा प्राइस। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही ले चुका है।
नीड टू सी, किसी एक साइड ब्रेक करना जरूरी है, या तो बायर कैसल उड़ाए या फिर सेलर कैसल निकाल दे, तभी या तो यहाँ तक एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे या फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है। उस केस में दोनों ही ऑप्शन ओपन है। तो जो बाइंग में थे या तो बुक करो या फिर एसएल कॉस्ट पे रख लो। ब्रेक हो गया एफईजी तो और जाएगा, नहीं होता है तो फिर या तो रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक रेंज प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो जाती किसी एक साइड पे, नेचुरल गैस की तरह। थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से, एक लेवल के रेंज के एसएल जाने दो, फिर ट्रेड प्लान कर लेना, वो सेफ रहेगा। नहीं तो एफईजी के रेजिस्टेंस पर ही है। फॉरेक्स चार्ट में देखोगे ना, ये जो कल की कैंडल है 1815 वाली, 615 की जो कैंडल है इवनिंग पे, ये ग्रीन कलर की बनी है, यहाँ हमारे वहाँ रेड कलर की बनी है। इंपॉर्टेंट एफईजी है ये काफी ज्यादा। ये एफईजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो फिर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही बुलिश हो जाएगा। एमसीएक्स में थोड़ा सा ये
तो ये वाई सॉरी आपका एफईजी जैसा मैंने बताया नेचुरल गैस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये होल्ड नहीं होता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश हो जाएगा इन नेचुरल गैस। So remember this FVG. लाइक्स हो चुके हैं, लाइक करते रहो सभी लोग। ठीक है, अगर ये होल्ड नहीं होता है एफवीजी तो फिर मान के चलो अगर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके निकल गया सुपर बुलिश। बाकी जो ऑलरेडी बाइंग में थे वो लोग चाहे तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग का प्लान रखना। ठीक है, बहुत छोटा सा एफवीजी है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये बिकॉज फॉरेक्स में आ गया एग्जैक्टली लेवल पे, एमसीएक्स में नहीं आया है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर एफईजी ऊपर ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस केस में। एफईजी अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ये टारगेट इतना ही है, यहाँ से वापस एक थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस सेलिंग दे। अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर वापस ऊपर जाएगा प्राइस। तो जो लोग बाइंग में है ट्रेल करो इस तरीके से एंड देन एक छोटा सा पुल बैक का प्लान कर सकते हो, छोटा सा ही ऐसा लगना, ज़्यादा बड़ा नहीं। फॉरेक्स चार्ट में वो तो एफईजी एक साथ बनाए ना इसने आई थिंक। पीपल आर वाचिंग एटलीस्ट 37 लाइक तो होने चाहिए। कम ऑन गाइस, लाइक करते रहो, रुकना नहीं है लाइक्स पे। चार्ट जूम करना पड़ेगा। दो दो एफईजी एक साथ बना दिया लग रहा है इसने।
क्रूड ऑयल लुक्स लाइक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है कैंडल की शायद। ओपन इक्वल टू लो कैंडल है फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में देखोगे तो करंट कैंडल ओपन इक्वल टू लो 5960, दैट इज ओपन ओपनिंग प्राइस। ओपन इसका 5960 है एंड लो इसका 5959 है, तो सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उसको हम ओपन इक्वल टू लो कंसिडर करते हैं नॉर्मली 1 पॉइंट पे। तो फिलहाल के लिए देखोगे तो ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, लेट्स सी ब्रेक कर देता है अगर ये एफईजी को रिमूव करके यहाँ से। कैंडल इज ओपन इक्वल टू लो, रिमेंबर open equal to low in crude in 15-minute candle। दो दो एफईजी एक साथ बना रखे हैं एक्चुअली। एमसीएक्स में यहाँ पर देखोगे एक एफईजी जिसके ऊपर और है। फॉरेक्स के चार्ट में तो क्लैरिटी है, एमसीएक्स में चार्ट में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी।
क्रूड ऑयल एफईजी के ब्रेकआउट पर कैंडल अगेन ओपन इक्वल टू लो। करंट कैंडल देखोगे ये भी ओपन इक्वल टू लो ही है। 5969 ओपन है, लो 5969 है, एग्जैक्टली ओपन इक्वल टू लो। क्रूड में भी कैंडल ओपन इक्वल टू लो है, साथ ही नेचुरल गैस में भी ओपन इक्वल टू लो ही कैंडल दिखेगी आपको। जो लोग बाइंग में है नेचुरल गैस में एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एफईजी है, दो एफईजी एक साथ है एक्चुअली। एक एफईजी यहाँ पर भी है, थोड़ा सा इसके अपर लेवल पे भी है, तो दोनों साथ में बने हुए हैं। चाहो तो मर्ज कर सकते हो या फिर अलग अलग बना सकते हो। अलग अलग बनाने से बेटर है एक साथ ही बना दो। ठीक है, अगर मर्ज नहीं करना चाह रहे हो तो इस तरीके से दो भी लगा सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर दो एफईजी एक साथ बने हुए हैं एक्चुअली। नीचे भी एक एफईजी बन गया 317 के अराउंड, नीचे एक आपका सपोर्ट है ही है। एंड उसके नीचे एक आपका एफईजी मिल जाएगा 300 के अराउंड, एंड देन सपोर्ट 219 के अप्रोक्सीमेटली।
फाइल में कैंडल ओपन इक्वल टू लो जरूर बनी थी, ब्रेकआउट लग तो रहा था, अभी तक हुआ नहीं है। वापस कैंडल थोड़ा रिजेक्शन दे रही है उसी एफईजी एरिया से। क्लोजिंग देखते हैं कहाँ आती है।
ऑयल स्टिल अभी भी उसी एफईजी पर रुका हुआ है। नेचुरल गैस भी एफईजी पर पहुंच गया है फिलहाल के लिए। लास्ट कैंडल ओपन इक्वल टू लो जरूर थी। दिस कैंडल इज नॉर्मल। लास्ट कैंडल देखोगे 320.5 ओपन था, 320.4 लो था। दिस कैंडल इज नॉर्मल कैंडल ओपन 323 लो 322.6 सॉरी हाई। हाँ लो भी ठीक है। नेचुरल गैस में जो लोग बाइंग में हैं कहीं नीचे से, ठीक है, वो सपोर्ट जो था वहां से अगर रुके हुए हैं तो अपना एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना यहाँ पर। ओके, एफईजी है थोड़ा बहुत रुक सकता है। हाँ ये एफईजी अगर ब्रेक हो गया तो फिर अलग बात है, फिर तो ये कंप्लीटली बुलिश साइड पे चला जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से एक सेलिंग का प्लान करेंगे। थोड़ा बहुत रिजेक्शन नहीं तो मिल सकता है यहाँ पर। फॉरेक्स चार्ट में भी एफईजी पर ही है। वाह, natural gas is trying to take some rejection from the FEG zone। FEG से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेने की कोशिश में है। नीचे भी एक एफईजी है, देखते हैं होल्ड करता है फिर ब्रेक कर देता है। ब्रेक किया तो और ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने सेल किया थोड़ा सा एसएल स्ट्रिक्ट रखना,
जो लोग बाइंग में है यहाँ से, वो लोग अपना एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लो भाई। नीचे आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा प्रीमियम ही चला जाएगा नहीं तो। बाकी अगर ये एफईजी ब्रेक हो जाता है तो ये टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा, अगर ब्रेक हुआ प्रॉपरली तो। और फिर हाई लेवल से वापस सेल कर देंगे। और अगर नहीं होता है ब्रेक तो फिर एक्सपेक्ट करना कि इतना ही टारगेट है, यहाँ से थोड़ा बहुत हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। सेलिंग भी देखो, नीचे भी एक एफईजी है, तो कोई बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। ये थोड़ा बहुत ये एफईजी तक पर आएगा, यहाँ पर रुक सकता है। दैट एफईजी इज एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेल किया है एफईजी से इन नेचुरल गैस, वो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एसएल रखना। देखते हैं कितनी सेलिंग आती है, फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर सेकंड टारगेट, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा वापस सपोर्ट का वेट किया जाएगा लोअर एंड पे। बाकी सेलिंग का भी टारगेट इतना ही है नेचुरल गैस में, एफईजी से दूसरे एफईजी तक। ध्यान रखियो जो लोग एफईजी से सेल बाई करते हैं, ओके। क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख रहा हूँ, फॉरेक्स का एक्सटीआई यूएसडी एफएक्स ओपन ब्रोकर का, तो उसमें जो हमारा वाला एफईजी यहाँ बना है ना, वो फॉरेक्स वालों का थोड़ा सा यहाँ बना हुआ है इस लेवल पे। ठीक है, जो एफईजी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो कल लगा रखा है हमने, वो थोड़ा सा इन लोगों ने इनके चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा अपर लेवल पर है। स्ट्रेंज एक्चुअली। कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम एफईजी को रिमूव करना पड़ेगा हमें,
और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर तो काफी ह्यूज लिक्विडिटी है, लुक एट दिस, द लिक्विडिटी इज टू हाई ओवर हियर।
क्रूड ऑयल लास्ट कैंडल देखोगे नहीं क्लोज हो पाई, अभी भी उसी एफईजी पर है। थोड़ा सा याद रखना, मैंने जैसा बताया चार्ट में जो उनका एफईजी बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा हाई लेवल पर है। यहाँ कहीं बना रखा है उन लोगों ने एफईजी, बट हमारे एमसीएक्स में भी ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो इट इज स्टिल ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एफईजी, रेजिस्टेंस पर ही है एफईजी के। ठीक है, लेवल के ऊपर एफईजी के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है क्रूड ऑयल में, तो हम अभी रिमूव नहीं कर सकते। इट इज स्टिल ऑन रेजिस्टेंस एरिया, एफईजी का जो रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल ये रेंज अभी भी इंटैक्ट ही है, किसी साइड ना ऊपर ब्रेक हो पा रही है ना नीचे ब्रेक हो पा रही है। नेचुरल गैस को देखोगे नीचे सपोर्ट जरूर है, वहां से बाइंग आई है, फिलहाल एफईजी पे थोड़ा बहुत रुक रहा है। एफईजी के ऊपर निकल गया थोड़ा सा और ऊपर जाएगा यहाँ तक, यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस ही है मेजर। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग आई तो नीचे फिर ये थोड़ा बहुत एफईजी पर रुकेगा प्राइस। लेट्स सी, देखते हैं वापस एफई से थोड़ा सा बाइंग सेलिंग थोड़ा संभल के करना। एसएल छोटे होते हैं, आई नो इट, बट फिर भी पीएम हो गया है, थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेक्ट करेंगे 6:30 के अराउंड न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग के बाद। लाइक भी करते रहो गाइस, सभी लोग जो लोगों ने नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Nathan Hager. And I'm Karen Moscow. Karen, we begin with our focus on markets as we head into the Christmas holiday. Germany may already have the day off, but Wall Street traders are heading into a shortened trading session. Here in the U.S., the stock market will close at 1 o'clock Wall Street time this afternoon, while bond trading wraps up at 2. Yesterday, markets saw a familiar scenario. Magnificent Seven stocks led the charge with a gauge of the Mag 7 rising almost 1.5%. Gene Munster, managing partner at Deepwater Asset Management, says maybe choppy, but 2025 will be another good year for big tech. There's an important nuance to how the market, I think, plays out in 2025, is that during that run from 96 to 2000, there were 10 pullbacks. There was 12 pullbacks from 95 to 2000, so 10 pullbacks. So about 2 per year is what we saw of 10% or greater on the NASDAQ. And I would just say it's really healthy for these multi-year runs to have these pullbacks. And so I'm anticipating, as I said, a couple of those. And what's the catalyst that does that? It's always hard to predict, but we're going to get those. And I still continue to believe we're going to end 25 much higher on the NASDAQ than we started. Deepwater Asset Management's Gene Munster notes the S&P 500 has risen 25% this year, with the top 7 big tech stocks accounting for more than half that advance. Well, Nathan, as for individual stocks this morning, shares of Honda soared 12% in Asia. The car maker's announcement of a $7 billion stock buyback is offsetting concerns about its plans to acquire rival Nissan. Bloomberg News automotive editor Craig Trudell says shareholders in both companies may be questioning the move. Real questions about just how happy shareholders across the various companies involved are going to be with this. To put it plainly, I mean, this is really Honda coming to Nissan's rescue. Honda will, take the lead in forming this holding company that Nissan will be a part of. Maybe Mitsubishi Motors will join. And the big question is, where does Renault stand in all this as Nissan's biggest shareholder?
Bloomberg's Craig Trudell says the agreement will create one of the world's largest car makers, helping the firms compete with Chinese manufacturers and Japanese heavyweight Toyota. Well, another well-known brand is in the news this morning, Karen. This one's in retail. The Nordstrom family is joining forces with a Mexican chain to take its namesake department store private. This is going to be an all-cash transaction valued at about $6.25 billion, including debt. Dana Telsey covers retail at Telsey Advisory Group. The privatization of a family-run business that's been around for over 100 years is definitely a spark of change. I think the new environment today is different than it was in the past, and you have to give Nordstrom credit for all that it's accomplished. But the go-forward environment requires big changes, and whether it is a reduction in the number of full-line stores they have, the acceleration of what may be for the rack, the continuous pursuit of new and curated brands in their assortment. For all what we know about Nordstrom, the service element and the loyal customers they have is something that needs to be expanded and accelerated go forward after all that they've accomplished. Retail analyst Dana Telsey says Nordstrom's annual revenue peaked at nearly $16 billion 5 years ago. The company was hit hard by COVID-19. It has yet to return to its pre-pandemic highs. Nordstrom shares fell 1.5% yesterday. We have some news this morning, Nathan, involving Elon Musk. His satellite company Starlink is in talks to provide British Airways owner IAG with Wi-Fi service on its fleet of jets. The talks underscore a looming shakeup in the aviation services market, fueled by the deployment of satellite constellations orbiting closer to Earth. Airlines are inking deals with Starlink and others to replace costly, limited in-flight Wi-Fi. Well, Karen, a U.S. national security panel has deadlocked on its review of the sale of U.S. Steel to Nippon Steel. And we get that story from Bloomberg's Doug Krisner. We're told the Committee on Foreign Investment in the U.S. delivered its final evaluation to the White House late Monday. And as of that moment, President Biden has 15 days to announce a decision. Now, he's long indicated his opposition to this deal, and he's repeatedly said U.S. Steel should remain domestically owned and operated. Even so, the White House has never said flatly that Biden would block it. The companies have signaled they plan to challenge any refusal in court. President-elect Trump has said he would block it, but the timeline means it would be resolved before he takes office. In New York, I'm Doug Krisner, Bloomberg Radio. All right, Doug, thank you. Former President Bill Clinton is in a hospital in Washington, D.C. after developing a fever. An aide says he was admitted to Georgetown University Medical Center for testing and observation. The aide says the 78-year-old former president is in good spirits. Bill Clinton has had a number of health issues since leaving office. He had quadruple bypass surgery in 2004, and in 2021, he was in the hospital for 6 days with an infection. Let's turn to the latest on the Trump transition now, Karen. Two top advisors to Donald Trump's 2024 campaign are now joining an outside group to promote his agenda as president. Chris LaCivita was the Trump campaign's co-manager. Tony Fabrizio was its pollster. Now they are both going to be senior advisors to the Building America's Future super PAC. This group has already been influential. Last year, it gave $28.3 million to a pair of super PACs that ran ads against Vice President Kamala Harris. Now, the group is airing ads aimed at boosting President-elect Trump's contentious defense secretary nominee, Pete Hegseth. Well, Nathan, the House Ethics Committee has released its investigation into former Congressman Matt Gaetz. The 37-page report accuses the Florida Republican of regularly paying for sex with women, including a 17-year-old girl he did not know was underage, and buying and taking illegal drugs. Here's Bloomberg congressional reporter Billy House on where Gaetz's case goes from here. There still remain no charges criminally or even civil at this point against him. So there's really no criminal reason why he can't run for public office. If he were to return to the U.S. House, and there's no indication he's thinking of that, there's been rumors he might run for governor of Florida or some other post. There right now is no reason why he can't do that, other than the voters could read this report and, of course, respond in a negative way, obviously. And Bloomberg congressional reporter Billy House says Gaetz has repeatedly denied wrongdoing and says the Ethics Committee relied on witnesses that federal prosecutors deemed not credible. Time now for a Bloomberg sports update. Here's Dan Schwartzman.
Thanks, Karen. The Packers clinch a playoff berth with a 34-0 win over the Saints in Green Bay as the Packers record the first shutout of the NFL season. In the NBA, the Knicks win their fourth straight, outlasting the Raptors 139-125. Celtics fall on the road at the Magic 108-104, while the Lakers lose at home to the Pistons 117-114, despite a triple-double from LeBron James. NHL action, Rangers continue to struggle, losing 5-0 to the Devils. The Bruins knock off the Capitals 4-1, while the Lightning win the Battle of Florida over the Panthers 4-0. That's your Bloomberg Sports Update. And that's news when you want it with Bloomberg News Now. I'm Karen Moscow. Today, Biden's death sentence commutations and how they'll frustrate Trump's plan to enjoy a scaled-back Christmas this. It's Tuesday, December 24th. This is Reuters World News, bringing you everything you need to know in 10. Christopher Wall. Exclusive access possibilities. President Joe Biden is commuting the sentences of 37 death row inmates, converting them to life in prison without parole. The decision is in direct opposition to President-elect Donald Trump, who says he plans to resume executions at the federal level once he's in office. White House reporter Nandita Bose has been digging into Biden's decision. So President Biden was under a lot of pressure from congressional Democrats, human rights groups. Pope Francis weighed in, and they wanted him to do away with the death penalty. And there was this consistent pressure building on the president for the past several months. And he did not do away with the death penalty entirely. He still left 3 men on the death row for crimes they've committed. But he definitely moved the needle when it comes to doing away with the death penalty. It was a huge step forward. What did Biden have to say about his reasoning for making this decision? Biden said he was guided by his conscience and that he was convinced that the death penalty at the federal level needs to be stopped, and that he couldn't stand back and see a new Trump administration resume executions that he had stopped when he got into office. So 37 out of 40, who are the 3 individuals whose sentences he didn't commute? Right. So it leaves out 3 of the most actually well-known men. It's Dzhokhar Tsarnaev, who was convicted of the Boston Marathon bombing in 2013. And then there was Robert Bowers, who was convicted for the mass shooting at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh in 2018. And then Dylan Roof, who was convicted for the shooting at the church in Charleston in 2015. And the reason these 3 men were left out is because Biden's decision does not apply to cases of terrorism or mass murder. All 3 have filed their appeals, and legal challenges to their sentences, which is a process that can take years and may not happen while Trump is in office. Matt Gaetz, former Florida congressman and briefly President-elect Donald Trump's pick for attorney general, allegedly paid a 17-year-old young woman for sex and purchased drugs illegally, dating back to 2017. That's according to a House Ethics Committee report made public on Monday. Our legal reporter, Andrew Goldsworth, is based in D.C. and is covering the fallout. I think the most surprising thing is that the scale of this. We knew, Congressman Gaetz has been facing allegations in this area for quite a long time, but this report really laid out in detail how long it lasted and how many people were involved. The report found that he paid more than $90,000 to about 12 different women from 2017 until 2020, and the report found that many of those payments were for illegal drugs or for sex. And now he's already dropped out of consideration for a cabinet appointment, but what sort of fallout could Gaetz see from this? It's unclear. Obviously, this could become an issue if Gaetz wants to try to get back his House seat or potentially run for the Senate in Florida. We know that he's already been announced to join the right-wing news organization One America News Network as a host there. He's already been criminally investigated over these allegations by the Department of Justice, and they told him last year that he was not going to face charges. How has Gaetz responded? He issued a statement on X, on social media, before it came out, basically characterizing this as his generosity to what he called former girlfriends or people that he dated. He has denied having sex with anyone who is underage, but he also didn't agree to speak under oath with the committee.
Luigi Mangione has pled not guilty to charges of terrorism and murder in the December 4th fatal shooting of health insurance executive Brian Thompson in Manhattan. If convicted, Mangione faces life in prison without the possibility of parole. Donald Trump says he'll consider not shutting down social media site TikTok. Maybe we gotta keep this sucker around a little while, you know? The U.S. Senate passed a law last April requiring TikTok's Chinese parent company ByteDance to divest the app, citing national security concerns. The app could be banned in the United States by January 19th, though ByteDance is fighting the law and the U.S. Supreme Court has agreed to hear the case. And the Trump transition team is planning to pull out of the World Health Organization on day one. That's according to a health law expert familiar with the discussions. एफईजी स्ट्रॉन्ग और क्रूड ऑयल नॉट स्ट्रॉन्ग अटक गया नहीं वो कल वाला ही एफईजी है आज का नहीं है ये कल वाला ही एफईजी है कल ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग आई थी थोड़ी बहुत उसके बाद आज मॉर्निंग पे भी सेलिंग आई थी मेरे अकॉर्डिंग अब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होना चाहिए या तो ऊपर इस एफईजी का या फिर नीचे सपोर्ट का ये सपोर्ट है या एफईजी है या आज का नहीं है बहुत बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है एक बार दो बार तीन बार ये फोर्थ टाइम दिस इज अ फिफ्थ टाइम तो थोड़ा बहुत वीक तो हो गया होगा ऑब्वियसली है नेचुरल गैस का ही आज का एफईजी है नीचे आता है तो फिर नीचे एक एफईजी यहाँ पर मिल जाएगा आपको 317 पे तो फिलहाल क्रूड ऑयल देखोगे तो रेंज बाउंड है नीचे सपोर्ट और एफईजी के बीच में लाइक करते रहो गाइस 40 लाइक्स हो चुके हैं 100 लाइक्स का टारगेट डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम सब्सक्राइब द चैनल Trump kickstarted the one-year exit process in 2020 during his first term, but Biden later reversed the decision. Sudan has dropped out of a global hunger monitoring system, a move likely to undercut efforts to deal with one of the world's largest hunger crises. It comes as the Integrated Food Security Phase Classification System, or IPC, is due to release a report that's expected to show famine spreading across the country. The Sudanese government has accused the IPC of issuing unreliable reports that undermine the country's sovereignty. A Russian cargo ship has sunk in the Mediterranean Sea between Spain and Algeria. 2 of its crew are missing, according to the Russian Foreign Ministry. The ship went down after an explosion in the engine room. In Israel, the Defense Ministry has publicly admitted for the first time to killing Hamas leader Ismail Haniyeh. Haniyeh was assassinated in Tehran in July. Chinese authorities have agreed to issue 3 trillion yuan. That's over $400 billion worth of special treasury bonds next year. It would be the highest number on record as Beijing ramps up its fiscal stimulus to revive a faltering economy. China's trying to soften the blow from an expected increase in US tariffs on Chinese imports when Donald Trump returns to the White House in January. The move underscores Beijing's willingness to go even deeper into debt to counter deflationary forces in the world's second-largest economy. Now to Syria, where church leaders are advising Christians to scale back Christmas celebrations this year. Despite assurances from the Islamists who have just taken power that they are free to practice their religion. Amina Ismail is in Damascus. The de facto ruler Ahmed al-Shira has repeatedly assured them and said that Christians and other religious minorities will be safe in the new Syria and will have equal rights. But there has been a few incidents that took place over the last 2 weeks that are triggering these fears. For example, on December 18th, a group of armed men raided a church in Homs, opened fire, tried to destroy a cross, destroyed a Christian cemetery. The church leaders called HTS and they said in a statement that they quickly sent people and it was dealt with swiftly. But that's not the only incident. Like, for example, I've seen SUVs driving in predominantly Christian areas, blasting jihadist songs
And although Christian leaders every time they have reported any of these incidents to HTS, they would distance themselves from them, and they would apologize and promise that they're still trying to restore security and order in the country. But they're still worried. So Christian leaders in Damascus, for instance, held a meeting, and they decided that they will scale back on their Christmas celebrations this year, meaning that they will keep any kind of celebrations inside the premises of the church, unlike what they used to do in previous years. Like, for example, Santa that was connected to the church would walk around the streets and distribute sweets and things in the area, but they decided for this year they're going to keep it inside the church to avoid any kind of confrontation and provocation with these armed men who are just roaming around the streets. For now, they're cautious. They're waiting to see whether HCS and Ahmed al-Sharaa will be able to contain all these armed groups and give them their freedoms and rights that they used to have. Experience the difference with LSEG Workspace, your personal ecosystem for unique insights, news, and analytics. Principals, people who are elected to things, and staff, people who aren't. I've been staff, but I know the difference. Mr. Musk is finding that out, and I think you saw just as quickly as he ramped up to the spinal tap, take it up to 11. All of a sudden, he went away. And what I think is there is he's going to be directed in certain ways. He's going to have his areas of responsibility. But I think probably what happened is he got told by Trump or somebody close to Trump, like, enough already. And so I think you see a little bit more circumscribed Musk from here on out. Erin Covey, writing it up at the Cook Political Report, she says it's a house is narrow back to 1932. Young Haynes was a page there at the time, back to 1932. And Erin lines up Republicans in Democratic districts, Democrats in Republican districts. I get it, but like near Kansas City, there's a Republican congressperson going, what are you doing in Washington? What is the centrist angst of Republicans and Democrats right now, Terry?
Well, people focus on the 38 Republicans that voted against Trump, but I guarantee you, those 38 are only the ones who felt comfortable, being out there. That's the sentiment that they express about this is shared by pretty much every Republican and probably a lot of Democrats too. So, the damage Musk is doing to Trump in the Congress is really that they trust him less. They trust Musk not at all. And it's depriving him of the opportunity maybe to not only bring Republicans together more quickly, but also to get some of those centrist Democrats. So it's a worse problem than I think people understand. ओके, नेचुरल गैस देखो आ गया एफ से थोड़ा बहुत नीचे। ये नीचे वाला एफ है यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर एफ पे ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले चुका है, एक बार और ले सकता है। कैंडल ध्यान रखना, एक बार यहाँ ऑलरेडी ले चुका है। ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनेगा तो वापस यहाँ से पुल बैक आने के चांसेस रहेंगे। क्रूड ऑयल भी देखोगे तो वापस एफ पर ही है, स्टिल ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया अभी भी एफ के। भाई क्रूड ऑयल भी नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट है, वापस रुक सकता है यहाँ पर। अगर नीचे ब्रेक कर दिया सपोर्ट के तो फिर एक नीचे वाला एफ रहेगा। अभी फिलहाल के लिए रेंज चल रही है क्रूड ऑयल की है, मॉर्निंग से ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए इसी रेंज में है मार्केट।
तो इसको चाहो तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये 5 पॉइंट समथिंग। अगर ये एफईजी ब्रेक करेगा तो वापस सपोर्ट पे आ जाएगा, नहीं करता है तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत वापस रिटर्न कर सकता है। सेम क्रूड ऑयल का रहेगा, ये एफईजी से वापस रिटर्न कर गया है। यहाँ पर चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो अगर होल्ड करोगे एसएल कॉस्ट पे रख के तो ब्रेक डाउन का वेट कर लेना। ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे यहाँ तक का लेवल रहेगा, अभी भी रेंज ही है। लाइक भी करते रहो गाइस, लाइक भी करते रहो सभी लोग। करंट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है क्रूड में, ध्यान रखना। ये हो गया टारगेट जिन लोगों ने सेल किया है एफईजी से, इस पे डायरेक्टली बाय मत कर बैठने ना। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, 5960 ओपन है और 5961 इसका हाई है। 1 पॉइंट का डिफरेंस भी ओपन इक्वल टू हाई में कंसिडर होता है। बुक करना है बुक कर लो, नहीं तो एसएल कॉस्ट पर रख के छोड़ दो। अगर ये एफईजी सॉरी नीचे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट रख सकते हो नीचे, 5910, विच इज़ गुड आई थिंक। फिर उस केस में लेवल थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाएगा। बाकी अगर एक कैंडल लेवल के ऊपर ही क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई नहीं बनती तो फिर से बाइंग का प्लान कर लेंगे यहाँ से रेंज के लिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग किसी एक ना एक साइड तो एसएल जरूर जाएंगे, बायर के या फिर सेलर के, और तब फिर एक रेंज प्रॉपरली बन जाएगी मार्केट की।
क्रूड ऑयल में कैंडल ही क्लोज नहीं हो रही है, अभी भी देखोगे सपोर्ट पर ही रुक गया है प्राइस। सेलिंग में है, या तो प्रॉफिट बुक करना है फिर एसएल कॉस्ट पर रख लेना, ठीक है। जिन लोगों ने एफई से सेल किया है वापस क्रूड में, नीचे क्लोज होगा तभी जाएगा नीचे। वो रुक गया क्रूड ऑयल। जो लोग सेलिंग में है अपना प्रॉफिट या तो बुक करो या फिर एसएल कॉस्ट पर रख लेना, रुक गया रेंज में, स्टिल मार्केट इन रेंज।
सेलिंग में या तो प्रॉफिट बुक कर लो या एसएल कॉस्ट पे रख लो। मार्केट अभी भी साइडवेज ही है, कहीं ना कहीं तो ब्रेक हो जाना चाहिए था अभी तक, बट लग रहा है शायद क्रिसमस से पहले कहीं मूवमेंटम ही नहीं होने वाला। स्टिल मार्केट इन अ रेंज ऑफ 25 to 30 पॉइंट इन फ्यूचर चार्ट। ये ऊपर का लेवल भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, नीचे का लेवल भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ऊपर तो एफईजी है, नीचे सपोर्ट बना हुआ है। एक बार ऑलरेडी मॉर्निंग पे यहाँ पर बाइंग आ चुकी है। सेलिंग तो कल से ही आ रही है एफईजी पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 टाइम सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। अब फिर से बाइंग की ट्राई कर रहा है मार्केट। ठीक है, किसी एक साइड के एसएल निकलने का वेट करना, अब थोड़ा ज़्यादा रिस्क मत लेते रहना रेंज पे बार बार बाई सेल करके, नहीं तो एक साइड पे एसएल जाएंगे जाएंगे किसी ना किसी के, या तो सेलर के एसएल जाएंगे या फिर बायर के एसएल जाएंगे। जो लोग सेलिंग में हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एसएल कॉस्ट पर रख लें। अगर ये ब्रेक होता है नीचे यहाँ से तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे वाले एफईजी तक आ जाए। अगर नहीं हुआ ब्रेक तो फिर आप एक्सपेक्ट करना कि ये वापस एफईजी तक चला जाएगा। यहाँ तक कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बस स्कैल्पिंग ही मिलेगी और नथिंग एल्स। या तो रेंज बहुत छोटी है तो ध्यान से ट्रेड करना अगर कर भी रहे हो तो, क्योंकि स्कैल्पिंग के अलावा कुछ मिलेगा नहीं इसमें। एसएल किसी एक साइड के चले जाएंगे तब थोड़ा बड़ा मूव हो सकता है, दोनों साइड। जी बाइंग करें क्या क्रूड ऑयल में सपोर्ट से 5940 कर सकते हो, बट वही मैं जैसा मैंने बताया बहुत ही कॉम्पैक्ट रेंज है, स्कैल्पिंग के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको ज़्यादा। ठीक है, ये 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 20 पॉइंट नीचे आ रहा है, किसी एक साइड के एसएल निकल गए तब थोड़ा बड़ा मूव जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो ऊपर के एसएल या फिर नीचे बायर के एसएल। काफ़ी देर से रेंज बनी हुई है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेक हो जाना चाहिए 6:30 के अराउंड। 6 पीएम हो गया, 30 मिनट और है न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग पे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा वॉल्यूम आ जाए मार्केट में। नॉट अ सिंगल कैंडल इज ट्राइंग टू क्लोज, ऊपर क्लोज ही नहीं हो पा रही, देख रहे हो ना यहाँ एफईजी के ऊपर ना यहाँ लेवल के नीचे। एक लेवल भी कैंडल, एक दो कैंडल क्लोज रहे तो हम लेवल को रिमूव कर दें। नेचुरल गैस में किया था, नेचुरल गैस भी एफईजी पर ही था, थोड़ा बहुत सेलिंग आई है। ये एफईजी होल्ड होना चाहिए अगर इसको सेलिंग में आना है। अगर एफईजी निकल गया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। नीचे भी एक एफईजी है तो ये भी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है एफईजी टू एफईजी। ऊपर एक रेजिस्टेंस 330, सपोर्ट 312.11। लाइक करते रहो गाइस, 40 लाइक्स हो चुके हैं, 100 का टारगेट है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।
भोलू शर्मा जी गाना बजाओ, कौन सा गाना लगाएं बताओ सर। भोलू शर्मा जी की फरमाइश पर प्रस्तुत है सदाबहार गानों के एल्बम से सेलेक्ट किया गया एक सॉन्ग। नेचुरल गैस में भी वॉल्यूम, एक बार वॉल्यूम देखें, नेचुरल गैस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वॉल्यूम डाउन हो गया इसमें। आया तो है, ठीक ही है, अपने एवरेज के ऊपर तो आ गया। आई होप सस्टेन करे नेचुरल गैस का वॉल्यूम भी। इसमें भी टारगेट है नीचे एफईजी तक ही है, ठीक है, इसमें भी ये इतना ही टारगेट है 317 के अराउंड। यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकेगा, कैंडल देख लेना ओपन इक्वल टू हाई ना बने, नहीं तो फिर नीचे वाले एफई से बाई करेंगे वापस। वाले जी सब यूट्यूबर परेशान है, क्रूड क्यों रुक रहा है, उन्हें पता ही नहीं वहाँ एफईजी है। अब वैसे अगर देखा जाए स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पर देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर। मार्केट तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो अब यहाँ पर सेलिंग क्यों आ रही है, कोई अगर दिमाग लगाने जाए तो उसको दिखेगा नहीं। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, यहाँ है रेजिस्टेंस, नॉर्मली देखा जाएगा, या फिर एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर रीटेस्ट होना चाहिए था। वाई प्राइस इज होल्डिंग दिस एरिया। लॉजिक है, लॉजिक सब जगह सेम। नेचुरल गैस का भी देखोगे वही हाल है। करते रहो गाइस, बाकी जैसा मैंने बताया, जो लोग जिनके पास धन का अकाउंट है, ठीक है, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखते थे पहले, चाहे ऐप में देखते थे या फिर वेबसाइट में, और उनकी वेबसाइट में अगर आप उनका टर्मिनल यूज़ करते थे ट्रेडिंग व्यू धन का, तो वहाँ पर आप जब ऑप्शन चेन देखते थे तो उसका ऑप्शन चेन का टैब आता था, वही वहीं पर आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिलता था। अब आप डायरेक्टली चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर। ये नया इंडिकेटर उन्होंने लॉन्च कर दिया है जो आप यूज़ कर सकते हो। कनेक्ट कर लेना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को, धन को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से, तो डायरेक्टली धन में भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी चल जाएगा, या फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाते हो तो फिर तो अच्छा ही है। तो वहाँ पर इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर का को आप लगाना। इंडिकेटर का नाम है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल ऑन चार्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नेचुरल गैस का फ्यूचर का चार्ट है, अगर इसके एफ एन ओ आप ट्रेड करते हो और अवेलेबल हैं, जो कि हैं, तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना नंबर 330, 325, इस तरह से जितने भी आपके लेवल होते हैं स्ट्राइक प्राइस के, उन सब लेवल पे आपको आपका ओपन इंटरेस्ट भी दिखाई देगा। जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम दिखाई देता है, वैसे यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर कॉल ओपन, पुट ओपन, कॉल ओवाई, पुट ओवाई कितना है इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो उससे आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, या किस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन है लाइव मार्केट में। ये नया फीचर आया है, आज ही लॉन्च हुआ है, तो यू कैन यूटिलाइज इट इफ अगर आप ऑप्शन चेन को करते हो थोड़ा बहुत ट्रेड, ठीक है, ऑप्शन चेन के बेसिस पे करते हो तो। फिफ्टीन मिनट में बॉलिंजर बैंड ओवर, लोअर बैंड 5942 है और अपर बैंड 5972 है। ओके, बॉलिंजर बैंड भी इन द सेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बढ़िया है फिर तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉलिंजर बैंड बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, जिस तरह से प्राइस इतनी छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, तो बॉलिंजर बैंड मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, फटेगा तो ये बॉलिंजर बैंड भी फैल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, नेचुरल गैस का भी टारगेट होने वाला है, उसको बुक कर लेना।
बोलो शर्मा जी, क्या लिखा हुआ है आपने, क्या फ्यूचर है किस चीज़ का? ओके, अभी कैंडल क्लोज होने में टाइम तो है। लेट्स सी कहाँ क्लोज होती है कैंडल। क्रूड ऑयल में जिन लोगों ने बाई किया है, जिन लोगों ने सेल किया था, उन लोगों ने अगर बुक कर लिया था तो वेल एंड गुड। अगर रुके थे, ट्रेलिंग एसएल लगा के ट्रेलिंग एसएल जा चुका है। बाइंग में जो लोग थे वो लोग भी सेम चीज़ फॉलो करना। प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर रुकोगे, एफईजी के ब्रेकआउट का वेट करोगे, जो कि होगा नहीं होगा कोई जानता तो है नहीं अभी फिलहाल के लिए, तो अपना एसएल कॉस्ट पे रख लेना। नहीं तो बुक करके निकलना है तो निकल सकते हो। रेंज है, रेंज के अंदर टारगेट हो चुका है। स्टिल मार्केट रेंज पर ही फंसा हुआ है, अभी भी रेंज के अंदर ही है। ओके, नेचुरल गैस हो गया टारगेट। नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुक कर लो जो लोग एफई से सेलिंग में थे। यहाँ पर भी एक एफईजी है, देखते हैं वो कैंडल ओपन इक्वल टू हाई नहीं बना तो फिर यहाँ से देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले लिया है इसने, दूसरी बार आ रहा है ये। ठीक है, सेलर्स एग्जिट कर लेना नेचुरल गैस में, 5 पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकना चाहिए इसको। फाइट चल रही है। इसका भी वॉल्यूम एवरेज के ऊपर आ गया है तो ठीक ही है, मोमेंटम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज है, अमेरिकन एयरलाइंस ग्राउंड्स ऑल यूएस फ्लाइट्स ओवर टेक्निकल प्रॉब्लम। वाह, क्रिसमस से पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा यूएस में। सारी की सारी एयरलाइंस ग्राउंड हो गई क्या? अमेरिकन एयरलाइंस ग्राउंड ऑल यूएस फ्लाइट्स ओवर टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल इशू आर अफेक्टिंग ऑल ऑफ इट्स फ्लाइट्स, disturbing operation on one of the busiest travel days of the year. News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Karen Moscow. The holiday travel rush is on this Christmas Eve, and American Airlines said it is experiencing a technical issue with all its flights. The airline has grounded all flights nationwide, according to the FAA. In a post on X, the airline said it does not have an estimated time frame, but is trying to fix the issue in the shortest possible time. So what will the weather mean for travelers? We find out with Bloomberg meteorologist Rob Carolyn. Karen, there will be a few travel trouble spots, particularly across the southern United States and in the west. A few problems, though, this morning around the Baltimore, Washington area due to a little bit of light freezing rain. That'll give way to plain rain, and then it clears out this afternoon. A few morning snow showers from Boston to New York to Philadelphia, but they'll clear out as well. On the west coast, we've got rain ending in the San Francisco area. Watch for delays. Some late-day showers in L.A., and it looks like showers in Seattle. And that's Bloomberg meteorologist Rob Carolyn. A U.S. National Security Panel has deadlocked in its review of the sale of U.S. Steel to Nippon Steel, and Bloomberg's Jeff Bellinger has the story. We are told the Committee on Foreign Investment in the U.S. delivered its final evaluation to the White House late Monday. And as of that moment, President Biden has 15 days to announce a decision. Hussein Sheikh ji, thank you so much for joining channel membership. If you have any question, you can ask in the comment box. Current candle देखो, फिर से market ने rejection लिया है FE से. Look at the current candle as well. Again, open equal to high in crude oil. Open 5956, high 5956. ठीक है, selling आई है वापस ऊपर से उसी FEG एरिया से. देखते हैं कहाँ ब्रेक होता है. एक साइड ब्रेक होगा तो उस लेवल, उस साइड के लेवल रिमूव कर देंगे, या तो FEG रिमूव कर देंगे या फिर ये सपोर्ट रिमूव कर देंगे. 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, 3-4 बार ये एफईजी से रेजिस्टेंस भी ले चुका है.
एक ही चीज़ फेवर में है, रेजिस्टेंस पे एफईजी है कि ये लोअर लो बना है यहाँ पर बस। और ब्रेक कर दे, अगर अप साइड ब्रेक हुआ तो 69, फिर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो 56। फिर से बाय मत करना भी क्रूड ऑयल में, ठीक है? कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है, रेजिस्टेंस से सेल किया है तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, या तो प्रॉफिट बुक करो या सेल कॉस्ट पे छोड़ दो। ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो फिर ये नीचे वाले एफईजी तक टारगेट रखेंगे। टू 6 6 घंटे से रेंज में फंसा हुआ, ऑलमोस्ट 6 घंटे होने वाले हैं, प्राइस मूव ही नहीं कर रहा। गोल्ड और सिल्वर में कल के लेवल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, नथिंग चेंज। गोल्ड और सिल्वर के लेवल कल वाले ही हैं। कल सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने वहां से एक सपोर्ट लिया था एंड देन मार्केट मूव्ड अप साइड। ऊपर एक एफईजी बना हुआ है प्राइस के लिए 2627 के अराउंड, और एक रेजिस्टेंस ऊपर 2641 के लेवल के अराउंड है। तो यही लेवल है फिलहाल के लिए इन गोल्ड एंड यहाँ पर कोई एफईजी है क्या? नहीं। यहाँ पर भी एक एफईजी बना दिया इसने शायद, आई थिंक। हाँ, एफईजी बना हुआ है, दैट इज आल्सो रेजिस्टेंस एरिया। बीच में छोटे छोटे एफईजी बने हुए, तो एक्ट लाइक एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। नीचे सपोर्ट आपका बना ही हुआ है एग्जैक्टली वाला, तो ये लेवल है फिलहाल के लिए इन इन गोल्ड। आज वैसे यूएस मार्केट जल्दी क्लोज जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखना, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाएगा शायद। सेफोलॉजी क्रूड कैंडल क्लोज हुआ नहीं, कहाँ क्लोज नहीं हुआ? फिलहाल रेंज के अंदर चल रहा है क्रूड, मैंने बता दिया। ऊपर रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, ये चीज कर सकते हो। ओपन इक्वल टू हाई पे बाय मत करना, ओपन इक्वल टू लो पे सेल मत करना बस, क्योंकि इस तरह की कैंडल यूज करी जाती है नॉर्मली उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। जैसे अभी ये ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ से, एक बार ये लिया था, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम है कह सकते हो, 4 या 5 टाइम। बट डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, वापस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, सेल किया हुआ है तो फिर सेम ही चीज़ है। या तो प्रॉफिट बुक कर लो या सेल कॉस्ट पर रख लो। अगर ये ब्रेक कर गया नीचे सपोर्ट तो फिर यहाँ तक जा सकता है, स्टिल मार्केट रेंज के अंदर है। नेचुरल गैस भी मैंने बता दिया, नेचुरल गैस में सेलिंग एफईजी से करी थी तो उनका टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। नीचे भी एक एफईजी है तो वहां से थोड़ा बहुत फिर वापस पुल बैक आ जाएगा, ये 317 के अराउंड, दैट इज ऑल्सो एफईजी एरिया, 2 टाइम या। तो फिलहाल के लिए अगर सेल किया था क्रूड ऑयल में तो वही ट्रेड रनिंग चल रहा है वापस से रेंज को प्ले करने के लिए। आपकी मर्जी है, प्रॉफिट बुक करो या फिर वेट करना है तो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लो। नीचे क्लोज हुई इस लेवल के तो फिर ये एक टारगेट एक्सपेक्ट किया जाएगा, नहीं करेगी तो फिर नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है। क्रूड क्रूड करंट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है,
आ चुका हूँ, ध्यान रखना। अब तो समझ ही गए होगे क्या करना है रेंज के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग अगर रिस्क नहीं लेना है तो बैठ जाओ चुपचाप, रेंज को ब्रेक होने दो किसी साइड, फिर रेंज प्रॉपर बन जाएगी तो फिर ट्रेड प्लान कर लेना। नहीं तो अब दोनों साइड रिस्की ट्रेड है, चाहे ऊपर सेल करो या फिर बाई करो। बट बाई सेल करते वक्त ध्यान रखना, बाइंग के वक्त ओपन इक्वल टू हाई पे बाई मत करना डायरेक्टली, और सेल करते वक्त ओपन इक्वल टू लो पे सेल मत करना। 1 पॉइंट का डिफरेंस वाली जो कैंडल होती है वो भी ओपन इक्वल टू हाई लो ही कंसिडर होती है। पिछले 5 घंटे से मार्केट इसी रेंज में 12 PM के अराउंड यहाँ पर लोअर एंड पे आया था, तो 12 बजे से 6 बज चुका है, ऑलमोस्ट 6:30 हो ही जाएगा। He has long indicated his opposition to the deal, and he has repeatedly said U.S. steel should remain domestically owned and operated. Even so, the White House has never said flatly that Biden would block it. The companies have signaled they plan to challenge any refusal in court.
President-elect Trump has said he would block it, but the timeline means it will be resolved before he takes office. Jeff Bellinger, Bloomberg Radio. All right, Jeff, thank you. Well, former President Bill Clinton is in a Washington hospital after developing a fever. An aide to the former president says he was admitted to Georgetown University Medical Center yesterday for testing and observation and is in good spirits. Bill Clinton is 78 years old. Two top operatives in President-elect Trump's 2024 campaign are heading to an outside group to promote his agenda. Chris LaCivita and Tony Fabrizio are joining the group Build America's Future as senior advisors. LaCivita led the so-called Swift Boat campaign against Democrat John Kerry in 2004 and was co-manager of Trump's 2024 presidential run. Fabrizio was the pollster in all three of Trump's campaigns. Turning to the Fed now, and new voters are set to rotate onto the Fed's interest rate setting committee. The FOMC includes a rotating cast of presidents from 11 of the regional Fed banks, in addition to the 7 Fed governors and the president of the New York Fed. In 2024, Susan Collins of Boston, Alberto Musalem of St. Louis, Jeff Schmidt of Kansas City, and Austin Goolsbee of Chicago will rotate onto the committee. Meanwhile, the Fed is making changes to its stress tests of big U.S. banks. Under the new proposal, results from the annual checkups would be averaged over 2 years, and the Fed would seek public comment each year before the results are finalized. The stress tests are designed to check lenders' capital levels to see how they'd handle a hypothetical recession. Government agencies have been under pressure from banks and the incoming Trump administration to regulate with a lighter touch. France's new premier, Francois Bayrou, vowing to sharply narrow the nation's deficit to close to 5% of GDP, a plan that threatens a repeat of the standoff which toppled the last government. Bayrou, which presented his new cabinet yesterday, will lay out his new policy agenda to Parliament on January 14th and is pledged to have a 2025 budget by mid-February. And some news this morning involving Elon Musk. His satellite company Starlink is in talks to provide British Airways owner IAG with Wi-Fi service on its jet fleet. The talks underscore a looming shakeup in the aviation services market, fueled by the deployment of satellite constellations orbiting closer to Earth. Airlines are inking deals with Starlink and others to replace costly, limited in-flight Wi-Fi. And futures this morning are on the rise. It is a shortened day of trading today, and S&P futures are up 0.1%. Dow futures little change. NASDAQ futures up 0.2%. 10-year Treasury yield at 4.60%. And that's news when you want it with Bloomberg News Now. गैस भी एफई से वापस रिटर्न किया है नीचे वाले ऊपर भी एफईजी है आई होप कोई एक एफईजी अब ब्रेक कर दे या तो नीचे वाला एफईजी ब्रेक कर दे या फिर ऊपर वाला एफईजी ब्रेक कर दे सेलर्स आई होप निकल गए होंगे नेचुरल गैस में जिन लोगों ने सेल किया था एफईजी से क्रूड ऑयल अभी भी रुका हुआ है वही रेंज के अंदर नीचे ब्रेक नहीं कर पाया लास्ट कैंडल कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो गई थी ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट मार्केट इन द रेंज 1 आवर की कैंडल देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा 1 2 3 4 सिर्फ विग ही विग दिख रही है नीचे से एक चीज तो कंफर्म है जिस साइड भी एसएल जाएंगे बड़े ही जाएंगे लाइक्स हो चुके हैं 100 लाइक्स का टारगेट है सब लोग क्रिसमस मनाने चले गए हो क्या इतनी जल्दी लाइक करते रहो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को फटाफट से लाइक कर सकते हो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम सब्सक्राइब द चैनल
breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. It's you and I. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love.
but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again.
और गाइस नेचुरल गैस एफईज इन लोगों ने बाई किया था, इतना ही टारगेट है ऊपर भी। अगर ये ऊपर वाला एफईजी ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट हो गया इन द सेंस ऑफ, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा और ऊपर जाए 330 331 के अराउंड। नहीं ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा बहुत वापस रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये दोनों ही एफईजी हैं, नीचे से सपोर्ट ऊपर से रेजिस्टेंस, किसी एक साइड पे अब ब्रेक होना चाहिए। रेजिस्टेंस मिल चुका है, सपोर्ट भी मिल चुका है मार्केट को, तो एफईजी के भी ब्रेक होने के चांसेस हैं। क्रूड ऑयल कुछ नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, ऊपर से सेल कर सकते हो, नीचे से बाय, किसी ना किसी साइड ये भी ब्रेक होना चाहिए। 6:30 हो चुका है, न्यूयॉर्क सेशन इज ओपन नाउ, so we can expect some more volume right now in crude oil and natural gas। जगह कहीं नो अच्छा वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंदन सेशन के बाद। न्यूयॉर्क सेशन नाउ ओपन इट, सीधा फिर यूएस मार्केट ही ओपन होगा 8 PM पे। तो ध्यान रखना जो भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं इन रेंज पे, नीचे सपोर्ट है, ऊपर ये एफईजी का रेजिस्टेंस। मल्टीपल टाइम बाइंग सेलिंग आ चुकी है, किसी एक साइड पे जरूर एसएल जरूर जाएंगे जब भी ब्रेकआउट होगा। तो जब भी बाइंग करो या सेल करो, कैंडल का ध्यान रखना, ओपन इक्वल टू हाई लो पे बाई सेल मत करना बस। बाकी नेचुरल गैस भी एफईजी ही चल रहा है, तो एफईजी पे बाई, एफईजी पे सेल, ओपन इक्वल टू लो और ओपन इक्वल टू हाई पे बाई सेल मत करना, ओपन इक्वल टू हाई पे बाई और ओपन इक्वल टू लो पे सेल। ठीक है, बाकी अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे एफईजी तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर ऊपर एफईजी निकाल देता है तो फिर ऊपर काफ़ी बड़ा टारगेट है, फिर तो 6010 के आसपास वहां तक जाना चाहिए। भी करते रहो गाइस, 50 लाइक्स हो चुके हैं, 100 लाइक्स टारगेट है जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun, running, running, no, hold on, don't
Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running
like a captive. I'm on to you. Used to pay to my love life, standing a rainbow, who's playing it cool. I don't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. You're stronger. ओके, नेचुरल गैस फिर से नीचे आ गया है, वापस एफई से सेल किया। अगेन नीचे भी एफईजी है, किसी साइड का एफईजी ब्रेक होना चाहिए। 2 बार रेजिस्टेंस मिल चुका है, 2 बार प्राइस सपोर्ट ले चुका है इसी एफईजी से, ठीक है। एक बार सपोर्ट यहाँ लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो 2 बार सपोर्ट 2 बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। करंट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है नेचुरल गैस में, ओपन 319.0 और हाई 319.1, तो 0.1 का डिफरेंस है सिर्फ, तो ओपन इक्वल टू हाई ही कंसिडर करेंगे उसको। क्रूड ऑयल भी देखोगे तो रेंज के अंदर ही है, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग, बस यही चल रहा है इसमें। कुछ खास वॉल्यूम तो ठीक ठाक ही था न्यूयॉर्क सेशन में भी, बट मोमेंटम ही नहीं हो रहा, रेंज ब्रेक नहीं हो रही अभी भी। थोड़ा संभल के ट्रेड करना, अब रेंज काफ़ी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही रेंज बाउंड हो गया मार्केट। बाकी देखते हैं नेचुरल गैस में भी किसी एक साइड का अगर एफईजी निकल जाता है तो। ऊपर से तो सेलिंग आ ही रही है, नीचे से भी बाइंग आ रही है, 2 बार सपोर्ट 2 बार रेजिस्टेंस, दिस इज थर्ड टाइम इट टेकिंग द सपोर्ट। तो जो बाइंग सेलिंग कर रहे हो ना, यहाँ पर थोड़ा संभल के करना। देख 2 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुका है। ये भी रेंज बाउंड ही है। लाइक भी करते रहो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। यूएस मार्केट ही ओपन होगा अब सीधा 8 PM पे, 8:30 पर एक डेटा है गोल्ड और सिल्वर के लिए।
चार्ट अलग, आई थिंक आप मैं गलत नहीं हूँ तो आप जनवरी मंथ का चार्ट यूज़ कर रहे होगे नेचुरल गैस में। दिस इज दिसंबर मंथ चार्ट। कल ऑप्शन की एक्सपायरी हुई है, फ्यूचर अभी भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। सो जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है नेचुरल गैस का, ये जनवरी मंथ का नहीं है, दिसंबर मंथ का ही है। आई थिंक आप जनवरी मंथ का यूज़ कर रहे होगे। यहाँ पर 2 लिखा होगा, मेरा 1 लिखा हुआ है, तो ये करंट मंथ का है। इसकी एक्सपायरी परसों होगी, कल तो मार्केट बंद है, तो इसलिए शायद थोड़ा प्राइस अलग दिख रहा होगा आपको। सेम ही है वो। आप जनवरी का यूज़ कर रहे हो, मैं दिसंबर का यूज़ कर रहा हूँ। शर्मा जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछो। व्हाट इज योर क्वेश्चन? शर्मा जी, नेचुरल गैस में एफपीजी कैसे बना, नेचुरल गैस में एफपीजी कैसे बनाया, नीचे वाला समझाने कैसे बनाया? इस वाले की बात करो, नीचे वाले ये एफपीजी यहाँ पर है। क्रूड ऑयल वही रेंज के अंदर ही है सर, कुछ नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। सपोर्ट से बाइंग आ रही है, ऊपर एफई से सेलिंग आ रही है। किसी एक साइड ब्रेक हो जाए तो फिर मज़ा आएगा, नहीं तो इसी रेंज में रहेगा मार्केट।
ocean, empty motion. Like a roaring ocean, slowing motion. The smoke lingers after fire. Troubled mind, we are only kind, and will kindly cease to be as we intertwine with the universe and its cosmic symphony. Smoke lingers after fire. The smoke lingers after fire. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all their cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn.
Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. And I've been chilling, watching the ocean. With you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. 'Cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need
always right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts implode.
it. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. And if forever I follow, you'll be my holy ground. You forever I follow in immortality. I can see you and and you forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow in immortality. I can see you and me. पीछे सपोर्ट एफईजी के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो बाय कर सकते हैं क्या, किस चीज को? क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को कह रहे हो, उसके ऊपर भी कर सकते हो। अदरवाइज तो ये आपके सपोर्ट है, ये एफईजी का रेजिस्टेंस है। फिलहाल के लिए एफईजी से ही बाइंग सेलिंग चल रही है। सेम नेचुरल गैस में भी है। ओपन होने वाला है, शायद उसके बाद कुछ मूव हो जाए। अभी भी देखोगे क्रूड ऑयल उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। एफईजी से सेलिंग, सपोर्ट एरिया से बाइंग, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिल रहा है और फिर वही सपोर्ट एरिया से बाइंग आ जा रही है। किसी एक साइड के ऊपर मार्केट प्रॉपर ब्रेक डाउन करना चाहिए या ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी रेंज ब्रेक होगी। नहीं तो ये जो रेंज बनी हुई है पिछले ऑलमोस्ट 6 आवर से भी ज़्यादा हो गया, 7 आवर्स हो चुके हैं, ये ऐसी बनी रहेगी रेंज। नेचुरल गैस को देखोगे, नेचुरल गैस भी एफईजी टू एफईजी चल रहा है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक बार एफईजी से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट ले रहा है। तो 3 बार सपोर्ट ले चुका है, 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। एफईजी से बाई सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना इसमें। ठीक है, इतने बार भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, अब एक जगह तो ब्रेक होगा ही होगा ऑब्वियसली है। ऊपर साइड ब्रेक हो जाए तो बढ़िया ही है, यहाँ ब्रेकआउट रीटेस्ट पे भी एक प्लान हो सकता है इस तरह से। बाकी एफईजी से बाई सेल कर रहे हो तो ये रेंज को प्ले आउट कर सकते हो। 5 to 6 पॉइंट की रेंज है ये। फ्यूचर में ध्यान रखना, ओपन इक्वल टू हाई लो पे बाई सेल मत करना बस।
बाकी अगर एक क्रूड ऑयल ऊपर निकलता है तो फिर एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा बड़ा टारगेट, और अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड पे भी नीचे एफएजी तक का एक टारगेट रहेगा। नहीं, ठीक है।
कैंडल देखो क्रूड में क्लोज हो गई है ऊपर एफईजी के ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर एफईजी रेजिस्टेंस है, ये हमारा ब्रेक हो चुका है, सेलर्स कैसल निकल गए होंगे, आई होप सो। बायर्स बेटर है ना, ये वापस रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर वापस बाइंग कर सकते हो, एक फाइनल टारगेट ऊपर तक रखेंगे। वैसे यूएस मार्केट ओपन होने वाला है तो नीड टू सी कितना मूव अब और करता है बिफोर यूएस मार्केट ओपनिंग। बट या ऊपर का लेवल ब्रेक हो चुका है तो अब एक हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल में अपसाइड पे। एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। देख रहे हो ना कैंडल, ये सब एसएल जा रहे हैं सेलर्स के, जितने एसएल सेलर्स बैठे हुए थे सबके एसएल गए। एक रीटेस्ट भी जरूरी है कंफर्मेशन के लिए। बाकी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है तो ये एफएफईजी को आप रिमूव कर सकते हैं। ऊपर टारगेट हम यहाँ तक फाइनल रखेंगे ओवर हियर। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है इस लेवल पे। ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5, एक बार तो ब्रेकआउट ही कर दिया था, वापस नीचे आ गई थी फेक ब्रेकआउट दिखा के। 6 7 टाइम्स ये रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ से, दिस इज 8th टाइम ये इस लेवल पे जा रहा है, तो ये थोड़ा वीक ही मान के चलना रेजिस्टेंस को ऊपर वाला। अगर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है या फिर ओपन इक्वल टू लो बना के ब्रेकआउट करता है तो फिर मोमेंटम अपसाइड अच्छा जरूर होगा। रेजिस्टेंस जरूर है तो कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, बट या थोड़ी देर कंसोलिडेशन या फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट हो तो एक मोमेंटम अपसाइड पर जरूर मिलेगा देखने के लिए। बाकी नेचुरल गैस भी देखो काफ़ी देर से फंसा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, अब ये भी कहीं किसी ना किसी एक एफईजी को ब्रेक जरूर करने वाला है। नीचे वाला एफईजी था, एक बार सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस से, फिर सेलिंग आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर सेलिंग आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, तो 3 बार सपोर्ट 3 बार रेजिस्टेंस। मुझे लगता है कि एक ना एक साइड ब्रेक होना चाहिए। कैंडल भी ओपन इक्वल टू लो बनी है, लेट्स सी इस बार ब्रेक करता है क्या ये भी नेचुरल गैस या फिर से रिजेक्शन लेता है। बाकी क्रूड में वापस अगर पुल बैक आए तो फिर से यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नीचे से बाइंग में हैं, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर रहे थे, दे कैन ऐड मोर क्वांटिटी। फिर से किसी को बाई करना है तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। फाइनली एफईजी ब्रेक हुआ, सपोर्ट विनर। लेट्स होप थोड़ा बड़ा टारगेट मिल जाए। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन एफईजी's एसएल इज गॉन। फॉरेक्स चार्ट को देखो एक बार। कहीं मिले ना प्राइस सेल करने के लिए, काफ़ी अच्छा जोन है, या फिर कोई नया रेजिस्टेंस बना दे प्राइस। फॉरेक्स में भी ब्रेक हो चुका है, ग्रेट। नेचुरल गैस में भी अगर ये ऊपर का एफईजी गया ना, ये चला जाएगा सीधा यहाँ तक 330 टू 330 तक, अगर ऊपर का एफईजी ब्रेक होता है तो। नीचे का एफईजी ब्रेक हुआ तो नीचे सपोर्ट है, वापस सपोर्ट पे आ जाएगा। बट ऊपर वाला एफईजी अगर ब्रेक हो जाए, क्योंकि इनकी कोशिश रहेगी कि हायर हाई फॉर्मेशन को कंटिन्यू किया जाए, जबकि सेलर्स सोच रहे हैं कि ये लोअर लो ही बनाए यहाँ से इस तरह से।
Investor now wait to see if Santa will stuff their stocking. यार ये भी इसमें देखोगे तो एग्जैक्टली ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। MCX में भी ओपन इक्वल टू लो ही है। 5972 ओपन है और लो 5971, तो ओपन इक्वल टू लो ही कहेंगे इसको भी। जानबूझ के बनाई जाती है कैंडल इस तरह की ब्रेकआउट कराने के लिए। यूएस मार्केट में देखते हैं किस तरह से मूव करता है प्राइस। यप, $6,012 के 6,012 to 20। ठीक है, यूएस मार्केट ओपन होने वाला है। थोड़ा सा रुक जाना अगर रुकना चाहो तो। क्रूड ऑयल से ब्रेकआउट तो कर चुका है, अब कोई नया ट्रेड लेने से पहले यूएस मार्केट की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। नेचुरल गैस अभी भी रेंज के अंदर ही है। एफईजी ब्रेक नहीं कर पाया है अभी भी, तो फिर से किसी ने अगर बाई किया था एफईजी से तो या तो बुक कर लेना, एसएल कॉस्ट पे छोड़ देना। ऊपर एफईजी ब्रेक होगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। नहीं ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलेगा, तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्रूड में देखते हैं डायरेक्टली जाता है या फिर थोड़ा सा एक रीटेस्ट भी कर दे यहाँ पर इस तरीके से। ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ा सा है तो सही रेजिस्टेंस, बट रिस्क ही मान सकते हैं इसको। वीक होना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा सा रिस्क ही मान के ही इसको लेके चलना। सेल करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी, या फिर मिनी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन में मत जाना। फिर ब्रेकआउट होगा तो तब देखेंगे वापस। रेजिस्टेंस जरूर है, बट मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है तो होल्ड शायद नहीं होना चाहिए उतना। अगर ब्रेकआउट हो गया तो वाह। बाइंग का मौका नहीं मिला, सपोर्ट से बाई नहीं किया था। अगर सपोर्ट से बाई नहीं किया था तो फिर अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली ऑप्शन इज रीटेस्ट, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हो। नेचुरल गैस में भी हो गया। अब बाई किया था तो टारगेट हो चुका है। निकलना चाहो निकल जाओ, होल्ड करना है तो एसएल कॉस्ट पे रख लो। ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी और ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, अब यहाँ पर ही रुक जाएगा। लाइक करते रहो गाइस, 70 पीपल आर वाचिंग। 50 लाइक्स में ही रुके हुए हम, सभी लोग लाइक कर दो।
कर सकते हैं इसको। रीटेस्ट का ही वेट करोगे, ठीक है, वो भी बढ़िया, रीटेस्ट पे भी जा सकते हो अगर होता है तो। 7 के बुक कर लिया क्रूड ऑयल में। ग्रेड, वैसे जो लोग नीचे से बाइंग करके बैठे हैं, अगर वो चाहें तो थोड़ा सा ट्रेल भी कर सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि बाइंग सपोर्ट से आई है, कोई ऐसा नहीं नीचे एफईजी से बाइंग आई है, दैट इज़ अ सपोर्ट एरिया। तो जिन लोग नीचे से बाई किया है, आप प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर लो, अगर ये रीटेस्ट करके गया तो और ऊपर जा सकता है, या फिर डायरेक्टली और ऊपर जा सकता है। इस मार्केट ओपनिंग टाइमिंग 8 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। कमोडिटी मार्केट शुरू है क्या? नहीं, कल तो क्लोज है, कल क्रिसमस है तो मार्केट क्लोज रहेगा। ओके, देखो नेचुरल गैस भी ट्राई कर रहा है, लग रहा है कैंडल भी ओपन इक्वल टू लो है, लेट्स सी ये ब्रेक करता है क्या। ये भी 318.3 ओपन है और 318.3 ओपन और 318.2 लो, सो ओपन इक्वल टू लो ही है ये भी कैंडल। ये भी ब्रेक करके अगर क्लोज करता है लेवल के ऊपर तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टारगेट दे दे पूरा। नहीं आई क्लोजिंग तो फिर यहीं पर रुका रहेगा। ओपन इक्वल टू लो पे डायरेक्टली सेल मत करना अब। ओके, या डन। हाँ जी, 2 लॉट बुक कर लिए हैं, एक लॉट ट्रेलिंग में है, क्रूड ऑयल में सपोर्ट से बाई किया था। ग्रेट, ट्रेल कर सकते हो अभी भी, स्पेशली अगर फ्यूचर में हो तो। एनालिसिस, थैंक यू सो मच। 745, ठीक है, अभी एक कैंडल और है बस, यूएस मार्केट ओपन हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल के बाद, तो थोड़ा वेट करना यूएस मार्केट पे। मैं पता नहीं यूएस मार्केट में किस तरह की कैंडल बन जाए। बाकी अभी यूएस मार्केट भी क्लोज जल्दी हो जाएगा आज, लेट नाइट नहीं चलेगा वैसे, यूएस मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है, बट आई थिंक आज अराउंड 12:30 के अराउंड ही हाफ डे ही है वहाँ पर भी।
रुक गया, नेचुरल गैस फिर से रुक गया है फीजी पे। News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Karen Moscow. It is one of the busiest travel days of the year, and some are already experiencing issues this morning. There was a brief ground stop on all American Airlines flights in the U.S. It was just before 7 a.m. Eastern Time. We get more with Bloomberg's Benedict Camel. So we know the good news, as you said, is that it's done. The grounding has been lifted. This lasted about an hour, and it looked fairly disruptive. All domestic flights were cancelled by American Airlines in the US. The airline didn't tell us what the issue was. They said they had a technical issue, but they didn't go into details what exactly the nature of that was. Some users online were speculating it might have to do with software that's used to calculate the weight and balance of an aircraft. That's something you have to put in, the pilot that is, before the aircraft takes off. And that's Bloomberg's Benedict Camel. But again, that ground stop has been lifted. So what will the weather mean for travelers? We find out with Bloomberg meteorologist Rob Carolyn. Karen, there will be a few travel trouble spots, particularly across the southern United States and in the west. A few problems, though, this morning around the Baltimore, Washington area due to a little bit of light freezing rain. That'll give way to plain rain, and then it clears out this afternoon. A few morning snow showers from Boston to New York to Philadelphia, but they'll clear out as well. On the west coast, we've got rain ending in the San Francisco area. Watch for delays. Some late day showers in LA, and it looks like showers. So Raji, natural gas book or hold, buying from 315 4 lot, हाफ प्रॉफिट तो बुक कर लो ऑलरेडी, टारगेट तो बहुत पहले हो चुका है हाफ। ये एफईजी के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर एक फाइनल टारगेट ये रख लेना। हाफ प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल कॉस्ट पे छोड़ सकते हो। और राजी प्लीज डू लाइव सेशन एज वेल। मॉर्निंग पे से टाइम नहीं मिल पाता इतना, मॉर्निंग पे वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेवल बता देता हूँ, विल ट्राई। अदर ट्रेडर्स ओनली डू स्कैल्पिंग रैंडमली, नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मैं क्या कहूँ सर, कुछ नहीं कह सकता फिलहाल के लिए। स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहो उनके से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैल्पिंग करो तो उसमें भी टारगेट बड़े रखो, एटलीस्ट 10 पॉइंट का ऐसा ले रहे हो तो एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का टारगेट रख लो। विल ट्राई, मॉर्निंग लाइव सेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिनट रह गए हैं यूएस मार्केट ओपनिंग में। चांद शेयर वाली जी, थैंक यू सर। आजकल आप जल्दी आ रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू। आज भी जल्दी आने वाला था 12 PM पे, बट वो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा
मोमेंटम में ही था, थोड़ा और एक्सपेक्टेड था बट हुआ नहीं, फिर जैसे ही नहीं हुआ कॉमोडिटी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहेगा आगे को। 12 PM फिर then 11 AM। Siyam Gamer ji will join morning session as well. Thank you so much sir, definitely। कल मार्केट क्लोज है, ध्यान रखना, कल क्रिसमस है तो इक्विटी मार्केट तो क्लोज है ही है। MCX भी क्लोज है। तो कल क्रिसमस बनाओ। कल के बाद थोड़ा वॉल्यूम कम ही हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो या तो मार्केट थोड़े साइडवेज जानी चाहिए या फिर वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, क्रिसमस के बाद थोड़ा सा लंबा हॉलिडे लेते हैं बिग प्लेयर्स, जितना देखा है रिसेंट चार्ट में पिछले 1-2 सालों में। दिसंबर 25 से लेकर 5 जनवरी के आसपास तक थोड़ा वॉल्यूम कम ही रहता है। वॉल्यूम कम का मतलब ये नहीं कि मार्केट मूव नहीं करता है, वॉल्यूम कम में दोनों चीज़ हो सकती है, मार्केट या तो बिल्कुल मूव नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया के ट्रेडर्स ही ट्रेड कर रहे होते हैं MCX की और इक्विटी की अगर बात करूं। और अगले साल अभी जनवरी 20 को US प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन भी होने वाला है, तो वो भी एक मेजर पॉइंट है कॉमोडिटी के लिए कि वो किस डायरेक्शन पे जाने वाले हैं। लास्ट हॉलीडे इस मंथ का, फिर 1 जनवरी को मार्केट ओपन ही रहेगा शायद, आई थिंक। MCX का नहीं दिखा रहा क्या इसमें, MCX का क्या हाल है? 1 जनवरी को इंडियन मार्केट तो ओपन है बट आई थिंक US मार्केट क्लोज रहेगा, वहाँ पर बैंक हॉलीडे होते हैं। ओके ये है। हाँ क्रिसमस में कल आपका MCX भी क्लोज है, दोनों ही सेशन क्लोज है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही सेशन क्लोज रहेंगे। बाकी US मार्केट भी कल क्लोज है, कल बैंक हॉलीडे भी रहेंगे सारे US में, तो फॉरेक्स मार्केट भी कुछ मूव नहीं करने वाला कल, तो फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहता है। 26 थर्सडे फ्राइडे 27 मार्केट ओपन ही है, 28 29 सैटरडे संडे, देन 30 को फिर मार्केट ओपन है, 31 को भी मार्केट ओपन है। बट 1 जैन को आई थिंक बैंक हॉलीडे है US में, तो US मार्केट से वॉल्यूम कम आएगा, इंडियन मार्केट ओपन है। ओके 6 मिनट रह गए US मार्केट ओपनिंग पे। कोई मूव नहीं करने वाला, मुझे लगता नहीं कल क्रिप्टो भी मूव करेगा। चलो ट्राई करेंगे कल, वैसे हॉलीडे तो है। कौन कौन अवेलेबल है कल बता दो, नहीं तो कल एक क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन एंड बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पर एक लाइव सेशन कर लेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्रिसमस सेलिब्रेशन तो इवनिंग पे ही होता है ना शायद, या फिर
वोट कर लेते हैं एक बार, क्रिप्टो के लिए कल करें या ना करें। जनवरी में तो मार्केट बंद ही नहीं है कहीं पर भी, पूरा मंथ ओपन है। सिक्स जनवरी को भी मार्केट बंद है, बट उस दिन भी संडे हो रहा है इस बार जनवरी में, रिपब्लिक डे। पोल डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। कल इवनिंग पे तो शायद नहीं हो पाएगा, करेंगे तो मॉर्निंग पे करेंगे, इवनिंग पे तो फिर कहाँ होगा, इवनिंग पे टाइम नहीं मिल पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पोल डाल देते हैं एक बार, लेट्स सी। गाइस 1 मिनट रह गया है, 30 सेकेंड्स कह सकते हो। यूएस मार्केट ओपन होने वाला है, नेचुरल गैस ट्राई तो कर रहा है ऊपर ब्रेकआउट करने का, इस एफईजी के कर दे तो बढ़िया मजा आएगा, ऊपर तक टारगेट मिल सकता है, फिर यहाँ पर भी एक बाइंग प्लान करेंगे। बाकी यूएस मार्केट ही कैंडल है, कह नहीं सकते कहाँ चली जाए, थोड़ा सा कॉशियस रहना। क्रूड में भी हो सकता है डायरेक्टली ऊपर चला जाए, हो सकता है रीटेस्ट करे, हो सकता है ना करे रीटेस्ट, हो सकता है नीचे आ जाए। यूएस मार्केट ही कैंडल है तो उसी पर डिपेंड करता है सब। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो कल अगर लाइव चाहते हो। क्रिप्टो करेंसीज में मार्केट तो बंद है, 9 AM से स्टार्ट कर दें, मॉर्निंग पे स्टार्ट कर दें। 12 PM पे चाहते हो, 9 PM 9 AM पे, या फिर 3 PM पे, या फिर नहीं चाहते हो, हॉलीडे है तो डे ऑफ एंजॉय करो। व्हाट डू यू थिंक? 67% saying no live, enjoy day off. Participate in the poll, guys.
मंथ एडवांस मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डिस्काउंट में ही चलते हैं। यूएस मार्केट ओपन हो चुका है गाइस, यूएस मार्केट ओपन नाउ। ठीक है, एक पोल डाला हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल क्रिप्टो अगर लाइव करनी है तो बताओ किस समय करें, सुबह 9 बजे, दिन में 12 बजे, या शाम को 3 बजे, या फिर चाहते हो कोई लाइव ना करें, डे ऑफ है तो एंजॉय करें। 10 लोग वोट कर चुके हैं अभी तक। 83 पीपल आर वॉचिंग। ग्रेट। बाकी याद रखना, ये नेचुरल गैस अगर ब्रेक कर देता है ना, ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है प्रॉपरली, ब्रेकआउट वगैरह, तो एक रीटेस्ट पे यहाँ पर भी बाइंग बन जाएगी। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो इट इज स्टिल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। बाकी यूएस मार्केट की कैंडल है तो थोड़ा वॉलेटाइल है। ऊपर गया डायरेक्टली अगर तो ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, यहाँ से सेलिंग का प्लान वैसे ही रखेंगे नॉर्मल। कल का हाई का एरिया है ये। भाई को शाम को पार्टी में जाना है, किस चीज़ की पार्टी है? कहाँ जा रहे हो भोलू शर्मा जी? 8 बजे मूव आता है बिटकॉइन में, देखो 8 बजे मूव आता है यूएस मार्केट ओपनिंग की वजह से। कल तो फिर यूएस मार्केट भी बंद है ना, कल सारे मार्केट बंद है, फॉरेक्स मार्केट भी क्लोज है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही ओपन रहेगा। वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा ज़्यादा, मुझे भी लग रहा है शायद कल वॉल्यूम, मार्केट क्लोज है तो होना तो नहीं चाहिए वॉल्यूम वैसे। बाकी हम ट्रेड करेंगे तो 3 मिनट के आसपास ट्रेड करेंगे, 15 मिनट में नहीं करेंगे, 15 मिनट में तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। ट्रेड करेंगे तो या तो 5 मिनट में या 3 मिनट में ही करेंगे, सो दैट जो भी ट्रेड बने फटाफट बनते रहे छोटे छोटे एसएल के साथ। तो कल अगर क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो वी कैन डू ओनली स्मॉलर टाइम फ्रेम, लाइक 5 मिनट और 3 मिनट। क्रूड ऑयल की कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है, बिल्कुल है। कैंडल देखोगे क्रूड ऑयल की, इट इज ओपन इक्वल टू हाई। भी करते रहो गाइस, कम ऑन, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम।
आया है क्रूड ऑयल में, याद रखना ये एफईजी रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए यहाँ पर। कैंडल का ध्यान रखना, बट अभी यूएस मार्केट की कैंडल है, ऊपर से ओपन इक्वल टू हाई भी है। ये कौन सी न्यूज है? बिटकॉइन को देखो जरा, सेल करेंगे किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो बिटकॉइन को? टाइम फ्रेम बता दो, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? मिनट पे देख लेते हैं, 15 मिनट पे। लेट्स सी द 15 मिनट चार्ट। तो रैली आ रखी है 15 मिनट में, पिछले 6:30 से कंटिन्यूअसली बाइंग चल रही है। यूएस मार्केट ओपन हुआ है, एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। बाइंग तो मुझे लग नहीं रही अब बनेगी, इसमें ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस एरिया। देखो इसमें ऊपर एक रेजिस्टेंस है अराउंड 97,900 टू 98,000।
200 के बीच में, उस एरिया के आसपास सेल कर सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा नियर बाई। बाइंग के लिए तो फिर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पुल बैक प्राइस दे तभी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट तो खैर बहुत दूर हो गया, अब कोई रीटेस्ट पेंडिंग रह गया तो वो देख लेते हैं। रीटेस्ट पेंडिंग है मार्केट के पास नीचे, और तो कोई खैर लेवल नहीं है इसमें। 95,500 पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया सीधा अभी। एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस ले चुका था, ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब एक रीटेस्ट यहाँ पर कर सकता है। तो ये दो लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया 15 मिनट में तो ये। ठीक है, तो ये दो लेवल है बिटकॉइन में। या तो ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस पे पहुँच जाए, यहाँ सेलिंग का प्लान कर सकते हो इस एरिया के आसपास। थोड़ा सा एक एफईजी भी है नीचे थोड़ा सा यहाँ के एरिया के आसपास, तो ध्यान रखना, हो सकता है एफईजी से रिटर्न ना कर दे, कैंडल ओपन इक्वल टू लो ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ब्रेकआउट हो गया, तो ये रीटेस्ट पेंडिंग है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम 95,500 के अराउंड, यहाँ से वापस बाइंग का प्लान करना। तो ये दो लेवल है, नीचे रीटेस्ट और ऊपर रेजिस्टेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो वीर सिंह जी सर, आपके स्टोर से एप्पल एयरपोर्ट एयरपोर्ट एप्पल एयरपोर्ट बाई कर लिया सर आपने, एयरपोर्ट नहीं होगा, एयरपोर्ट कह रहे होगे शायद आप। थैंक यू सो मच। वो आई थिंक सेकंड जनरेशन वाला है ना, 23,000 24,000 का। बढ़िया है, ग्रेट। पसंद ना आया तो रिटर्न भी कर देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बिटकॉइन का चार्ट लगाना एक वीक के लिए, समझा नहीं, एक वीक के लिए मतलब वन वीकली एनालिसिस करना है। एफईजी पे बाई किया, क्रूड ऑयल 10 पॉइंट बुक कर लिए, कॉल ऑप्शन साइड स्कैल्पिंग कर ली है। बढ़िया है, ग्रेट। फिलहाल यूएस मार्केट की देखो कैंडल हो चुकी है क्लोज, मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर ही दिया था, रिटेस्ट भी कर दिया है। लेट्स सी, मूव करता रहे थोड़ा बहुत ऊपर। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग प्लान करेंगे, बट ये रिस्की लेवल रहेगा तो क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखना। 7 टाइम्स टेस्ट हो चुका है ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल। क्रूड ऑयल को 5970 के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो क्रूड सेल करेंगे 5970। इस एफईजी के नीचे नहीं, नहीं, अब वो एफईजी तो ब्रेक हो गया, वो तो रीटेस्ट की तरह यूज करेंगे, कोई नया रेजिस्टेंस बनेगा तब सेल करना। अभी तो रीटेस्ट पे बाइंग ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है।
उसी एफईजी पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब रिटेस्ट भी हो चुका है, तो कोई नया रेजिस्टेंस बनेगा तब देखेंगे। वापस नीचे आया तो वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, एफईजी ब्रेक हो चुका है तो अब वो काम का नहीं है। नेचुरल गैस भी देखोगे तो ब्रेकआउट के पास ही है, अब ब्रेकआउट करे तो बढ़िया ही रहेगा, ये फाइनल टारगेट मिल जाएगा। काफ़ी देर से रुका हुआ है एफईजी के बीच में, जिन लोगों ने बाई किया होगा सेल किया होगा अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। बाय द वे देखा जाए तो ये ऑलरेडी एक बार सपोर्ट यहाँ लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पर है। कैंडल ओपन इक्वल टू लो बनी थी यहाँ पर, ये देख पा रहे होगे। उसके बाद से लेवल प्राइस के नीचे आया नहीं है तो सेल कर नहीं सकते। अब अगर ये ब्रेकआउट कर गया ऊपर इस तरह से ब्रेकआउट रीटेस्ट, तो यहाँ पर एक बाइंग का जरूर प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर सीधा चला जाए तो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से सेल कर सकते हो। फिलहाल इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो लोग एफईजी नीचे वाले एफईजी से बाई करके गए थे, अगर वो निकलना चाहें तो उनका वैसे टारगेट हो चुका है, बुक करके निकल सकते हो। वेट कर रहे हो तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ रख लो नीचे कहीं 322 और 321 के नीचे। अगर ये वापस इस लेवल के नीचे आता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट कर लेना। बाकी ऊपर जाए यहाँ सेलिंग का प्लान रखेंगे, एक कैंडल ओपन इक्वल टू लो ना बने इसका ध्यान रखना। एंड एक ब्रेकआउट रीटेस्ट पे यहाँ पर एक ट्रेड हो सकता है, जैसे क्रूड ऑयल में बना है। बाकी अगर वापस सेल करना है इस पे तो कैंडल को वापस नीचे आने दो, 321.6 इस लेवल के नीचे आने दो। इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर दे तो फिर वापस पुल बैक में सेल कर सकते हो इस तरह से। है अभी एफईजी के लेवल पर ही, 3 बार सपोर्ट ले लिया एफईजी से नीचे, 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। हाँ। शर्मा जी, हाँ वही मैं कहूँ, अरे मेरा स्टोर नहीं है वो टैग हुए होंगे ना, ये लाइव लाइव स्ट्रीम देख रहे होगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स टैग हुए हैं शायद। यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे, मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे होगे तो ये लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा आपको। ये सॉप करके ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, या फिर ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा शायद। नहीं आ रहा क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन पे भी यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पर। तो ये शॉप पे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट टैग हुए हैं। तो ये स्टोर मेरा नहीं है, नहीं स्टोर तो मेरा ही है, प्रोडक्ट्स मेरे नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली टैग हो जाते हैं। सो यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर इफ़ यू वांट इट। इसमें आई थिंक फ्लिपकार्ट और मंत्रा के ही हैं अभी, और किसी वेबसाइट से नहीं है, अमेजोन वगैरह से किसी से नहीं है। तो आई थिंक इन्होंने ये बाई किया शायद, ये एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो सेकेंड जनरेशन। सुखबीर जी यही बाई किया ना आपने? ओके, एक डेटा भी आने वाला है गाइस, गोल्ड और सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। 8:30 पे ध्यान रखना, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड और सिल्वर के लिए। ओके। कैन वी सॉर्ट नेचुरल गैस? डायरेक्टली मत करो, मैंने बता दिया लेवल के नीचे ही करना, कैंडल क्लोज होती है तो। क्रूड का व्यू डाउन साइड है क्या? व्यू कुछ नहीं होता सर, इंट्राडे में व्यू का कोई मतलब ही नहीं होता। लेवल है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वीक है, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो और बाइंग आएगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा काफ़ी देर से रेंज बनी हुई थी, ऊपर एफईजी था, नीचे सपोर्ट था। एफईजी ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है फिलहाल के लिए। इंट्राडे में व्यू का कोई मतलब ही नहीं होता, जो दिखे वो ट्रेड करना होता है। व्यू लेके नहीं चल सकते, अभी सपोर्ट दिख रहा है, बाई करेंगे, थोड़ी देर में रेजिस्टेंस मिलेगा, सेल कर देंगे। तो व्यू क्या हुआ? कुछ भी व्यू नहीं हुआ।
इंट्राडे में व्यू मत रखा करो, इंट्राडे में तो जो दिखता है वो ट्रेड होता है। इंट्राडे में व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो फिर हो जाएगा काम। व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है तो थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तब थोड़ा व्यू काम आता है, नहीं तो इंट्राडे 15 मिनट एंड उससे कम टाइम फ्रेम पे कोई व्यू काम नहीं आता। हायर टाइम फ्रेम पे भले ही कोई भी व्यू हो, वो पॉजिटिव व्यू हो सकता है रेजिस्टेंस से सेलिंग आ जाए, एंड सेम वाइस वर्सा। ये आई थिंक मैंने पोल डाला हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो। कुछ लोग कह रहे थे क्रिप्टो लाइव करना है करके, कल अगर कर सकते हैं तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, कल अगर क्रिप्टो लाइव आप लोग चाहते हो क्रिप्टो करेंसी में लाइव करें, क्योंकि कल मार्केट सारे बंद हैं, इक्विटी मार्केट भी, एमसीएक्स भी सब क्लोज है। तो किस समय करें, सुबह 9 बजे करें, दिन में 12 बजे, या इवनिंग पे 3 PM पे, या फिर चाहते हो ना करें, क्लोजिंग है तो डे ऑफ एंजॉय करें। पार्टिसिपेट इन द पोल एज वेल, 36 लोगों ने ही अभी तक वोट किया है, 90 पीपल आर वॉचिंग। बाकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है क्रिसमस से पहले, तो थोड़ा क्वांटिटी का भी ध्यान रखना। भी करते रहो गाइस, 70 लाइक हो चुके हैं, 100 लाइक्स टारगेट है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। Want it with Bloomberg News Now. I'm Nathan Hager. The trading day is underway on this Christmas Eve. That is the sound of the opening bell from the floor of a kind of quiet New York Stock Exchange, but at the open, the S&P 500 is higher by about 0.2%, getting close to 6,000 again. The
The Dow Jones Industrial Average is swinging between gains and losses, getting close to the 43,000 level, and the Nasdaq Composite opens with a gain of 0.3%. 10-year Treasury yield up about 3 basis points to 4.62%. We do expect light trading with the stock market closing at 1 o'clock this afternoon, Wall Street time. Bond trading wraps up at 2, but the S&P 500 is on track for its second straight year of 20+% gains, with the Magnificent Seven mega-cap tech stocks leading the way. Nationwide ground stop is not what you want to hear if you're traveling the day before Christmas, but that is what American Airlines dealt with briefly this morning. Bloomberg's Benedict Kamal has the latest. This lasted about an hour, and it looked fairly disruptive. All domestic flights were canceled by American Airlines in the U.S. Bloomberg's Benedict Kamal says American blamed a technical vendor glitch for this brief ground stop. It says it doesn't expect any other delays or knock-on effects, but when this was underway, American shares fell as much as 5.5% in the pre-market. At the open this morning, they're down nearly 2%. Meanwhile, Amtrak continues to deal with issues that have disrupted rail service on the Northeast Corridor since the weekend. This morning, it canceled 2 high-speed Acela trains between Washington's Union Station and Boston due to mechanical and equipment issues. Amtrak is still recovering from signal power issues that hit the Northeast Corridor just in time for the holiday getaway. On top of travel concerns, we're tracking labor issues on this holiday. A Starbucks barista strike that began in Chicago, Los Angeles, and Seattle is spreading to more than 300 locations on this Christmas Eve. That is according to the Starbucks Workers United Union. It says more than 5,000 baristas will join the walkout in cities including New York, Boston, and Philadelphia. This barista is one of them. I'm fortunate enough to have a job where I have 100 chances a day to make a person smile. But when I'm understaffed, when I'm stressed, I can't do that. Now, Starbucks says the overwhelming number of its more than 10,000 locations will stay open as usual, and at the open, Starbucks shares are little changed to the upside. In Washington, President Biden has vetoed a bill that would have expanded federal trial courts for the first time in decades. The Judges Act would have added 66 federal judgeships across the country over the next decade. The Senate passed this bill in August, but the Republican-led House waited until after President-elect Trump's win last month to act on the legislation. President Biden says that hurried action, in his words, was what was behind his veto decision. The president's got another big decision that could take him into the new year, whether to follow through on his promise to block Nippon Steel's takeover of U.S. Steel. The National Security Committee that's been reviewing this deal for the last year deadlocked. More from Bloomberg's Bill Ferries. President Biden has long suggested that he would oppose this. He wants to keep the company in U.S. hands. Donald Trump has effectively said the same thing. So it's looked pretty grim for Nippon Steel to conclude this takeover. Bloomberg's Bill Ferries reports the president now has a 15-day window to decide whether he will block the deal. Both companies have said they would challenge any refusal in court. Former President Bill Clinton is spending this Christmas Eve in the hospital. An aide says he was admitted to Georgetown University Medical Center in Washington yesterday for tests and observation after spiking a fever. The aide says Clinton is in good spirits. He's at 78 years old. He's had several health issues since leaving office, most recently a 6-day hospital stay in 2021 for an infection and a mild COVID case a year later. Israel is seeking an emergency UN Security Council meeting on the Houthis. Foreign Affairs Minister Gideon Sa'ar says the Yemen-based rebel group has launched 3 attacks in recent days, including a drone and 2 ballistic missiles. Meanwhile, there is continued optimism that Israel could reach a ceasefire and hostage deal with Hamas in Gaza. We'll get more on that now from Bloomberg News Israel Bureau Chief Ethan Brunner in Tel Aviv. Right now, the issue is which Palestinian prisoners will be released. Of course, the Israelis want to prevent those with so-called blood on their hand from going, where they would go when they're free, which hostages would get freed in the first part of it. Bloomberg's Ethan Bronner in Tel Aviv. And that's news when you want it with Bloomberg News Now. I'm Nathan Hager. This is Bloomberg. Hey guys, natural gas लेवल के ऊपर क्लोज हो गया है, तो हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऊपर तक जाए, यहाँ तक अपने फाइनल टारगेट तक. काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, एंड मुझे लग रहा है अपर सर्किट भी लग जाएगा तब जाते आते. ऑलमोस्ट 5.37% अप है. ये 330 को हिट करता है तो इसमें अपर सर्किट लग जाना चाहिए. सिर्फ
60 कह सकते हो, 0.6 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पर एक अपर सर्किट भी है एंड रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से एक सेल करेंगे और नीचे ये जो एफईजी ब्रेक हुआ है ये एक रीटेस्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से एक वापस बाइंग का प्लान उस केस में रखेंगे, तो सेलिंग का टारगेट ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, व्यू थोड़ा सा बुलिश ही हो गया इसमें। ठीक है, ये परसों का रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से एक सेलिंग का प्लान रखना, बायर्स पूरा ही एग्जिट कर सकते हैं, फिर से बाइंग एक रीटेस्ट पे होगी। क्रूड भी थोड़ा साइडवेज ही हो गया ऑलमोस्ट। एक मेजर न्यूज आई है ईरान से। ईरान ने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर व्हाट्सअप, गूगल प्ले और फेसबुक, ट्विटर, ये सब बैन करके रखे थे, वो सब उन लोगों ने बैन लिफ्ट कर दिया है। कैरिमिनाटी इंडिया फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल भी रुक गया है सर ना, थोड़ा बहुत स्टक हो गया है। यहाँ पर एक सेल प्लान करना, ठीक है, इन नेचुरल गैस, ये एफईजी तक का टारगेट रहेगा, यहाँ से फिर वापस रीटेस्ट करेगा तो बाइंग का प्लान रखेंगे। बाकी नीचे से जो लोग बाइंग में थे वो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव आ गया, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था इतना चला जाएगा प्राइस, बट ये मेजर रेजिस्टेंस, मेजर एफईजी ब्रेक हो चुका है। 18 पॉइंट, वाओ। लेट्स होप क्रूड भी चला जाए अब फाइनली ऊपर तक। नमिता जी, डू मॉर्निंग लाइव एज वेल, योर एनालिसिस इज गुड, एनालिसिस इज गुड, ओनली गुड। अकाउंट ही नहीं है क्रिप्टो का, इसलिए डे ऑफ टुमारो, आसिफ प्रसाद जी। ये भी ठीक है, अकाउंट नहीं है तो फिर ट्रेड कैसे करेंगे, राइट। चांसेर वाला जी, 594 जी पर सपोर्ट आपने कैसे निकाला, विल एक्सप्लेन। डेफिनेटली यहाँ पर देखो, ये प्रीवियसली यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, प्रीवियसली एक सेम लेवल पे एक सपोर्ट यहाँ पर भी था, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया था और रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो उसी लेवल को मार्केट ने फिर से सपोर्ट की तरह प्रेफर किया है। कैरी मिराटी इंडिया फैंस, ऑसम एनालिसिस एंड लेवल, थैंक यू सो मच। इंद्रजीत जी, एनालिसिस माइंड ब्लोइंग, इसे कहते हैं ना, दैट इज अ गुड कमेंट। नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा मूव करता है, लाइक वॉलेटाइल रहता है तो ट्रेड कर सकते हैं। मोमेंटम आजकल होना स्टार्ट हो गया, जब से ना 250 के ऊपर निकला है, याद होगा 250 के नीचे तो मोमेंटम ही नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से 3-4 पॉइंट का मोमेंटम होता था। जब से 250 के ऊपर सस्टेन किया है इसने प्राइस ने, तब से मोमेंटम बहुत अच्छा हो गया, मतलब इंट्राडे में देखोगे तो आराम से 6-7 पॉइंट तो इजीली मूव कर जाता है। लॉट साइज भी अच्छा ही है, 1250 का लॉट साइज है, तो फ्यूचर में या फिर ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो, ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो भी मोमेंटम अच्छा हो जाता है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, तो खैर अच्छा ही है। 250 के नीचे मोमेंटम बहुत कम होता था, और जब वो 200 के नीचे था फिर तो पूछना ही नहीं है, जितना बढ़ता रहेगा मोमेंटम होता रहेगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 330 या 400 के ऊपर निकला तो फिर 10 पॉइंट तो नॉर्मल मोमेंटम होगा इसका इंट्राडे में, कि अगर आप नॉर्मल भी मूव करोगे तो 10 पॉइंट तो नॉर्मल मोमेंटम है। यहीं से देख सकते हो एक एफई से दूसरे एफईजी तक ही मोमेंटम 5 to 6 पॉइंट है। क्रूड भी अगर निकल जाता है ना लगभग 7,500 या 8,000 के अराउंड अगर पहुंच जाता है, 7,000 मैं भी कहूँगा, 7,000 to 7,500, क्रूड में भी मोमेंटम ठीक आते हैं फिर, आराम से 100-150 पॉइंट तो मोमेंटम इंट्राडे में होता ही है, अगर आप नॉर्मल भी ट्रेड करोगे तो। अगर नॉर्मल ट्रेड भी लोगे ना तो उसमें भी 100 to 150 पॉइंट मिल जाते हैं। अभी नॉर्मली देखोगे तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो नॉर्मली अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर में 50 to 70 पॉइंट की ही रेंज रहती है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। अब डायरेक्शनली चला गया तो बात अलग है, नहीं तो एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 50 to 70 पॉइंट ही मिलते हैं फ्यूचर में, तो वो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट अगर ये 7,500 के आसपास पहुंच जाता है क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करते वक्त। जब तक ये 7,000 के नीचे, स्पेशली 6,000 के नीचे है, तो तब तक 50 to 70 पॉइंट ही मिलते रहेंगे बस।
नेचुरल गैस इक्विटी से अच्छा है, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हाँ बिल्कुल। इक्विटी मार्केट, आप स्टॉक्स की बात कर रहे हो ना, स्टॉक से तो बेटर ही है। स्टॉक्स मार्केट, स्टॉक में ट्रेड करोगे वो पता ही है आपको, अगर मोमेंटम होगा तभी मूव करते हैं, नहीं तो बड़ी एक कैंडल बना दो साइडवेज। बहुत रेयर ही होता है कि कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली रोज ही मूव करे। एक दो स्टॉक ही हैं ऐसे, निफ्टी 50 के स्पेशली। बाकी आप ऑप्शन सेल करो या फ्यूचर ट्रेड करो, अमाउंट सेम ही लगता है। डल हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, प्राइस ही डाउन है ना, प्रॉब्लम ये है। प्राइस थोड़ा सा 7500 के आसपास भी पहुंच जाता ना, ये काफ़ी अच्छा मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब 100 पॉइंट तो नॉर्मली हो जाते हैं फिर मोमेंटम। कैसे एफयूजी पर रीटेस्ट करे तो बाई कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्रूड का देखोगे ना इंट्राडे का चार्ट, अभी यहाँ दिखाएगा नहीं दिखाएगा पता नहीं, उतना पीछे। जब ये 7000 के ऊपर रहता है ना तो ये मोमेंटम ठीक कर देता है इंट्राडे का, देखो सिर्फ इंट्राडे भी देखोगे तो। ये 7000 से ऊपर का चार्ट है इंट्राडे का, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। तो एक नॉर्मल वैसे मोमेंटम कहूंगा पूरे दिन का, जैसे 115 पॉइंट, नॉट टू हाई बट नॉट टू बैड। डे हाई टू डे लो मोमेंटम ठीक होते हैं। और 7500 के ऊपर चला गया फिर तो और मजा आएगा। बैंक निफ्टी बन जाता है 7500 या 8000 के ऊपर इंट्राडे में, सुबह 9 बजे से रात के। वाव, लग लाइक दिस 250 पॉइंट इंट्राडे मोमेंटम। नेक्स्ट डे अगेन 250, मोर देन 250, 300 पॉइंट मोमेंटम। 200 पॉइंट मोमेंटम। 8000 के ऊपर का प्राइस एक्शन। तो जैसे जैसे जाता रहेगा ऊपर अच्छा ही है, 7500 के ऊपर तो मोमेंटम अच्छा ही है। 7500 मान के चलो, इंट्राडे 150 से 200 पॉइंट मोमेंटम इजीली हो जाता है। 8000 के ऊपर तो और ज़्यादा दिखा रहा है, 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा, सॉरी 300 पॉइंट से भी ज़्यादा। एक बार ये 10,000 भी गया है ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डे हाई ऑल टाइम हाई 10,000 ही है शायद इसका। ओके हाँ, 10,000 के अराउंड गया है एक बार। जनवरी 20 के बाद क्रूड ऑयल एक साइड जाएगा, आपका व्यू ऑन दिस? मुझे भी ये लग रहा है, वही एक कैटलिस्टिक है ट्रम्प का। और आप उसी की बात कर रहे हो ना, यूएस के प्रेसिडेंट की इनोग्रेशन 20 जनवरी को होनी है। उसी का वेट हो रहा है मुझे लग रहा है मार्केट में, और कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है ना। कोई ना ओपेक की मीटिंग होनी है ना कुछ और होना है। थोड़ा बहुत हो सकता है इन्वेंट्री पे मूव कर जाए, अदरवाइज दैट इज़ अ मेजर डे। क्योंकि उसके बाद फिर जो भी डिसीजंस होंगे तो फिर उस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कि बहुत चीज़ उसके बाद बदल जाएंगी,
मेजर जो इवेंट रहेंगे वो रहेंगे, एक तो आपका रसिया यूक्रेन वॉर का क्या होने वाला है। अगर रसिया यूक्रेन वॉर में कुछ भी रुकता है, वॉर का कुछ भी वॉर खत्म हो जाती है या फिर सीज फायर हो जाता है, दैट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर क्रूड ऑयल प्राइस को डाउन जाना चाहिए। बट साथ ही साथ अगर मिडिल ईस्ट में कुछ नया हो जाता है, लाइक नया क्या होगा, वहाँ पर सीज फायर ही होगा ऑब्वियसली, इसके चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट साथ ही साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंट्री में, मैंने बार बार बताया, यूएस भी ऑयल का प्रोडक्शन करता है, अगर वो इंक्रीज कर दिया, दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर क्रूड ऑयल प्राइस। तो दे आर डिफरेंट, अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट उन सबको उठा के किसी ना किसी साइड बड़ा मूव करने के मूड में है। स्मॉलर टाइम फ्रेम जितना दिख रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो जब भी अगर ब्रेकआउट हुआ बड़ा तो मोमेंटम अच्छा होना चाहिए अपसाइड पे ऑब्वियसली। ओके, वेट ऑन अ टारगेट। क्रूड में तो असली ऑपरेटर मिडिल ईस्ट वाला है, जब प्राइस बढ़ाना हो तो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। आई थिंक वो आपका ओपेक की भी तो नेक्स्ट मीटिंग है ना। ओपेक की नेक्स्ट मीटिंग आई थिंक अप्रैल में होगी। अब ओपेक और जेएमएमसी की जो मीटिंग है नेक्स्ट, वो अप्रैल में होनी है। एंड जो उनका लास्ट फोरकास्ट आया था उसमें उन्होंने कहा है कि वो अप्रैल के बाद प्रोडक्शन शायद कम करना शुरू कर दें। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है। क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट हिट करने वाला है, यहाँ पर से एक सेलिंग का प्लान रखना। ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है, मैं बता चुका हूँ। मल्टीपल टाइम यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, एक बार तो ब्रेकआउट भी कर दिया था बट रीटेस्ट नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई थी। बट दैट इज़ द ओनली रेजिस्टेंस वी हैव राइट नाउ। वीक, तो थोड़ा कम ही क्वांटिटी में सेल करना रेजिस्टेंस जोन से। अगर ये ब्रेक करके गया तो फिर यहाँ पर भी एक अच्छा मूव करने के लिए मिल जाएगा। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस, थोड़ी बहुत सेलिंग आनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं आनी चाहिए। बाहर निकल जाना, हो गया टारगेट ऑलमोस्ट इंट्राडे वाला। या डन। रीटेस्ट से बाई किया था वो भी निकल सकते हैं। एक पोल दिया था, 58% सेइंग नो लाइफ इन क्रिप्टो, एंजॉय डे ऑफ। तो मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि मत करो कल लाइव। ओपन रखते हैं अभी पोल को मार्केट क्लोजिंग तक, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। सेकंड नंबर पे सुबह 9 बजे लाइव करने के लिए बोल रहे हूँ।
नेचुरल गैस भी रेजिस्टेंस को हिट करने वाला है. नेचुरल गैस इज गोइंग टू हिट द रेजिस्टेंस एज वेल. यहाँ पर भी एक सेलिंग का प्लान रखेंगे. दैट इज अ रेजिस्टेंस, छोटा सा ही रेजिस्टेंस है बट है रेजिस्टेंस यहाँ पर एक कल का हाई. बाकी नीचे रीटेस्ट पेंडिंग है तो रीटेस्ट करेगा तो वो भी चेक करना. अभी यहाँ पर एक रीटेस्ट किया नहीं है. तो यहाँ से सेल करोगे तो टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा. ये रीटेस्ट जोन ही टारगेट है सिर्फ. ये रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से वापस सपोर्ट ले लेगा मार्केट. हाँ वहाँ पे एफ भी है, साथ में एफ भी बना हुआ है. इसमें अपर सर्किट नहीं लगा नेचुरल गैस में, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 6% अप नहीं हुआ है क्या? अपर सर्किट भी है वहीं पर, ठीक है. यहाँ पर मार्केट जाएगा तो एक अपर सर्किट भी लग जाएगा, ध्यान रखना. इन नेचुरल गैस 6% पे एक पहला अपर सर्किट लगता है नेचुरल गैस में. ऑप्शन के प्रीमियम में मोमेंटम डल हो गए, किसमें? क्रूड में. सिल्वर मॉर्निंग पे 89,500 के ऊपर निकला था पर फेक ब्रेकआउट था. व्हेन शुड बी एंटर बाइंग साइड इन सिल्वर? देख लेते हैं एक बार सिल्वर को. वैसे मैंने फॉरेक्स का चार्ट बताया था, ध्यान रखना. 89,500. नहीं, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट नहीं किया था. कल भी किसी ने पूछा था, मुझे याद है वो कल किसी ने आई थिंक सेल किया हुआ था सिल्वर कहीं 89,300 या 200 पे. वो जो आज का हाई है ना, दैट इज अ रेजिस्टेंस एरिया. 15 मिनट में वो रेजिस्टेंस जोन ही है. कल भी मुझे याद है किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका. वो निकले नहीं नहीं निकले, आई डोंट नो. कल मैंने उनको बताया था 89,600 के ऊपर अपना एसएल रख सकते हो. ये कल 15 मिनट का एक रेजिस्टेंस था. कल भी वहीं से सेलिंग आई थी, आज भी वहीं से सेलिंग आई थी. मार्केट वहीं पर ओपन हुआ था रेजिस्टेंस एरिया के पास. रेजिस्टेंस एरिया पे गया, वापस वहीं से सेलिंग दी है मार्केट ने. एक चीज़ है, मार्केट अभी लोअर लो नहीं बना रहा है. अगर इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस को प्रॉपरली सेलिंग में आना है तो ये लोअर लो बनना चाहिए. फिलहाल तो हायर लो ही बन रहा है. फिर से अगर यहाँ पर जाता है और एक और लो बनता है तो फिर ये ब्रेकआउट के लिए चला जाएगा. तो इट इज स्टिल ऑन रेजिस्टेंस एरिया. रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग ही बनी है. बाइंग इसमें अभी है नहीं. रेजिस्टेंस एरिया से सेल किया हुआ है तो ट्रेल कर लो, या बुक भी कर सकते हो.
बाइंग इसमें कल मैंने बताया था, नीचे बाइंग देखो एक गैप ही है, गैप के अलावा तो और कोई सपोर्ट कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। If चाहो तो इसको इसमें फॉरेक्स का चार्ट यूज कर लो एज अ सपोर्ट, एमसीएक्स में सपोर्ट नहीं है, गैप है तो उसको आप सपोर्ट की तरह मान सकते हो, नहीं तो देयर इज नो सपोर्ट इन 15 मिनट चार्ट एटलीस्ट। 87,000 से सेल, 87,000 से सेल किया, 87,000, 87,000 तो बहुत पहले आया था, अभी भी रुके हो क्या 87,000 से सेल करके? तो फिर 89,600 का ऐसा रखे रहो, उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करती है तो निकल जाना। लास्ट ही रेजिस्टेंस है ये, इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट माना जाएगा बिकॉज ओके यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये रीटेस्ट पे रुक रहा है आई थिंक। हाँ, ये रीटेस्ट पे रुक रहा है। बार बार जो रुका है ना नीचे, वो जो गैप है वो एक रीटेस्ट भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट एक कर चुका है रीटेस्ट, तो खैर अब शायद ना करे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था इसका, नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, फिर सीधा गैप अप हो गया था एक्चुअली यहाँ पे। तो इसने एक बार रीटेस्ट करना था, वो रीटेस्ट कर दिया तो इस वजह से रुक रहा है। तो ये रेंज मेरे अकॉर्डिंग है अभी फिलहाल के लिए, ऊपर से नीचे तक 89,600 टू 88,500 के बीच में। बाकी ये रेजिस्टेंस से सेलिंग थोड़ी फास्ट आनी है, तो ये लोअर लो बनना चाहिए, या फिर ये रीटेस्ट अब होल्ड नहीं होना चाहिए। एक बार कर चुका है तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करेगा। अगर नीचे आता है तो इसको ब्रेक डाउन होना चाहिए, तब थोड़ा सा ये फिर नीचे वापस जा सकता है 87,400 टू 87,200 के अराउंड। बाकी अगर ये नीचे नहीं आया अब की बार, और काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रखा है यहाँ पर, ये फॉर्मेशन बनाया तो फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर मोमेंटम काफ़ी ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली ये जो हमारा ये रेंज रहती है, इतना ही टारगेट फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अप साइड पे। तो ये लास्ट रेजिस्टेंस कह सकते हो टिल 89,600। प्रॉफिट बुक कर लो, एक ही लॉट है तो कर सकते हो वैसे तो। अगर एक से ज़्यादा लॉट है तो ट्रेल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन तो दिख रहा है कि ब्रेकआउट कर सकता है, अभी किया नहीं है बट कर सकता है। तो अगर एटलीस्ट दो लॉट भी हैं तो एक लॉट बुक कर लो, एक लॉट को छोड़ दो, फ्यूचर में लिया हुआ है तो। अगर 89,600 के ऊपर ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो और क्वांटिटी ऐड कर लेना। बाकी ट्रेलिंग एसएल लगाना चाह रहे हो तो 88,500 का या 400 का ट्रेलिंग एसएल डाल दो। उसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर निकल जाना सारी क्वांटिटी में। ये कर सकते हो, स्पेशली अगर फ्यूचर वगैरह ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ थीटा डी के होना नहीं है आपका, या फिर ऑप्शन सेलिंग की हुई है तो। 4 लॉट है तो 2 लॉट कर लो बुक, 2 लॉट ट्रेल करो, और ट्रेलिंग एसएल जरूर लगाना। ठीक है, 88,400 टू 500 के नीचे कहीं। हाँ फ्यूचर है तो फिर बढ़िया है, फ्यूचर में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रेल भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि थीटा डी के नहीं होगा।
holders, the big cloud giants, their bet is they just stubborn inflation. This year, unemployment rose but never got out of control. The economy remained surprisingly strong, and policymakers felt good enough about their progress on inflation to start cutting rates for the first time in more than 4 years. Eventually cutting of mortgage-backed securities, which not that many people are focused on. Most people are just focused on interest rate policy, but this continuing QT is also very important. So as your last speaker just said, the economy is still growing just under 3% for the year. And while risks of inflation have crept up, CPI is getting closer to the target rate of 2%. 24, what type of momentum do you need to see in not just how they perform this year, but the permeation of that into next year to believe that it could still be one of the top players? President of Capital Markets, Katie Hubbard, joins us now to discuss here. Katie, good to see you, and thanks so much for taking the time here this morning. So what type of rebound or what type of momentum are you anticipating in the housing market for 2025? Yeah, Brad, 0.5%. So it's going to cause, there's still the elevated mortgages causing affordability issues on both sides. So, Katie, your clients are, and I understand they're committed to these mortgage rate buy downs. What does that mean for their margins? Yeah, so their margins really dramatically affect the new home builders. Katie, great to see you and have you on the show today. Happy holidays. Thanks, Josh and Brad. Thanks for having me. And coming up, we're looking at today's Yahoo Finance trending tickers. We're going to give you the news behind the moves next on Catalyst. Uh-oh. Free child alerts to the rescue, so you cancel on time from Yahoo Mail. How mergers and acquisitions have sort of slowed down in the last couple of years. We also know that mega mergers have been under pressure under the FTC leadership of Lina Khan, and that is where I'm going to be buying Bitcoin at the top forever. Keep it simple. That stock, by the way, up more than 400% this year. And even with that rocket ship, the street loves it. Yeah. 8 buys, 0 holds, 0 sells. Hold me close till I get up.
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. What else might be on your wall of worry there? Would it be Want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for you,
Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero.
You're a superhero. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat
my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. गाइस नेचुरल गैस बड़ा स्लो आया है लेकिन अब आना स्टार्ट कर दिया है। ये नीचे एफईजी तक ही टारगेट है इसका। यहाँ तक आ जाए तो वेल एंड गुड। 7 पॉइंट है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर अगर रीटेस्ट करता है तो यहाँ से एक वापस बाइंग बनती है। तो 10:30 तो हो गया है। स्टिल वी हैव अराउंड 1 आवर 30 मिनट लेफ्ट। क्रूड में भी जिन लोगों ने सेल किया बायर्स तो निकल गए होंगे। नीचे एफईजी तक का ही लेवल है, थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक मान के चलना, ठीक है। थोड़ा संभल के सेलर्स इन क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस ठीक ठाक ही है। लेट्स होप फटाफट से आ जाए नीचे। 7 पॉइंट है ये टारगेट जोन, दैट इज अराउंड 7 पॉइंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही कह सकते हो। सो दैट इज़ अ सेलिंग साइड ट्रेड ओवर हियर। बाकी यहाँ पर सेलर्स निकल जाना, रीटेस्ट करेगा तो बायर्स बाइक का प्लान कर सकते हैं। फिर क्रूड में मोमेंटम ही नहीं है तो क्रूड में कुछ कर नहीं सकते। और अभी बोलू सर, मुझे गाना बज रहा है, बढ़िया है सर। News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Amy Morris. Traveling on this Christmas Eve has been something of a headache, whether you're going by train, plane, or automobile. Amtrak trains were canceled between Boston and D.C. because of mechanical and equipment issues. American Airlines flights across the country were grounded for nearly an hour this morning, while the carrier dealt with what it called a technical issue. Bloomberg Markets live blogger Heather Burke. American Soda doesn't have an estimated. Keep in mind that American raised its profit expectations for the last part of the year, and that had really shown strong travel demands among carriers heading into the crucial winter holidays. Now, obviously, delays aren't going to help that, but we'll see how widespread that is.
Bloomberg's Heather Burke, and the weather's been tricky across the northeastern U.S., so even if you're traveling by car, it may be slow going as you run into wintry weather. The National Weather Service says snow is expected across higher elevations in the western U.S., Great Lakes, and the Northeast. President Biden has vetoed a bill that would have expanded federal trial courts for the first time in decades. Bloomberg's Nathan Hager has details from Washington. The Judges Act would have added 66 federal judgeships across the country over the next decade. The Senate passed the bill in August, but the Republican-led House waited until after President-elect Donald Trump's win in November to act on the legislation, meaning the first judgeships would have gone to President-elect Trump. President Biden says the House's hurried action was behind his veto decision. Federal judges called the veto threat devastating and distressing. Congress hasn't added new federal judges to the bench in more than 20 years. In Washington, I'm Nathan Hager, Bloomberg Radio. Banking and business groups sued the Federal Reserve over the central bank's annual stress tests, saying they're seeking more transparency in how those rules are adopted. Bloomberg's Karen Moscow explains. The groups, which include the Bank Policy Institute, contend that criteria for the stress tests are designed in secret and produce, quote, vacillating and unexplained requirements and restrictions on bank capital. According to the lawsuit filed today in Ohio, the groups say that's affecting the cost of financial services in the U.S. The lawsuit seeks an order requiring the governors of the Federal Reserve to allow for public comments on stress test models used in 2024 and in coming years. The groups acknowledge that the Fed has announced its intention to make changes to the process, but they say there is a February deadline for court challenges to some of the procedures. Karen Moscow, Bloomberg Radio. And we check markets for you all day long here at Bloomberg. The S&P 500 up 0.7%, NASDAQ up 1%, the Dow is up 0.4%, the Russell 2000 index also up 0.4%, the 10-year Treasury yield at 4.62%, and the 2-year is at 4.34%. Israel is seeking an emergency UN Security Council meeting on the Houthis. Foreign Affairs Minister Gideon Sa'ar says the Yemen-based rebel group has launched 3 attacks on Israel in recent days, including a drone and 2 ballistic missiles. Meanwhile, there is continued optimism on Israel reaching a ceasefire and a hostage deal with Hamas in Gaza. We get more on that from Bloomberg News Israel Bureau Chief Ethan Bronner in Tel Aviv. भी करते रहो guys. Don't forget to like the stream. 100 likes का टारगेट है. जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट से कर दो. 90 likes हो चुके हैं. 30 people are watching, only 10 likes are remaining. क्रूड भी देखो नीचे एफईजी तक का ही टारगेट है. सेलिंग थोड़ा सा रिस्की है तो एसएल थोड़ा चाहो तो एसएल कॉस्ट पे भी रख सकते हो. 42 पॉइंट. बाकी नेचुरल गैस भी ये नीचे एफईजी तक का ही टारगेट अगर आ जाता है नीचे. काफ़ी देर हो गई है, नहीं आता है तो फिर याद रखना ज़्यादा देर सस्टेन किया ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया पे तो ब्रेकआउट करने चला जाएगा. तो फिर सेलिंग थोड़ा सा फास्ट आनी चाहिए. बाकी नीचे से रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से वापस एक बाइंग का प्लान रखेंगे. Right now, the issue is which Palestinian prisoners will be released. There, of course, the Israelis want to prevent those with so-called blood on their hand from going, where they would go when they're free, which hostages would get freed in the first. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there
No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious.
it because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now
Like a Hellcat.
ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. More neutral on UPS since about April of 22, when we downgraded a lot of the transport names as we started into what has now been one of the longest freight recessions that I've been around for in over kind of quarter a century here that we've seen in terms of tracking the freight market. And so we're kind of stuck in this malaise. And in the opening comment, we talked about what are we looking for in 25 if we can start to see the demand growth. Without that, UPS continues to have Amazon pulling away packages. You had the union contracts that they had to go negotiate last year. That caused a huge increase in costs for UPS. So they've been going through a lot of battles without getting package volumes. They did take on a lot of Temu and Shein business. Those are low weight volumes coming from Chinese e-commerce customers that have really exploded in demand, but at very low or negative incremental profit margins. So given that, we need to see demand really increase. We need to leave this freight recession behind, get those volumes to come onto the network. And in the meantime, UPS last quarter, what we saw was them dive in just like FedEx and start to pull out a lot of costs. So they are, in the midst of this downturn, doing what they need to do to get their costs aligned. But again, what's going to take that turnaround is really going to be the volumes. We think, again, that, if we start seeing a slow increase, certainly we've got an administration that wants to come in, deregulatory policies,
You got lower tax rates, all these things that could encourage small, medium-sized businesses to make investments and get some growth. That would be what would be driving the incremental margin flow for companies like UPS. Ken, just lastly, you mentioned the incoming administration. It seems like there is a brouhaha that's brewing right now with regard to USPS. What does that net out for the transportation sector and some of the names that are under your coverage? Well, the administration floated the idea of potentially, making an independent, completely independent organization. Right now, it is an independently run organization within the government, but that does mean, ultimately, if there are losses, they are somehow funded by the taxpayers. So if we're going to spin them out, it could mean you're seeing an organization that's much more focused on pricing, getting pricing to align with where their costs are, trimming some services that are not necessary. Obviously, we've seen first-class mail really get decimated over the past decade, and with that, trying to use small package businesses to compete in the market, to compete as a business. So, but if you bring those pricing up as the low-cost provider, you'll be lifting the tide for UPS and FedEx to be able to raise rates as well. Now, there still is another competitor out there with Amazon, but again, if the Postal Service is left as an independent organization and is forced then to raise rates even further, it should be beneficial to the outlook for UPS and FedEx. But that's a long road ahead for the post office to be spun out, but certainly something we've seen on a global basis in different countries. Ken, appreciate your time and those stock picks. Thanks for joining us. Thank you. Have a great one. Happy holidays. You too. In 2025, weight loss drugs are facing new applications, changes to insurance coverage, and a wary investor base. Here to break down what the new year could look like for GLP-1s, Anjali Kamlani. Anj. Yeah, you guys know that, of course, GLP-1s have been a hot topic for the past couple of years, but we're getting into a new phase for the industry, in part because we've seen an increase in the coverage through employers and commercial insurance. Questions about whether or not the companies, mainly Novo Nordisk and Eli Lilly, can skirt some of the rules that couldn't sort of stop the insurers from covering for weight loss specifically and can move into other spaces. So we're looking at new areas of disease coverage, including heart disease and sleep apnea. Those are the two front runners. Novo Nordisk already successfully got that first one in the bag, and so they have opened the doors for coverage there through Medicare and Medicaid. Meanwhile, kidney disease, liver disease, and newly alcoholism or addiction is something Eli Lilly is pursuing now and announced that it would be its next focus for the upcoming year. So we'll have all eyes on what those clinical trial results look like. Meanwhile, as I mentioned, an increase in that coverage. Commercial and employers had about 24.4 million. Meanwhile, the government side between Medicare and Medicaid shared the bulk of coverage that we've seen increase in the past year, 52.2 million covered lives there. And so that has really put the pressure on the government to decide how to move forward. We know with a new incoming administration, questions around what kind of support they will get and whether or not the rules and the obstacles against weight loss coverage will be removed. That's something we're waiting to watch. Meanwhile, what else is out there for this area? We know that there's been a lot of hype behind it and a lot of interest from not just the healthcare investors, but also general investors. And will that come to a peak? Are they tired of it? And will we have reached an efficacy point of the weight loss that maybe no one is interested in anymore and there is sort of a usual flow of business? That's something that remains to be seen. Mizuho's analyst, Jared Holes, did tell us earlier, or rather in a note, did say that, quote, we're going to be seeing this entire obesity category remain intriguing for all of healthcare because of the market size. And there's no doubt that future data sets will continue to reshape thinking on how the treatment regimen's involved, and where these companies and stocks are going to be positioned. We know that Amgen and Viking Therapeutics, for example, are the two nearest in line to compete. So all eyes on there. We'll have to watch. Absolutely, we will. On your head. We know you will be as well. Thanks so much. Sticking with weight loss drugs, following disappointing clinical trial results for CagriSema and then BMO cut its price target for Novo Nordisk to $105, down from $156. Evan Siegerman, who is the BMO Managing Director of Biopharma Equity Research, joins us now. Always love a good healthcare pronunciation and biopharma pronunciation to send me into Thanks, guys. the holiday weekend here, or at least the break here. Ultimately, as you kind of look across your assessment of Novo's own solutions, that they're looking for more of the clinical trial and positive results around.
How are they set up going into 2025? Great question. I think it's important to review what happened last week. We had the CagriSema data, which you had mentioned, and frankly, it fell short of the expectations that the company put out. They said they wanted to see 25% weight loss. They posted 22.7. And in this game, every percentage point matters. I think the tolerability of CagriSema was also in question. So what does it look like going forward? First of all, this was supposed to be Novo's answer to tirzepatide and retatrutide, some higher efficacy drugs. And it kind of feels like we're no man's land here. So we're really focused on next year when it comes to 4Q results. That's going to set the tone for the commercial side of these products for both Lilly and Novo. And then mid-year for Lilly, we have orforglipron, which is their small molecule pill GLP-1, which could really open up the market. So I feel like Novo is kind of losing its pep a little bit. But you're still bullish on Novo, right? Not as bullish as I used to be. And I'd like to note that in our outlook, we actually took Lilly and Novo away from our top picks. Focused more on names like Vertex. So we still like them, and I think the reaction last week was a bit overdone, but we cut our price target significantly. What does it mean that you have an incoming administration as well and cabinet selects that could perhaps toss a lot of cold water on the advancements that we've seen and a lot of the demand that's been thrust towards GLP-1s? Well, I don't think the demand changes because the consumer is the consumer regardless of an administration. When it comes to RFK, a lot of talk. I think when he maybe gets into HHS, he's going to realize that it's a very complicated organization and to affect a lot of change is very difficult. I am focused on Dr. Martin Makary, the potential FDA head, who I think could be good for industry. He's been a little controversial at some points, but overall has been supportive of the drug industry. Well, Evan, RFK Jr. has made his feelings about GLP-1s well known, right? Yes, not a fan. If he did get confirmed, and we've had analysts on the show who actually worked at HHS, and they think it could be difficult for him. But even if he did, Evan, what could he actually do in that role to have an impact? It's a great question. I mean, he could. I think the first thing he could do would be make it more challenging for Medicare to cover GLP-1s for things like heart disease and sleep apnea. That's a big hypothetical because, again, it's a lot of bureaucrats making those decisions. He could also just put pressure on FDA, be a little more, cautious in your, approval. But again, I don't think he's going to do that. So that's hypothetical that I'm speaking. I think he's more focused on food dyes, and just healthier living for whatever that means. Do you think that we see any significant headway in the costs of healthcare tackled? Especially, and I know that that's multi-pronged too, because we're talking about everything from health insurance to the cost of drugs itself. And so where is the easiest or maybe lowest hanging fruit for that to be tackled? So I actually think some PBM reform could help because PBMs, as we know, are kind of driving up the list price of these products because they like their rebates and discounts, and to get a bigger rebate and discount, you get a higher list price. So we didn't get any of that in the year-end spending bill, but maybe next year we get some action there. I also think that just for what it's worth, Lilly and Novo, the net price of these products is coming down as more insurance companies cover them. So I think it's about the out-of-pocket costs. I'd like to see more accessibility. That also comes with more supply. But I really think PBM reform is what could affect cost, especially for drugs, most significantly. Do you put pen to paper, Evan, try to figure out, okay, this is how big I think the GLP-1 market could be in 5 years, 2030? We've talked about that on this show, I believe. I should remember. I know. I think we're at about 150 billion plus across all players. Most of that's in the United States. It could grow. The way I think about it, that's important though, is it is a volume game for these companies, which is why Lilly and Novo are poised to win because they have the capacity and ability to supply these markets. So over time, the net price per patient goes down, $300 and $400 per patient per month, but you have many millions on drug. It seemed like all of us became experts in messenger RNA over the course of the pandemic, and now many of those names, for the pullbacks that we've seen, and now analysts trying to re-rate and understand what type of platform additive that will be for the bottom line. Is there any clarity in sight on that now? So I cover Pfizer, we'll talk about it from that perspective. Sure. I don't really see them doing much with mRNA. It helped us in the pandemic, but their latest vaccine for RSV is a traditional protein vaccine. So I actually think for a lot of the vaccines going forward, that's where we want to be. Maybe with some personalized cancer vaccines, but that seems to has not gotten as much traction as we would have hoped. And when you look at some of the Moderna vaccines for RSV, for example, they've been disappointing. You, Evan, in your coverage universe, you only have one
lonely cell. Yes. It's one lonely underperformer. Insight. Insight. Ticker INCY. Yes. Why? Why is that a sell, Evan, as we head into the new year? Yeah, we downgraded Insight back in June because the company decided to buy back $2 billion of their shares versus investing in the pipeline. And I've covered this company since 2015 or so, and I've always been disappointed with how they manage their pipeline. Most recently, they had a blow-up from an acquisition that they bought. And my concern is that as we come towards 2028, the LOE for their big drug Jakafi, it's a pill, they don't have anything to replace it. And that's when you see multiples compress. That's when you see people dump the stock. So I need an answer to that pipeline because that's how biopharma thrives. Evan, always great to see you, have you on the show, and have you here on set. Yes. Appreciate it. Happy holidays, everyone. You too. Happy holidays. Coming up, a look at what we can expect from the Federal Reserve in 2025. As observability has evolved from observing data to actually give you insights, give you automation with Dynatrace, we keep pushing the boundaries for you and help you with the new challenges coming up. Oh yeah, you're not gonna forget to cancel those free trials this time, right? Uh-oh. And let's stick with Europe now and go to France for the latest on the country's new cabinet. President Emmanuel Macron naming Eric Lombard as finance minister in the last hour. Bloomberg's Benoit Berthelot is here with us from Paris. So what is the first item on the to-do list for Eric Lombard? It will be for sure to pass a budget for next year, so for 2025. That will be the main task for this government, really. A budget is very political, obviously. It indicates the directions a government want to take in terms of fighting against inflation, and all the topics that are the most political, security, etc. Now, the budget for next year hasn't been approved so far, and since Emmanuel Macron has been dissolving the assembly this summer and taking down the assembly, he has no majority, no clear majority in parliament. There are three forces: the far left, the far right, and a centrist bloc. And the first government he nominated has been toppled. So it's the second government since this summer, and we'll see if he has the capacity to pass this budget without being toppled and actually make a compromise with all the political groups. It's clearly not an easy task that he has ahead. What do we know about Eric Lombard? Because as you've mentioned, this is a budget that has led to a lot of political fractions already. What might he do differently in terms of negotiating the path forward? He's not known by the French, really. He's been a banker for a good part of his life at BNP, at Generali, and right now he was previously the head of the Caisse des Dépôts, which is a sort of public bank that deals with social housing. He could be seen as a left-wing figure. He's been with socialist governments before, but still someone who's very plugged in the economy, and he wants a responsible finance. He wants to finance the fight against climate change. He's been known for saying there is too much inequality in France, the wealthy being too wealthy, that sort of things. The good thing for him is he's not known, so he hasn't had fights with the far right or the far left, and he's sort of a neutral, maybe older figure. So that's what he has for him. But now he's going to face the same challenges that the previous government has been facing. And, okay, so we're getting part of the new cabinet here. Eric Lombard, obviously named just this morning. What else should we be keeping an eye on?
So it's a mix of politicians from the left or that are close to the left, like former Prime Minister Elizabeth Borne, like another former Prime Minister Manuel Valls, who are back at the government. So there are lots of veterans and well-known figures, and there are also right-wing ministers who were previously with Macron. Macron has been known to be, as he said, a centrist, taking from all sides and creating a new way to do politics, but it's a lot of veterans and personalities that are well known by the French. So it doesn't give an impression of being a very fresh or a very new take on politics, to be honest. That is Bloomberg's Benoit Berthelot in Paris. Thank you so very much. Of course, a lot going on in France right now. Well, I'm really glad you asked about this because I don't think that the balance sheet has gotten enough attention in the last few months. We have to take the decision about the balance sheet apart from their decisions on interest rates. But the Fed has been winding down its balance sheet, and they've kind of been telegraphing that the pace of that wind down is going to slow this year in 2025. And the economists that I've talked to are expecting the Fed to kind of the balance sheet to reach this steady state of a little more than $6 trillion in 2025. But the Fed has deferred a really important question, which I see as a risk to the bond market. So they're going to stop winding down the balance sheet in 2025. But what really, really matters isn't the size of the balance sheet. It's the construction of the balance sheet. It's what do they hold in mortgage securities? And most importantly, what do they hold in long-term Treasury securities? They've wound that down, but they still have around more than $6 trillion of Treasury and mortgage security, of long-term Treasury and mortgage securities on their balance sheet. And they have to make a decision about whether they continue to wind those large holdings down by moving them out of long-term securities and into bills. And if they do that, then that could put upward pressure on long-term interest rates in the coming year, in particular when they make the announcement. They haven't said what they're going to do. They had debates about a strategy like this back before COVID, and Powell in those debates suggested that he wanted much fewer long-term treasuries on the balance sheet. If they do that, that means more long-term treasuries in the private sector's hands, which could put upward pressure on rates. John, you mentioned Powell there. I'm just curious, how do you potentially see the relationship evolving from here over the next year between Powell and President-elect Trump? Well, so, Powell's playbook during the first term was to tune out the president's criticism of his action and the president's threats, and to stay focused and to say he was staying focused on the economy. I think the temperature is going to be turned up for Powell because the Fed is in a pause mode. We don't know how the president's going to feel about that. And also because if inflation doesn't get down to that 2% target, then this new president might be looking for someone to blame for sustained high inflation. And the man is going to be sitting right in front of him. It's going to be Jay Powell. So I think there's going to be discord, and Powell is going to keep his very stoic tone and try to tune it all out. Let's not forget, Powell's term is up in a couple of years. I think, frankly, that he can't wait to be done and to head off into the sunset. Yeah, I'm sweating just thinking about the temperature being turned up between Trump and Powell, especially come January here. John, just lastly, who do you think is most likely, especially as you have other positions and you're going to have some changing of the voting members as well coming forward? Who is Trump most likely to try and put in any of those new and open
Fed positions in order to then potentially fast track them into being the next Fed chair? Well, let's talk about the Fed chair. And actually, frankly, for the governor positions too. What we've learned in this cycle of nominations that the president has made is that you really don't know. It's really a moving target. So I'm going to start by saying that. I don't know. We can give you a list and we could do our guessing. But it's the two Kevins that people often talk about. One is Kevin Warsh, who got an interview with the president. Former Fed governor, got an interview for the Treasury Secretary job. The president has now passed over Kevin Warsh 2 times. The other Kevin is going to be sitting right next to the president in the White House, and that's Kevin Hassett, who is the chair of the National Economic Council. And I've got my eye on Kevin Hassett. Kevin Hassett worked as a Fed staffer decades ago. He ran President Trump's Council of Economic Advisors in his first term. He has a close working relationship with him, and he has some comfort level with working with the president. Some might say managing the president. So I think Kevin Hassett is a guy we have to keep a close eye on. John, we are always lucky to have you on the show. Thank you for joining us. Next time, I hope to be right there on set with you guys. I hope so too, John. Happy holidays. All right. Thanks a lot. Take care. Well, wrapping up today's Market Domination. Don't go anywhere. We've got you covered with all the action. Following the closing bell, stay tuned for Market Domination Overtime. Oh yeah, you're not gonna forget to cancel those free trials this time, right? Uh-oh. Free trial alerts to the rescue, so you cancel on time from Yahoo Mail.
News when you want it with Bloomberg News Now. I'm Amy Morris. Israel is seeking an emergency UN Security Council meeting to condemn the Houthis after a string of recent attacks. That's after Israeli Defense Minister Israel Katz appeared to acknowledge his country was behind the explosion in Iran that killed Hamas leader Ismail Haniyeh last summer, in a warning to Houthis and other Iran-backed groups. Golnar Motevali leads our Iran coverage for Bloomberg News. It's going to be interesting to see in the year ahead how Iran copes with what's happened over the past year, particularly the effective defenestration of Hezbollah by Israel and the effective unraveling of a foreign and regional policy that's kind of defined the country for decades now. Bloomberg News Iran team leader Golnar Motevali. Travel this Christmas Eve has been challenging. A winter storm bringing snow to the higher elevations in the western U.S., Great Lakes, and the Northeast made it slow going for some travelers. Amtrak trains were canceled between Boston and D.C. because of mechanical and equipment issues. And American Airlines flights are flying again after a brief grounding because of a system-wide technical issue impacting all U.S. routes. It happened just before 7 this morning Eastern Time. We get those details with Bloomberg's Benedict Camel. The airline didn't tell us what the issue was. They said they had a technical issue, but they didn't go into details what exactly the nature of that was. Some users online were speculating it might have to do with software that's used to calculate the weight and balance of an aircraft. That's something you have to put in, the pilot that is, before the aircraft takes off. Bloomberg's Benedict Camel. And those groundings couldn't come at a worse time for the millions of travelers expected to fly over the next 10 days. The Transportation Security Administration expects to screen 40 million passengers over the holidays and through January 2nd. A Starbucks barista strike is spreading to more than 300 cafes, disrupting service at locations across the country. More than 5,000 workers have joined the work stoppage in cities including Boston, New York, and Philadelphia. I have many coworkers who are struggling to afford their rent at the end of the month, or end up having to choose between rent, groceries, and their regular bills. The walkouts began December 20th at a handful of locations, then escalated over the following days. The strikes were sparked by a breakdown in final stage negotiations between the union and the company. We check markets for you all day long here at Bloomberg. The S&P 500 is up 0.8%. NASDAQ up about 1%, and the Dow is up 0.6%. The Russell 2000 index up 0.6%. The 10-year Treasury yield at 4.6%, and the 2-year yield at 4.34%. President-elect Donald Trump says he will pursue the death penalty for any violent offenders. Bloomberg's Karen Moscow explains. In a post on Truth Social, Trump said he would direct the Justice Department to, quote, vigorously pursue the death penalty to protect American families and children from violent rapists, murderers, and monsters, unquote. His comments come after President Joe Biden this week said he's commuting the death sentences of 37 federal prisoners. The sentences were reduced to life in prison without parole. The decision left 3 federal inmates to face execution, among them Dylan Roof, Johar Tsarnaev, and Robert Bowers. Karen Moscow, Bloomberg Radio. The Costco egg recall just got a little more serious. The FDA has elevated the recall to the highest alert level, concerned that salmonella contamination will cause, quote, adverse health consequences or death. The eggs were sold under its signature Kirkland brand at Costco stores across the South. Anyone who bought the eggs are strongly advised to not consume them, just throw them out, and then go to the store for a refund. That's news when you want it with Bloomberg News Now. I'm Amy Morris, and this is Bloomberg. There are 2 kinds of people in the world. People who think about climate change and people who are doing something about it. On the Zero podcast, we talk to both kinds of people. People you've heard of, like Bill Gates. I'm looking at what the world has to do to
2025 promises to bring some major changes in the tech sector, from a possible ban of TikTok to policy shifts under a second administration for President Trump. Joining us now, we've got Adam Kovacevic, who is the Chamber of Progress CEO and founder. Adam, great to have you here with us today. So as you think about some of the many changes, especially as it's related to tech, what is at the top of your list of expectations? Well, I think one of the good pieces of news is that President-elect Trump has appointed a number of people from the tech world, venture capitalists, people with tech experience, to prominent positions. And, look, I didn't support President Trump, but I think that's a good sign. I think there's been a lot of frustration in the tech industry that the Biden administration spent more time trashing the U.S. tech industry rather than championing it. And to have people come in from the industry, I think, is a good thing. This is what President Obama did. And honestly, he had better tech policy and higher ratings on the economy than Biden did. So I think that's a positive with respect to setting a good tone. I also think there's a number of things that the Trump people are going to do when they first come in, unwind the Biden executive order on artificial intelligence, change direction at the SEC on crypto policy. I think those things will be positive for the innovation economy as well. It's interesting, though, Adam, because Trump seems to almost sort of distinguish and delineate between big tech and little tech. He likes, in his words, little tech. But big tech, he does not have very nice things to say about big tech, Adam. I mean, when he nominated Gail Slater as head of the Justice Department's antitrust division, he just goes off on big tech, that it's run wild for years, it's stifling competition, it's using its market power to crack down on the rights of so many Americans. What do you make of that? I mean, what do you think that could mean in terms of actual policy implications and ramifications? Well, I think we have to look back to his first term, where I actually think the reality was a little more complicated. There were issues, for example, where he picked fights with the European regulators to help American companies and said, hey, wait a minute, we don't think you should be taxing American tech companies unfairly. We don't think you should be regulating them unfairly. And there were tech CEOs, who I think successfully got Trump on their side in some of those fights. On the other hand, his administration brought antitrust cases against Facebook and against Google. I think the reality, though, is that Trump doesn't particularly care about policy issues like antitrust. What he really cares about is this company nice to me? And I think what he's driven by is, is this a company that's actually helped me? For example, earlier this week, he gave a speech in Arizona and talked about TikTok. And the way he talked about TikTok was he said, well, the TikTok executives came in and showed him a chart about how well Trump had done on TikTok during the campaign. And so therefore, we should keep TikTok around a little bit. It's kind of begins and ends with how he feels the company is treating him personally. Yeah, sort of kiss the ring moment that we're seeing kind of play out here. And ultimately, we've had a lot of major tech companies try to insulate themselves from any type of directed turmoil towards their company coming from the Oval Office, come the inauguration and anything thereafter from Trump. All these things watched and considered here. We've seen breakout stars emerge in artificial intelligence. How much of a continuation of that do you anticipate, knowing where Trump has also aligned some of his own interests and talked about technology more broadly? Well, I think you hone on a great point, which is the area of artificial intelligence. Look, the Biden administration, its main approach to artificial intelligence was to say, this is an area where we ought to tread carefully and put up guardrails and focus on safety. Now, of course, safety is in the eye of the beholders. What I think you are going to see with Trump is a pivot from safety to really AI as a economic asset for the United States, a national asset for the United States, where we should go out and beat other countries, particularly China, in AI. And, one of the things I think we see happening, for example, the Chinese government is exploring antitrust cases against NVIDIA. Why? Not because there's a real legitimate antitrust issue there, but because they want to punish us, right, and bring that into a trade war. So I think that it will be a welcome pivot from the industry to see the administration say, no, AI is an industry that we want America to dominate and an area where we want to, frankly, kick other countries' butts in. Sticking with AI, Adam, any thoughts on David Sachs, Trump's pick to be AI and crypto czar?
Well, he has, as a venture capitalist, he's invested in a lot of AI companies, right? So I think he's seen from, really like up close perspective, like what it means to start an AI company. And I think that's going to be a valuable perspective. I do think it's helpful to have more of an investor startup perspective coming into the administration, because have not been a lot of people, again, in the Biden world who've like actually started companies and seen that up close. So I think that can't help but be a positive thing. Adam, great to see you and have you on the show today. Happy holidays. Thank you. We'll be back after this break, but first, a look at some New Year's resolutions for investors. Focus on the trends, focus on those earnings reports. We're seeing earnings growth. Block out the noise. Don't let emotions drive your investment decisions. Really important. Things like FOMO, you want to try to avoid that. We're still bullish on stocks and would suggest to stay invested. Pay attention to both their equity portfolios and their fixed income portfolios. Constantly reevaluate, are trades working, what's good out there, what should they be involved in. Don't make any outsized bets based on potential policy or based on anything specifically coming out from Washington. Having a disciplined process over time across asset classes, within asset classes, is really important. One thing we think is incredibly important in 2025 is that investors do not become too complacent. There has been a lot of optimism, a lot of good news heading into this year, but we don't want to turn a blind eye to potential risks that are out there. Oh yeah, you're not gonna forget